All right. Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls, and welcome to the round one, day two of the India Moba Cup season one. A total of 20K diamond prize pool, and the teams which is going to be taking it away is getting determined here. And already, first match of the day, bringing to you onto the caster's desk. This is your girl. Zero, and with Sir, me, what's your it is command? none Your other than team is Debbie joining banning. me today. Yeah, it's gonna be exciting, Zero, because right now we are gonna be seeing two differently new teams. The uniqueness is gonna be unbinded, and we're gonna be seeing the release of what these thirsty Red squads will Tail's be been bringing itching to for a us. real Definitely team is a banning. something we should focus on. But before that, you know what? We have to go into the drafting phase because this is where the start of The this Immortal game One is gonna chose be me to going on. Your Because vanquish the right team now, is as you shadows can that banning. see, plague the this bands are world. already up. Fanny, Shuyo, gone, and the Kalea on top of that. It's kind of like I think where the Fanny is definitely gonna be banned, and there's no way it's gonna be open this time. Not only this time, every time there's a first ban coming up, it's always gonna be a Fanny being taken away, and Suyo has been making his appearance time and again, and I think it's a very good decision too, because even in ranked games, he's been banned away. Yep, definitely. And as you said, Finny is gonna be a permanent spot in the band. But I would Your like to team is introduce banning. today's team to the viewers watching us. It is Team Daijin onto the blue side, going up against Team Bahut Bura Hua on to the red side. Now, Bahut Bura Hua, it can be used in two My mission different is meanings, to right? protect Your One lives. can team be Yes. for is yourself, banning. one can be for Mhm. your opponent. So, which Yeah. one will it be? Is the question. But look at that, Debbie. A glue band coming in from their side. No one can Yeah, escape my glue iron taken fist. away. Your I team think is for banning. Bahat Burahua, they do not want something bad to happen for themselves, so they want to go ban out the glue so as to enable their own XP laner. So glue has been very situational, even though he's not picked, he's not banned. It's kind of a thing where the glue is gonna be popping up most of the time when it's good against some certain heroes into the XP lane, especially. So something that Bahat Burahua may have in mind is that they want to have their XP laner enabling them, walking around the Only map, love being and their might second Your are supporter team is next to their everlasting. banning. roam. But right now, the first Let's pick fight is to going our to be heart's up for the content! side of Magic Dungeon, is my and it's life. going to be the Your team is Sicilians. So picking. they prioritize the Sicilian instead of the Lucas or the Harris, for instance. Oh well, Debbie. Look at that. A Lucas getting the locked down. Now Time to it does drop seem the like beat he of is the kind of flash. trying to go into the EXP lane, but okay, that is a Lucas triangle maybe. But look at that, Joy getting locked down as well from the side of Team Daijin right here, paired with the Sicilian on to the mage position. Now Joy has been quite in the meta because of her dashes, because of her bursting ability. But the thing is, they have a Lucas, Mighty and oaths she from little can be Your A interrupted team by is overflow. Lucas picking. if you do pair up your skills well, the flash them and flash combo together. But once again, a Belleric for the Harriet, I believe, because his wrath of the rat would be the one stopping his chrono dashes. Yeah, I think that has to be something that Dungeon is capable of. They do not want to give away the Balearic on top of that, and I think Balearic has been quite used mostly to try to counter out the Joy because of the instant taunt he provides with the Always stunt on the as way. well.
I think it's Your kind of team a is banning. win-win situation for them as well. But Matilda completely ignored for the first few picks has been to pick out by the side of Burahua. So a very good combination, I would say, because Matilda in combination with any kind of tanky jungles always almost always work. And here we have a Lucas onto the jungle position, which is highly likely where he is gonna be going with the lack of Valentina here into the presence of the side of Dungeon here. I think they really did their job here right now. They can put it into the jungle and they will be perfectly fine with it as well. But now what will Hua will ban? Because I think there are limited choices of mobs now which they can ban away. Should they ban away Yep. the heroes and try to counter Harris? Yep, Let's hear from the crowd. definitely. So, Make some he noise for goes for yours a truly. carry ban onto the marksman, and we Mm, still have Irithel. So, they are all the Trinity marksmen, Trinity heroes in the marksman Your lane team that we is have right banning. now. Although I doubt going Granger against a Herod would be a wise option. So, I guess they can cross him out, but then again, it depends on the player as well. But just to be safe, they do decide to ban out the CZ, which can be melting out the Lucas. But still, oh my goodness, the team composition of Team Bahut Bura Hua right now, all of them have dashes, all of them have a lot of mobility, and they do need someone to catch them and have a good set there. But we are not seeing that as of now. So Bellerin might be on the mm. EXP, might be on the roam. We will be knowing that in quite a I've been bit. waiting Your for too team long. is Okay, banning. there that has to be it. But the carry goes. I think it's really a good choice on the side of BB8 here. They trying to ban away the carry so as to give their Harry the perfect times, and not just the Harry. It's for the Butterfly is Lucas too. born by I thy would Your wish, team really is really love banning. if guided Dungeon by had secured lantern's their light. carry into the start phase because Beleric was a kind of a gimmick pick here for them too, so they could have tried to go for into the last picks. But then again, they can make it work if their execution is right because they have kill pressure with the Joy here. They should be able to combine it with an early game marksman that can possibly go against the Herits. But the choices are slim because the Zusin is banned away. For the side of BB8, they did not pick out their mates just yet, so they might try to keep it until the last minute so as to have a good setup for them because there are lots of mates choices because only the Zusin has been banned and the Sicilian has been picked. So I am I not think the the only one Barca can bound still by Your come this into team play, is but chains. banning. before that, they have to go for the four-way. So a security into their XP lane, a very, very good hero against a hero like this Joy here. Yeah, definitely. So Phobius has been quite onto the EXP side for quite a long time, right? And he does give quite the hard time for a Joy, or maybe almost everyone who is going up against us, because he is Time in and the tide wait front for no laner. man, He's nor gonna be the girl. front laner, the initiator usually, and it does seem like Team बहुत बुरा हुआ. They are keeping the mage as their last option, so that they can have an element of surprise, maybe. But then Light me again, up and watch they the in Your world export. team is It's been burn! quite picking. a long time since we saw an Oh, export, but it he will be going up against the phobia, so it will be quite interesting to watch. yeah, it will be definitely interesting because I think for the side of dungeon here, they want to go for those true damages with the Xborg, and the only available true damage for them was the Xborg here because they already did ban out the CC for the side of Bahut Burahwa. They do not want to give away it, so very understandable. But still, I think they can still take a little bit of the CC and not the hero CC, but the crossbow CC. So that has to be something that the Belleric should look The Daughter forward of to, and I would Eternity really leads like you if he upward. goes for the either the flicker or the revitalize, so as to go for the surprise sets that they do not for the side of BB8 they are not really looking at. So it has to be something like they're close to them. But look at that, best player onto the Lunox as the last pick here. Something I don't usually see. Maybe it's just for the survivability
Or I do not think that she can be melting down. I mean, she can be melting it down, but Lunox is more better against the heroes that are tanky and not this kind of competition. So we have to see why the Lunox was chosen. Oh well, might be a comfort pick, might be really, really Mm, like the guy is really confident on that Lunox, but then again, yeah. her light ult, her power of order. I think she can. She will be using that to get away from To Belleric Mobile and Legends. his ult, which gives him taunt. So and she also has a quite a low 5 seconds cooldown. till the enemy So I reaches the guess she's gonna be battlefield. just spamming all Smash the them. skills here and there, and All troops just deployed. if the team composition works out, then it should be good for them. But the thing is, they do not have a good setup. Besides Skyfall being on that Phobias as the initiator. I think it's true though, yeah. They have so much skill pressure, a little bit of a survivability on top of that. But yeah, the setup is not there, and I think in combination with a Phobius and a Matilda is something that teams are usually gonna be going for. So definitely a good start for them as well. But for the side of Dungeon here, they do have a setup that is Beleric himself. So one of these teams. Oh wait, am I seeing a blue buff getting on by L appeal here? Whose blue buff is he taking? Was it the Lucas's? Oh no. So no level 4 for Tyrant. I think he's gonna be letting down just a little bit. And it's gonna be putting him behind on farms. And yeah, it's gonna be giving the Joy a little bit of a leeway for them. So they have to farm up to quite a little bit. But if we focus on the rotation side, right? The top lane is more prioritized by the side of BB8 here. Yeah. So Lucas is just getting nerfed by his own teammates right now. Might be Yeah. accidental, but in in situations like this, you should be able to time your skills and everything so that Yeah. you do not give your team any handicap, right? But Yeah. oh, but it's No. fine. It's fine. It's fine. He'll just get farmed up. But focus on to the goal lane. The rotation coming in from the side of Team Nanjin is pretty good because they do need to pressurize on Zesty Lemon right on there. But Mm, then again, Turtle is in the bottom lane spawning in, so they should be rotating towards that side soon as well. yeah, the turtle is gonna be into the focus definitely because they have a tankier tyrant onto the jungle, so that has to be it. But meanwhile, for the side of dungeon, they can try to buy time and play it for the mid games, and they can Red team perfectly has be slain the fine turtle. with it as well. So there we go. The first neutral objective is secured by Tyrant here. He's gonna be fighting to go on a steal onto the small cam onto the bush there. They're rotating quite a lot onto the XP side, which is something we do not usually see. Maybe they just wanted to steal out onto the gold traps, onto the small crabs so as to have a higher percentage chance. But look at that. Oh, First definitely blood. first blood, and he has the best player with the final going on to Joy. And the, oh my goodness, last insanity coming in from Xborg, but won't be enough as Lucas pops out of Oh, phase form. But look at that, Belleric will be getting taken out inside his own turret in the hands of four people. Now that is a successful engage coming in from the side of Team EBH, and they will be getting the goal lead. oh my, that's definitely something of a good start that the Phobius and the Matilda provides. If you are a little bit, even a little bit lacking into the XP lane, the Phobius does not come into play anytime soon. But right now, with them securing the turtle, with them having that early game XP lane, I think they are. It's safe to say that they are actually gonna be having a good time at the start here. The only thing that can stop him is if a Jinx here farms up to get the items and try to go for the packlines. Even then, it's going to be hard because for the side of BB8, they have a Harris who have more dashes than the Joy. So he might eventually be able to outmaneuver. But look at that damage. Yep, definitely. The man force gets used up by Herod, but best player will be getting the last hit in the end. That is a double kill, and bot time will be getting taken down. And four people on to Joy this time. Nowhere to run, but still Jinx is trying to run away. Maybe Ooh. we'll be able to escape, but oh my goodness, she is surviving Enemy out so slain. hard. But no, she will be getting taken down in the hands of Herod.
Oh my goodness, that was a good start. A very, very good start for the side of BB8. But look at that, last insanity. Lost insanity, but will be getting to waste as Lunox pops out her light ult as well, and a bit of zoning here and there coming from the side of BBH. And the score, Debbie, it says 0-5 and a goal Yeah. lead of 5k in their hands, almost 6k actually, but it's still the early phases of the game. So if they do farm a well, position well, then they should be able to at least have the gold back in their hands. Yeah, that's definitely something that Dungeon has to look forward to because there are a composition where the late game is more perfect for them. But oh, look at the damage! Definitely a lot of damage coming in, and look how Zinx just gets taken down, and that is 3 people getting taken down Whoa. for the side of Team Dungeon, and a turret gone in the hands of Team BBH, and oh my god, Belleric right there, he's just gonna be standing around and will be retreating as he does not have any more stuff for him to do, but oh my god. Guiding Wing, Lucas will be invading the blue buff as well. Oh my goodness, the invasion coming in into the 5 minutes of this game is something we don't usually see, but look at the play! Circling Eagle on to Belleric and will be getting taken down. One time onto the back line as well. Killing a solo kill coming in from Zesty Lemon on that turret. And 2 more people down again. The score, Debbie, 0-10. And 0 to 10. they're not getting the chance to even get a first blood in their hands. I know they are getting a kill every 1.5 minutes. That's definitely it. BB8 is showing that they are a nightmare for Dungeon here. Look at that. They can try to go for more. Yep, definitely can try to go for more as Joy. Oh my goodness, the lasting insanity coming in. Lasting insanity coming in from Roger, but he will be getting taken down, although he does get 1 kill in the name of his team. But 1 for 3 trade, not a good one, as oh my goodness, Dusty Lemon is just gonna be dashing in here and there, and they will still be going for more kills, and that is an unstoppable in the hands of Zesty Lemon. Oh my goodness, Justy Lemon being the lemons for the life of Dungeon here, because look at that. He's already gotten a lot of damage here, which means that this guy is going to be coming online. Already the second build, a Feather of Heaven, in 7 minutes. This just shows that he's got all the goal leads into the world. A 10k goal lead, something into the 7 minutes of this game. This is just a sheer domination that these people are showing to Dungeon, and I do not think there has to be any kind of reply coming up on the side of Dungeon here, because look at the map, it's all painted red and there's no neutral objective and nothing whatsoever taken down by Dungeon. It's all into the hands of BB8 here, all in the driver's seat. Whatever they do, they can go back without any kind of casualty. This is what you get when you have a 10k goal lead into the 8 minutes of this game. Yep, definitely. And still forcing out a team fight in this situation is not a good idea. And look at that, just all the resources getting wasted here and there. But oh my goodness, Leia having a monster in his hands right now. That Lunox pick is certainly doing it well for their side. And oh my goodness, the damage dishing out from Herod. Look at that! 1 crit in his hands, but bot time will still be surviving that massacre. But the inhibitors are the only one remaining for the side of Team Dungeon right there, and there is nothing that they can do to survive the onslaught coming in from the side of Team BBH. Might be going for more as Matilda goes for the Circling Eagle, but will still be getting out, although they are looking for another team fight maybe, but not not finding the chance of initiating it. That they are actually very careful, even though they have already accumulated around 12k goal lead. But look at Demand Force. Demand Force is getting a monster in his hands, but the Inverted Pursuit onto the front line. Once again, 3 people down for the side of Team Dungeon right here. Harry decides to go for more. Maybe! Oh my goodness. People kill in his hands might be a maniac, but X4 decides that no, you won't be. Although Harry still decides to go for more. He
pressure is onto the side of Danjin right here. Export, he's just getting his shield, popping it off, getting popping it off. Being really, really desperate uh, to defend his base, and he does have a little bit of air to breathe. Yeah, 10 minutes. It's just 10 minutes of this game, and the inhibitors are cracked open. And already a holy crystal onto the hands of Zesty 11 here. He's gonna be coming online. He's already online. Look at the damage. Yep, definitely. Oh my goodness. Okay. That's something. Not a Okay, not a right time, not a right time to take team fights, but yeah. once again he scored. And Lord, in the hands of Team BBH, that was quite an easy Lord, I would say, because they were getting the zoning coming in from Herod. Oh my goodness, Zesty 11 just decides he will be popping out his demand force, dashing here and there, just around that. Oh my goodness, almost 2k crit damage in his hands, but oh my god, the inhibitor won't be surviving the onslaught once again. Last insanity coming in. Let's see right there. And once again, godlike for Lunox. That is 3 people down. Once again, the inhibitor won't be surviving as all of the members of Team BBH go for the base directly, and it might be the end. It's definitely the end, Debbie. Definitely the end. In the end, it was actually 15k goal lead, 15k. Something we do not easily see, even if teams, big teams, are playing against small teams. We do not see this. But look at this, BBH, Bahat Burahua. They did the games so good against Dungeon that I don't think Dungeon will be forgetting this anytime, and they definitely has to be traumatized by this, because look at that. The balls coming in 10-09 for the into the hands of Zesty Lemon here onto the Harris, getting a 4th item into the 10 minutes of this game has to be the record, and no damage whatsoever coming up on the side of Team Dungeon here. I don't think they have any response. I don't think they have any opening, and I solely, I blame it on their early game. They weren't able to play around the map. They weren't able to try to look for pickles. Everywhere they go, they are stunned up. They are blocked. There's no breathing space for them. And look at that. 47% damage onto the heads of Zesty Lemon. He's definitely being zesty, and he's definitely giving lemons to the opponent. When life gives you there's a saying, when life gives you Yeah, lemon, make lemonade. But the thing is, they were not even able to squeeze the lemon, not even able to cut the lemon in half, so you yeah, still gotta be aware of the sort of lemons like this. But yes, yeah. Dusty Lemon, oh my goodness, 47% hero damage. That is quite a lot, and the margin compared to all of the other members, we can see he's the one dealing the damage, right? While all the others were just as supporting actors. But it is a team match, so it did play out really well in their side. And Mm, I would say for side of Team Dungeon, their draft was a bit off as well. So they could definitely work around that part, and maybe mhm. some more macro gameplay improvement Yeah, from their side. But improvement. yeah, yeah. Yeah, this is it. This is it. But yeah, we cannot forget that we have more games right there, because this is not the only game that we're going to be seeing. And I think, Joel, I hope that we're going to be seeing a longer match into the second match. But before that, let us get ready for those. So yeah, Oh, Debbie, wait. yeah, We forgot to yeah. say it. We forgot to say it. बहुत What is बुरा हुआ तू Danjin. ah? बहुत बुरा हुआ for them. Yes. I No, but mean, yeah. that Oh, has to be. How can yeah. we forget a punchline? Yeah, yeah. Oh, Wow. Yeah. yeah. We will be taking a short break before we get back to our next teams. Like fairy tales? Who deserves to live happily ever after?
strong, we ride side by side, locked and loaded, no place to hide. From jungle deep to the final lane, we bring the storm, we bring the flame. We hear the call, the time is now. Push through the clash, we won't back down. Every skill shot, every stride, we fight as one, unified. When legends collide, the fire ignites. We light up the map like stars in the night. With every move, we shift the tide. This is our yard, our battle cry. In the heart of the fight, we rise, we thrive. No fear, no doubt, we're born to survive. Together we stand, no need to hide. Cause this is the moment when legends collide. Towers fall, but we're not done. The base is shaking, here he come. A dance of death and pixel light. One last push, one final fight. Mids under pressure, box holding strong. Top lanes on your zone, we carry on. Ults online, shadows crawl. Call the gank, we'll take 'em all. Echo and chant, legends rise up. Legends strike hard. Legends never fall. We own this battleground. When legends collide, the fire ignites. No turning back, we burn through the night. Unleash your power, let it round. This is our world, electrified. We conquered the map with skill and pride. It's the final blow, no need to hide. We came for glory, side by side. This is the moment when legends collide. Like fairy tales? Who deserves to live happily ever after? Five strong, we ride side by side, locked and loaded, no place to hide. From jungle deep to the final lane, we bring the storm, we bring the flame. We hear the call, the time is now. Push through the clash, we won't back down. Every skill shot, every stride, we fight as one, unified. When legends collide, the fire ignites. We light up the map like stars in the night. With every move, we shift the tide. This is our yard, our battle cry. In the heart of the fight, we rise, we thrive. No fear, no doubt, we're born to survive. Together we stand, no need to hide. Cause this is the moment when legends collide. Towers fall, but we're not done. The base is shaking, here he come. A dance of death and pixel light. One last push, one final fight. Mids under pressure, box holding strong. Top lanes on your zone, we carry on. Ults online, shadows crawl. Call the gank, we'll take 'em all. Echo and chant, legends rise up. Legends strike hard. Legends never fall. We own this battleground. When legends collide, the fire ignites. No turning back, we burn through the night. Unleash your power, let it round. This is our world, electrified. We conquered the map with skill and pride. It's the final blow, no need to hide. We came for glory, side by side. This is the moment when legends collide. Like fairy tales? Who deserves to live happily ever after? Five strong, we ride side by side, locked and loaded, no place to hide. From jungle deep to the final lane, we bring the storm, we bring the flame. We hear the call, the time is now. Push through the clash, we won't back down. Every skill shot, every stride, we fight as one, unified.
When legends collide, the fire ignites. We light up the map like stars in the night. With every move, we shift the tide. This is our battle cry. In the heart of the fight, we rise, we thrive. No fear, no doubt, we're born to survive. Together we stand, no need to hide. Cause this is the moment when legends collide. Towers fall, but we're not done. The base is shaking, here we come. A dance of death and pixel light. One last push, one final fight. Mids under pressure, box holding strong. Top lanes on your... All right, ladies and gentlemen, welcome back again to the India MOBA Cup Season 1. First match was quite a bit of a one-sided match that happened, but I do Sir, hope it what's does your not command? happen Your like that in the team next is match. banning. So, introducing you the teams, it is Team In Heaven going against I am Team not the only one USSR. bound Your by these team is chains. Now onto the caster's desk again. This is your girl Zero, and of course Debbie as well. Magic is my life. Yep, Your and that's team is banning. I think USSR is not from Russia though, right? I think they're from India. So we'll have to see what In Heaven will be playing against them, what they will be using against them, because In Heaven has been a a team that has been known. But for USSR, I think this is the first time I've heard them play here, so it's gonna be definitely interesting. So yeah, if we are ready, I think we'd like to go into the drafting phase because that's where we're gonna be waiting at the start of this game. Definitely a good band coming in. For the teams, USSR onto the blue side and In Heaven onto the red side. Fanny, Harris, and the Bedang taken away. So one focus on the damage dealers and the crowd control. The other team focus onto the sustain heroes. Definitely, and both of them, are quite the playmakers in every single game that we Every see. bullet of So mine the is a gift priority for is you. different, but I think the result will be the same for both the teams. But Yeah. okay, first pick. The Oh. Granger gets locked out by the side of Team USSR, although they have a lot of heroes that they can go for, they still decide that they need to prioritize the Granger. That's Granger has been prioritized by most of the cards player here. But I think it's still a safe choice because the studio was still open though. GRZ, you know what? I think this guy can go for the studio. Just go for it, dude. We want to see the studio. It's gonna be interesting because yeah, he's been performing so well. And Only one thing love about In at Heaven is that I night, think they Your beat they team they is managed to picking. beat Tartarus in a best of one. But yeah, we'll never know what's gonna be happening. There's always the fear of the unknown. So USSR maybe some alien sorry. Some unidentified squad here. So let's see what they're gonna be bringing onto the table because the studio is not picked. He don't want us to see the studio. So yeah, the Frost is gonna be going for the Sicilian instead. But what will USSR go for here? What are the counters? They still have a Zushin, but the thing is, the team kind of needs to play around Zushin as quite a lot. But Farsa might be a Mm. great I choice, but the am thing is, more Nita than Kumar a is also weapon. Your team they is don't picking. catch but okay. Tango, Wow. Tango comes into play. Oh my goodness. Wow. Okay. Let's go. Changa. Your team is Something I banning. only see into the hands of Asuna here. Not even My another team's been itching big for a mix rip. player. Your team So is this is the banning. only second time we're gonna be seeing Changa into play in this best of one series India Answer. MOBA Cup. Sanjo. A Your very, very team is different kind of game banning. style. But look at that. The bans are coming through and for the side of In Heaven, they want to take away the Kalea. Very understandable Kalea. It's never open, just don't open these heroes. So there has to be something. But look at that, Studio is still out there. And for the side of USSR, they decided to pick up the Julian instead Your and team ban is out banning. the Hayabusa. So what are they going to be banning here? Is it going to be another jungle ban? Joy? Oh, Glue. Your team is picking. Fine decision made by
Dip me. Okay, Time to that's right. drop the beat of Dip me. flash. Your Dip team me. is picking. The glue, okay, glue will be getting banned out. Okay, this is the second time we've seen a glue ban out in this Mm-hmm. today, and Yep. it's only been two matches, so quite interesting. Maybe both the teams have some beef with Fight! glue. Fight for Yeah. the ultimate answer. They don't want to GRG, get stuck. yeah, yeah, that definitely. Yeah. They don't want to be, they don't want to be stuck. They don't want to be glued, but yeah. They don't want to be stepped on. Oh yeah, definitely that. Okay, but GRG is on to Joy just denying the Suyo. Quite interesting, but yeah, she does have the backline diving ability, so it should work True out as love well. is like And a blood. Your team Carmilla is picking. paired with a Oh. Hilda. I mean, usually when there's a Carmilla, Always right, on the you go way. for a full CC mage, like maybe the Vixana together, but Mm-hmm. the whole combination looks a bit odd though. Yeah, the combination is definitely a bit odd for USSR, but then again, I think they can actually make it work because for the side of team in heaven they have a godly jungle onto their side, and I've always said that GRG whenever he's in the team, they are highly focused on going for his comfort, and I don't think that in heaven is any different. They would like to go for this comfort for him as well because he'll be the main damage dealer at this point, especially into the early part of this game. So they would want to enable him. But for the side of USSR, they did pick up a hero that can basically be a bully for this Joy into the early parts of this game, especially into the jungle. So he have to be clearing it fast, and he will be trying to go for To this Moba Legends. uh, discomforting the opponent in jungle. So let's see what are his choices. Smash Yeah, them. so Ultras Julian, he deployed. does have quite an advantage against a Joy because he does get his ult very early in level 3, while Joy Mm. does need to have a level 4, so they might just be able to capitalize that one, but it also depends on your team as well. But Finn already just being a little aggressive, providing the clearance that Frost needs, and going for Carmilla. Oh my goodness, is the husband gonna be Oh, eliminating out the wife? But no, a wife is still a oh, wife, so he still gives her one chance to get away. that's domestic violence. But oh, anyway. I mean, she can recall, so she'll be able to fill up her loose HPs. Dip me will be dipping with the health bar here. But yes, a little bit of vision coming out from Finn here onto the Matilda. Yeah, this is an early game Matilda, so you're safe to do it because you have the guiding win. But look at 1v1. Oh, Oh my WWE here, Joel. goodness. Everything Oh my. is getting used up, but the thing is, the action is also happening on the bottom lane as the Granger might be Oh, the whoa, first whoa, whoa, one whoa. out, but Red team's GRG hero has equal been trade coming slain. in from both the teams. One is the first blood and one is the jungler down for their side. Going Wow. in between three people, No, no, no. Matilda wasn't able to save him at all though. Yeah, he can't stand the heat with that. Oh, okay. I think it's still worth it. It's still worth it for USSR here, Yeah, just because they lose out their goal leader, but for the jungle, and the jungle's killed was killed by the goal leader too. But if we talk about the map control, definitely is into the hands of In Heaven here. They look at top Red lane. team hero has oh been my slain. Red goodness, team two hero versus has one. been Hilda gets slain. bursted down while the same trade goes for Finn getting taken down out there. But three versus two people, and they do not have their level 4, especially their mate and this on the Carmilla, so they will still be struggling quite a bit. But yeah, GRG Oh, does take the Red team turtle has in slain fight. the turtle. And Hero Hilda? has been Hilda slain. chasing after GRG. Red Look at team's that. hero The has electrifying been beat slain. as well. Dipney will be getting taken down and followed up by Hilda. Now 3 for none of a trade coming in from both the teams. And I think the decision of Hilda trying to go after the after Joy.
It was Mhm. not quite good. Yeah, I think definitely too early and a meticulous way to start a fight. Indeed, but if we talk about speed rotation here onto the Irithel, he's just having a good time. But look at that! My goodness, Matilda just decides to Woo! go for inside the turret, just disregarding the turret as well, disrespecting. But yeah, Tokito won't be surviving that as Spit takes one kill in his hands as well. He's already struggling as Irithel is being the counter of Ranger, and on top of that, Yeah. he's getting more and more pressure because of the dive ability coming in from Matilda. So it's gonna be double trouble for him, but oh my goodness, the bass impact! Frost takes out his own wife, followed up by Chang'e. Right there, two people down. Once again, GRG just to go for the dash, but that is a Wow! secured in the hands of Frost. Oh my goodness, no, not No. a maniac, not a but still unofficial maniac coming in from Frost. I can just hear him shouting Yeah. out about his maniac, but still, Why did you take my mimic? yeah, Why did you? That's where your own teammates are your opponent here. So another kill. GRG man. This is GRG. yeah. Too aggressive, too aggressive. Just Very aggressive, very you're out, aggressive. just starting everything. Too aggressive. I think you know what? I think it's still safe for him to go for the aggression because look at the flash coming in, but he might try to go in. Oh, yep. Brilliant! One more domestic violence coming up from Cecilia. And oh my goodness, he just dives in around the inhibitor as well. He manages to get out one. What? Oh my goodness. Okay, Chang'e falls in the process as well. Feel that, diving in once again, but will be No. getting taken down. Now, okay, Hilda, I know she is known for her aggression, but the Mhm. thing is, it's not gonna work out here. It's not gonna work out Yeah. because you're just giving your opponents the chance to bust you down because they already got a lot damage. So you still need to be wary about your positions in situations like this. Yeah. 10k goal lead. Already 5 minutes. Oh my goodness. Oh It's my god. something I do not want to see because look at Finn. He won't go in. Oh, AOG connects on to Jaiwa once again. Will be getting taken down, and Spit takes one more killing spree in his hands. And Class Suloy will be getting taken down as well onto the bottom lane. Wow. Will get bursted out solo by GRG on that Joy, and also takes the turret as his bonus prize as well. You know what? I think the Hilda here is a defiant child, but look at the damage. Oh my goodness, Frost is having the time of his life, bursting out everyone. Nothing, okay, nothing is coming in his way of bursting them out, not even the own turrets. Even if Yeah. he doesn't have minions nearby, his teammates are just there to dive inside the turret because the damage is too much. They'll just Yeah. get bursted down, and they know it, so they just go for the whole aggression thing. Yeah, he can be aggressive too because there's not much of a damage coming in, but damage, look at it. My Oh, wrong target, Finn, wrong target. target, yeah. I totally get you on that, Matilda. The wrong target, it just comes out as a clutch. But yeah, 1 point to the side of Team USSR right now, but the pressure is still on. It's not gonna be going as the Oh. Dragon will be getting taken down once again in the hands of Irithel, and legendary for Frost secured with his wife on the line, but still Gianni does get a shutdown. Might be getting a little bit too much of an overextension as Spitz gets taken down as well. Tokito does get a double kill, but the thing is, Frost flickers out with his bats feast, and this has to go for one more kill. Oh my goodness, the amount of damage. Nino Kumar takes the kill. Well, so two people remaining to defend the base while three attacks. They do not have their marksmen, so they will still be surviving for quite a while.
Yeah, there was a little bit of misplay coming out for in heaven here, but I think they are willing to do that again because look at them. 12k goal into their hands, even if they hit it once, it's already a dead meat, especially into the hands of Frost here. This guy, as Sicilian, nonetheless, having that much 11 kills into the 8 minutes of this game. I'm very curious what is his stats gonna be. I think it's gonna be a full on 200 plus into the 8 minute. You know, a normal Sicilian would have 150 now, and that's a good Sicilian. But Yeah. this guy, look at him, 11-0-12. He's hitting a lot and he's not dying. A zero death Sicilian in 8 minutes means nah, game over, game over for them. But look at that! Look at that. Just thinking about it. Oh my Wow, wow! This triple kill goes for a maniac this time. He does get Oh, there we go, there we go. so Kito, will he be giving the savage on him because his teammates are putting their lives on the line? But no, yeah, he decides he doesn't want to give the savage. But oh my goodness, Yeah, dude. you should be wary about your minutes because that is the Yeah. oh my. We didn't get to see the stacks of Sicilian, Debbie, but Yeah, I I it, was. it, it was probably around 250 or more. Yeah, 250 or more, but in the last part with the ultimates and all, I think it's already reached 300. In the 8 minute of this game, he's hitting everything. Zero deaths, no deaths, and look at that. 47% damage on the Sicilian Frost. This guy is amazing. Always being able to play this weak mid into the early part of this game and able to maneuver around the map without dying. This is something that Sicilian players do not have the privilege to do so, especially when there are a lot of dive coming in from your opponent because the Hilda is there and the Julian is also there. And a brains for Taquito, it's just grandeur, but you're having zero deaths, which means you have a lot of protection, you have a lot of stacks, you're going to be stacking so much. And I think on top of that, I feel like it's kind of also a misplay coming out from USSR here. They have a good draft. I think it's still a good draft in consideration because they could have used the Tangi to try to defend the Lord of the Lanes and try to go for the late game too if they want. But then again, they have the Hilda USSR onto that Hilda. I mean, they have a Hilda, but Hilda was the rebellious one. You know, if he was a kid, he was the rebellious one trying to go out and trying to make plays all alone among 5 people. The heat, it's too much. You know. Yeah. I okay. You know what funny thing? You know what funny thing? I was asking Yeah, Frost again. I was asking Frost how much his yeah, yeah, Sicilian stack was. We both were curious, right? So yeah, I yeah, just yeah, yeah. asked. He said he didn't know this. What? Bro, go check. Thank you. Go check. Frozen. Just give us Oh a my recap. goodness. But I think it should be around like 320. Oh yeah, speaking about 320. stacks. Yes. Just Yeah. speaking about stacks. The code, actually the cheat code of having more stacks in an 8 minute mark, you Mm-hmm. you're gonna be building the temporal rain and Mm-hmm. then just have the glowing wand ready and Yeah. just spam your first skills and um bats feast whenever the chance to get in. I've tried it for Oh. myself. You get Mm. 140 stacks in 8 minutes, so Wow. that is quite a lot. Oh my goodness. It's better than going for the Yeah, yeah, COD. yeah. Oh, that has to be the thing people has been doing here, and I think I've seen it here too. But I Oh yeah, think yeah, they exactly just that. they just want to go for the damage into the later part and stack up quite a lot because I think Sicilian is too weak into the early game. So oh my god, it is a cheat code, Jewel. It is a cheat code. Like yeah, I mean everyone can use it now, and hey, we're gonna be seeing a much more earlier. I mean, early damage Sicilian this time around. I mean this season around. Yep, yep. So another one. Oh my goodness, another one-sided match. Another one-sided match coming up for the second match again. So there's still more matches. The question still remains: is it gonna be a one-sided or is it gonna be interesting for both the teams? So for you guys to find that out, stay tuned to the channel and
For now, this is your Zero and Debbie signing off. Like fairy tales? Who deserves to live happily ever after? Five strong, we ride side by side, locked and loaded, no place to hide. From jungle deep to the final lane, we bring the storm, we bring the flame. We hear the call, the time is now. Push through the clash, we roll back down. Every skill shot, every stride, we fight as one, unified. When legends collide, the fire ignites. We light up the map like stars in the night. With every move, we shift the tide. This is our battle cry. In the heart of the fight, we rise, we thrive. No fear, no doubt, we're born to survive. Together we stand, no need to hide. Cause this is the moment when legends collide. Towers fall, but we're not done. The base is shaking, here he come. A dance of death and pixel light. One last push, one final fight. Mids under pressure, box holding strong. Top lanes on your zone, we carry on. Ults online, shadows crawl. Call the gank, we'll take 'em all. Echo and chant, legends rise up. Legends strike hard. Legends never fall. We own this battleground. When legends collide, the fire ignites. No turning back, we burn through the night. Unleash your power, let it ride. This is our world, electrified. We conquered the map with skill and pride. It's the final blow, no need to hide. We came for glory, side by side. This is the moment when legends collide. Like fairy tales? Who deserves to live happily ever after? Five strong, we ride side by side, locked and loaded, no place to hide. From jungle deep to the final lane, we bring the storm, we bring the flame. We hear the call, the time is now. Push through the clash, we roll back down. Every skill shot, every stride, we fight as one, unified. When legends collide, the fire ignites. We light up the map like stars in the night. With every move, we shift the tide. This is our battle cry. In the heart of the fight, we rise, we thrive. No fear, no doubt, we're born to survive. Together we stand, no need to hide. Cause this is the moment when legends collide. Towers fall, but we're not done. The base is shaking, here he come. A dance of death and pixel light. One last push, one final fight. Mids under pressure, box holding strong. Top lanes on your zone, we carry on. Ults online, shadows crawl. Call the gank, we'll take 'em all. Echo and chant, legends rise up. Legends strike hard. Legends never fall. We own this battleground. When legends collide, the fire ignites. No turning back, we burn through the night. Unleash your power, let it ride. This is our world, electrified. We conquered the map with skill and pride. It's the final blow, no need to hide. We came for glory, side by side. This is the moment when legends collide. Like fairy tales? Who deserves to live happily ever after? Five strong, we ride side by side, locked and loaded, no place to hide. From jungle deep to the final lane, we bring the storm, we bring the flame.
flame. We hear the call, the time is now. Push through the clash, we won't back down. Every skill shot, every stride, we fight as one, unified. When legends collide, the fire ignites. We light up the map like stars in the night. With every move, we shift the tide. This is our battle cry. In the heart of the fight, we rise, we thrive. No fear, no doubt, we're born to survive. Together we stand, no need to hide. Cause this is the moment when legends collide. Towers fall, but we're not done. The base is shaking, here he come. A dance of death and pixel light. One last push, one final fight. Mids under pressure, box holding strong. Top lanes on your zone, we carry on. Ults online, shadows crawl. Call the gank, we'll take 'em all. Echo and chant, legends rise up. Legends strike hard. Legends never fall. We own this battleground. When legends collide, the fire ignites. No turning back, we burn through the night. Unleash your power, let it round. This is our world, electrified. We conquered the map with skill and pride. It's the final blow, no need to hide. We came for glory, side by side. This is the moment when legends collide. Like fairy tales? Who deserves to live happily ever after? Five strong, we ride side by side, locked and loaded, no place to hide. From jungle deep to the final lane, we bring the storm, we bring the flame. We hear the call, the time is now. Push through the clash, we won't back down. Every skill shot, every stride, we fight as one, unified. When legends collide, the fire ignites. We light up the map like stars in the night. With every move, we shift the tide. This is our battle cry. In the heart of the fight, we rise, we thrive. No fear, no doubt, we're born to survive. Together we stand, no need to hide. Cause this is the moment when legends collide. Towers fall, but we're not done. The base is shaking, here he come. A dance of death and pixel light. One last push, one final fight. Mids under pressure, box holding strong. Top lanes on your zone, we carry on. Ults online, shadows crawl. Call the gank, we'll take 'em all. Echo and chant, legends rise up. Legends strike hard. Legends never fall. We own this battleground. When legends collide, the fire ignites. No turning back, we burn through the night. Unleash your power, let it round. This is our world, electrified. We conquered the map with skill and pride. It's the final blow, no need to hide. We came for glory, side by side. This is the moment when legends collide. Like fairy tales? Who deserves to live happily ever after? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यहाँ पे एक और खूबसूरत टूर्नामेंट में। इसका नाम है यहाँ पे इंडिया मोबा कप और उसी के साथ जो आज के मैच होंगे बहुत ही खतरनाक जो है मैच होने वाले हैं। बहुत ही अच्छी जो टीम्स है उनके बीच में मैच होंगे। मैं हूँ आपका कास्टर शिनरा और मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे को कास्टर जय भाई। तो जानेंगे उनसे इस मैच के बारे में। जय भाई, क्या हाल चाल है आपके? जी बहुत ही बढ़िया हाल चाल है शिंद्रा भाई। और जैसे कि यहाँ पे जो दो टीम का जो फाइट होने वाला है उसमें एक टीम का नाम तो पहले से जो न्यू भी है और दूसरा टीम हमारा जो जैपलिन है वो तो उनका जो हम लोग एक दो मैचेस कास्टिंग भी करे हैं। बहुत ही अच्छे प्लेयर्स लोग हैं। उनका जो स्पेशली जो हेड और मार्क जो मॉस्को का गेम प्ले होता है उन लोग का स्पेशलिटी गेम प्ले। और जो है शायद जितना मुझे पता चला है कि वो जो है अभी जो वर्ल्ड रैंकिंग होता है उसमें भी है जो है हमारा ग्लोबल रैंकिंग में भी।
तो देखना पड़ेगा यहाँ पे जो टीम न्यूबी जो है उनका नाम जो है खुद न्यूबी रखा हुआ है। न्यूबी जो क्या गेम प्ले यहाँ पे दिखाते हैं और साथ जेपलिन जो अपने एक्सपीरियंस का जो यहाँ पे फायदा उठाते हुए किस तरीके से गेम को डोमिनेट करते हैं वो जो देखने का मौका मिलेगा बहुत ही बढ़िया रहेगा शिंदा भाई। जी हाँ, बिल्कुल। और उसी के साथ पहला बैन आता हुआ हमें ज़रूर दिखेगा। फैनी को यहाँ पे बैन किया गया है, तो केबल्स यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलेगी। केबल्स का प्रयोग जो है वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। उनको सीधा बाहर किया जाएगा शूट भूमि से। और उसी के साथ दूसरा बैन जो है हमें आता हुआ दिखेगा। जैपलिंग इसका जो है काउंटर बैन क्या करते हुए देखेगी हमें यहाँ पे, क्या ये जो है स्ट्रैटेजी यहाँ पे रणनीति जो है क्या बना के आएंगे, देखने वाली बात होगी जय भाई। क्योंकि देखिए ड्राफ्टिंग जो है आपका 60% जो है मैटर करता है। ये आपके जो है इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपकी सामग्री है। अगर आपने सामग्री अच्छी चुनी तो आपका जो बना हुआ फिनिशिंग प्रोडक्ट होगा वो काफी अच्छा रहेगा। देखना पड़ेगा किस तरह का यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स चुनेंगे अपनी टीम के लिए यहाँ जीतने के लिए। और उसी के साथ देखा जाएगा बैन हुआ नहीं है वहां पे उनकी साइड से, शायद जो है यहाँ पे बैन करना भूल गए या फिर जो है नहीं कर पाए समय पे। उसी के साथ दूसरा बैन आता हुआ यहाँ बादाम को बैन किया गया है। वॉल लगाने का प्रयास नहीं रहेगा इस मैच में, वॉल नहीं लगा पाएंगे, सीसी नहीं दे पाएंगे। थंडर बेल्ट के स्टैग जो अपने करके बहुत ही उपदा यहाँ पे रहते हैं बादाम का हमने देखा है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे टूर्नामेंट्स में हर बारी जो है ये एज अ रोवर और एज अ एक्सपी पिक होते हैं, तो इनको जो है यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल शिंदा भाई। यहाँ पे जो गेम प्ले है शायद यहाँ पे हो सकता है कि भूल गए या शायद जो डिसाइड कर रहे थे करते के जो टाइम आउट जो टाइम आउट हो गया उसकी वजह से बैन नहीं कर पाए। आप जो दूसरे बैन की तरफ बढ़ेंगे इसका फेरी और बादाम अच्छा बैन है। यहाँ पे शायद हमें जो है माथिल्डा जो है हमारी उड़न खटोला उनको भी जो है यहाँ पे शायद एक बैन देखने की मौका मिले क्योंकि ये लोग जो है बहुत ज्यादा गेम जो डोमिनेट करते हैं। अगर अच्छा प्लेयर के हाथ में पड़ जाए तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली काम होता है। इसका हम जूशी सीसी इनको भी भूल नहीं सकते। इसका जो कैलिया जो अभी हमारे सपोर्ट में जो डोमिनेट कर रहे हैं अपने बॉडी स्लैम के साथ जो सुनामी स्लैम का प्रयोग करके अपने टारगेट के अंदर आते हैं टीम के अंदर, तो वो बैन हमें देखने को मिला। और यहाँ पे हैरिस जो है भैया हैरिस की जमान फोर्स जो उनको जमान फोर्स को ब्लॉक कर दिया गया है ना सामान द्वारा। तो अच्छा खासा बैन तो हमें देखने को मिल रहा है अभी यहाँ पे टीम न्यूबी की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा खासा बैन जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो है जॉय ओपन है, तो उसका जो है थोड़ा सा डर मेरे को जरूर रहेगा। क्योंकि जॉय अगर खुली छोड़ दी तो उनका जो डैमेज है काफी अच्छा खासा रहता है। यहाँ पे बैकलेन को जिस तरह से गायब करती हैं जॉय, तो काफी ज्यादा खतरा रहता है टीम के लिए। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जॉय को बैन किया जाएगा या फिर बैन किया जाएगा सुयू को या फिर हाई और लॉस। बहुत सारे हीरोज है जो अभी बैन करने रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पहला पिक है वो जाएगा टीम नूबीज की तरफ से। लेकिन उसके साथ ही जब पहला पिक वो उठाएंगे तो मौका मिलेगा यहाँ पे जैपलिन की टीम को 2 मेटा पिक्स उठाने का। वो 2 मेटा पिक्स कौन कौन से होंगे वो देखने वाली बात होगी। और समय का परचम तुरंत चलता हुआ बैन किया जाएगा ग्रेंजर को। कोल्ड लेन की तरफ यहाँ पे कोई एडवांटेज नहीं देना चाहते हैं। और उसी के साथ मौका मिलेगा यहाँ पे टीम न्यूबीज को नेक्सस उठाते हुए फर्स्ट पिक करना चाहेंगे अपनी टीम से थोड़ा विमर्श करते हुए। जय भाई, क्या लगता है यहाँ पे क्या उठाया जाएगा? क्या यहाँ पे जॉय को प्रायोरिटी दिया जाएगा या फिर उठाएंगे सीधा कोई जंगलर? देखना पड़ेगा यहाँ पे। जी बिल्कुल। यहाँ पे जो पीक लिस्ट में इतने सारे हीरो है, बोलूं मैं मातिल्डा है, सुयू है, यहाँ पे सेलेना भी आप बोल सकते हो अच्छा खासा डोमिनेटिंग करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे वो लोग जो है जूशिन को जो है वो पिक कर सकते हैं। बहुत सारे हीरोज जो यहाँ पे ओपन है ऑप्शंस। तो इसी के साथ जो हायाबुसा जो हमारे निंजा हाथुरी भाई उनको जो उठा लिया गया था, यहाँ पे हमें शेडो स्किल का भी यूज देखने को मिलेगा। उनका जो अल्टीमेट जो हीरो बैकलाइनर को मार्क करते हैं वो भी देखने को मिलेगा। इसका जो मैं कह रहा था यहाँ पे मॉस्को जो है वन ट्रिक हीरो जो यहाँ पे पिक कर लिया गया है क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे सुना था कि यहाँ पे मॉस्को वो जो है बहुत ज्यादा खेला जाता है, प्रायोरिटी दिया जाता है। तो मॉस्को जो है वो तो भैया पिक हो चुके हैं। जो उनका गेम प्ले हमें देखना होगा, वन ट्रिक हीरोज बहुत ज्यादा कम हमें देखने को मिलता है इस तरीके के गेम पे। लेकिन मॉस्को अगर लेट गेम तक फार्म मिल जाए तो किसी को भी जो है इजीली मेल्ट डाउन कर सकते हैं। सर गेटअप कैचा जैसे आप बोल रहे थे हाइलोस गेटअप कैचा भी ओपन है, तो गेटअप कैचा को प्रायोरिटी दिया जाए। लेकिन यहाँ पे सुयू भी ले सकते हैं, यहाँ पे जो है माथिल्डा बचे हुए हैं, यहाँ पे जूशिन बचे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हीरो से जो पिक कर सकते हैं अभी अपने एडवांटेज के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मॉस्को का अपना जो कंफर्ट पिक की तरफ गए हैं, मैक्स वो लॉकिंग करना चाहते हैं। नीरज चोपड़ा को उठाया गया है, तो अपने भाले के साथ यहाँ पे देखना पड़ेगा दवाई का भाला जब पड़ेगा मैच पे किस तरह का जो प्रभाव वो दिखाएंगे अपने थ्रू गेम प्ले के थ्रू। और मॉस्को इनको जो है पिक करने दिया, ये थोड़ी सी जो है भूल यहाँ पे साबित हो सकती है क्योंकि इतने अच्छे मॉस्को प्लेयर है। जैसे कि आपने कहा कि हमने देखा भी इनका बहुत पहले जो है गेम प्ले, अभी कुछ रिसेंट टाइम में ही हमने जो है दूसरे टूर्नामेंट्स में टीम का जो है टीम जैपलिन का जो है मैच हम लोगों ने कास्ट किया था वहां पे। लेकिन उसके साथ दूसरा मैं यहाँ पे पिक देख रहा हूँ, लिलिया का उठाया गया है मिड लेन की तरफ से। थोड़ा सा बस डैमेज और लगातार कंटिन्यूस डैमेज का प्रयास देने को रहेगा वहां पे कहीं ना कहीं। और उसी के साथ मेज के ऊपर हवर करेंगे और चाहते हैं कि तीसरा पिक यहाँ पे मेज की तरफ किया जाए। यहाँ पे इडोरा के ऊपर हवर जरूर किया जा रहा है। क्या करना चाहेंगे यहाँ पे? इडोरा उठाना चाहेंगे? क्या लगता है यहाँ पे जय भाई?
कौन सा पिक यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा? क्या यहाँ पे डोरा उठाना अच्छा रहेगा, या फिर उसके अलावा भी काफी अच्छे खासे सॉरी मेज जो है वो अभी भी बाकी है, वो भी उठा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और इसी के साथ थोड़ा ओवर दोबारा से किया गया है, मैच छोड़ के अभी गए हैं जंगलर की तरफ, लॉकिंग करना चाहते हैं, क्या करना चाहेंगे? लूकस के ऊपर ओवर किया जा रहा है, शायद लूकस को जो है यहाँ पे लॉकिंग करना चाहेंगे कुछ देर में यहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल, लूकस को है जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगला जो है बेस का सेकंड फेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, बैन फेस, और इसके साथ दूसरा यहाँ पे मौका उनको नहीं दिया जाएगा। क्या लगता है यहाँ पे जय भाई, अपनी दिव्य दृष्टि से जरा बताइए क्या बैन हमें देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे जो बैन जो चल रहे हैं और जो पीक चल रहे हैं कुछ अलग ही तरीके के चल रहे हैं। यहाँ पे जैसे लिलिया ले गया गया है यहाँ पे, तो उनका जो पोक बर्स्ट डैमेज है बहुत ज्यादा है, वो लिटरली पोक कर सकते हैं, लोगों हेल्थ जो है कम करके पीछे की तरफ भेज सकते हैं। इसके बाद लुकास का क्या ही कहना है, यहाँ पे लुकास जो अच्छा खासा सस्टेन करेंगे। इसके बाद बैन में तो बहुत सारे हीरोज अभी भी मैच पीक हुआ नहीं है जो यहाँ पे जैपलिन की तरफ से, तो जैपलिन में जो अगर चाहे जूशिन सिसिलियन बहुत सारे मेजर्स ओपन है। और मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे जो है ना आपका एडुरा लिया जा रहा था वो हायाबुसा के काउंटर के लिए लिया जा रहा था। हायाबुसा का अच्छा खासा काउंटर, अगर अच्छा एडुरा प्लेयर हो तो कर सकते हो। हायाबुसा पास आती है, अलस्टान का यूज करते हैं, फिर अपना अल्टीमेट यूज करते हैं थंडर का, तो इजीली जो है हायाबुसा को इजीली मेल्ट डाउन कर सकते हैं सिंगल बर्स्ट हीरो। तो इसलिए शायद वो लोग एडुरा पे थोड़ा सा ओवर करते कि एडुरा ले लिया जाए या हायाबुसा का कोई काउंटर लिया जाए। इसके साथ जैसे कह रहा था सिसिलियन जो है उनको बैन कर दिया गया। बहुत जो जुशिन का जो अभी यहाँ पे नर्फ आया था थोड़ा सा अर्ली टू मिड गेम, जो नर्फ की वजह से जो डैमेज आउटपुट है थोड़ा कम कर दिया गया, तो शायद आजकल जो टूर्नामेंट्स में मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से जुशिन को उतना प्रायोरिटाइज किया नहीं जा रहा जिस तरीके से पहले किया जाता था। बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा नर्व जरूर आया है, लेकिन अभी भी जो है दिक्कत वो जरूर बनी रहती है, जो है बार बार सीसी यहाँ पे जो है फ्रंट लेनर्स के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत बनी रहती है। और उसी के साथ जैसे कि आपने कहा यहाँ पे कि इडोरा को उठाया जा सकता है, लेकिन परंतु इडोरा के साथ एक दिक्कत रहती है, वो रहती है वहां पे पोजीशन की, उनको जो है बहुत संभल के खेलना पड़ता है। आपकी पोजीशन जो है हर बारी सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक गलत जगह फंस गए तो वहां पे आपका खात्मा होना फिर निश्चित है, आप जो है फिर कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको जो है वहां पे रोक दिया जाएगा। और सामने जो है यहाँ पे हाई लव जरूर रहेंगे जो है सामने की साइड पे, तो कहीं ना कहीं वो डोरा को जो है थोड़ी सी दिक्कत जरूर दे सकते हैं, अपना जो है एल्ट का प्रयोग करके उनको स्लो डाउन कर सकते हैं, और सिंगल बर्स्ट जो है वो हीरो रहती है डोरा, तो उनको जो है दिक्कत हो सकती है, तो कहीं ना कहीं जो है अच्छा सुझाव यहाँ पे रहेगा। लेकिन दूसरी साइड यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे बैन किया गया है, फोबियस को नहीं रखना चाहते हैं फोबियस आगे की साइड भी, हमें पता है कि किस तरह से जो है बैकलेन की तरफ भी चले जाते हैं, लेन को पूरा जो है डिस्टर्ब करने में काफी अच्छे खासे हीरो रहते हैं यहाँ पे ईएक्सपी की तरफ से। और यहाँ पे देखना पड़ेगा ये आखिरी बैन क्या जाएगा टीम नूबी की तरफ से, थोड़ा सा ओवर करते हुए अपनी टीम के साथ विमर्श जरूर करेंगे। अभी यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ इनकी टीम की तरफ से जो है अभी भी जो है हाइपर्स वगैरह जो है अभी खुले हुए हैं, मेज अभी खुला है, तो चाहेंगे जो है एक और मेज या फिर जो है हाइपर यहाँ पे बैन किया जाए। क्या लगता है यहाँ पे क्या बैन किया जाएगा, सुयू को या फिर कोई दूसरा मेज यहाँ पे बैन हमें देखने को मिलेगा कि नहीं देना चाहेंगे उनको मौका? टीम की पारी की बात करूं तो अभी तक काफी अच्छी खासी पारी चल रही है। जी हाँ बिल्कुल, मेज की तरफ जो है यहाँ पे देखिए बैन कर दिया गया है, मौका नहीं देना चाहते हैं कोई भी मेज उठाया जाए अच्छा खासा। और उसी के साथ टीम जैपलिन की तरफ से आता हुआ पिक चौथा पिक की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है अभी भी बचा हुआ है सुयू, सुयू को ले सकते हैं। हायाबुसा का जो है डैश करेंगे, जैसे फ्लिकर पे हायाबुसा का अल्टी कैंसिल होता है उसके लिए सुयू जो है सेकंड स्किल यूज करके अपना जो हायाबुसा का अल्टी जो कैंसिल करने में बहुत सक्षम रहते हैं। इसी के साथ वेलेंटिना जो यहाँ पे ओवर किया जा रहा है, फिर जिलोन पे ओवर किया जा रहा है। लगता है जैपलिन जो यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद वेलेंटिना जो ले लिया है, क्योंकि अच्छा खासा पीक में कहना चाहूंगा यहाँ पे हाइलोस का ग्लोरियस पाथ का भी कॉपी कर सकता है, हायाबुसा का जो स्किल है अल्टीमेट उसका भी कॉपी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एडवांटेज यहाँ पे वेलेंटिना की तरफ से हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद रूबी पे भी ओवर किया जा रहा है, रूबी जो है नया स्किल के साथ बहुत ही शानदार लग रही है। तो रूबी या मैं अभी जो लेकिन एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, अगर पिक हो भी रहा है तो मैजिक डैमेज ज्यादा पिक ना करे, क्योंकि हायाबुसा जो है वो फिजिकल डैमेज पे, हाइलोस जो है वो डैमेज देते हैं अच्छा खासा, टैंक भी है साथ में डैमेज भी देते हैं, लेकिन मैजिक डैमेज। उसके बाद लिलिया पिक हो गया, अभी जूलियन भी पिक होगा, तो मैजिक तीन तीन जो हीरो है तीन तीन मैजिक हीरो हो जाएगा, तो फिजिकल पर उनको थोड़ा सा डिपेंड होना जरूरी है। इसके बाद बिल्कुल जो रूबी है उनको पिक कर लेगा, अच्छा खासा सीसी प्रदान करते हैं। लाइफ स्टील क्वीन है हमारे रूबी, अच्छा खासा लाइफ स्टील जो यहाँ पे दिखता है। इसके बाद मेलिसा जो है थोड़ा बहुत पोकबाजी किया जा रहा है, शायद मेलिसा जो यहाँ पे उठा लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मेलिसा का भले जितना भी नर्फ हुआ हो लेकिन डैमेज अभी भी अच्छा खासा है लेट गेम पे। शिंदा भाई जी हाँ बिल्कुल, वो जो है मल्टीपल टारगेट्स जो हैं वो लॉक इन करना चाहते हैं, और उसी के साथ आखिरी यहाँ पे जो है ईएक्सपी लेन की तरफ से हमें ये जो है पिक देखने को मिलेगा यहाँ पे, यहाँ हवर करते हुए काफी सारे हीरोज पूल के ऊपर अभी थोड़ा सा जो है हवर किया जा रहा है। और उसी के साथ यहाँ पे मटेरियल लॉक इन किया गया है, तो स्लो
बढ़ने का जो चांसेस था वो कहीं ना कहीं उनको है दूर करने का प्रयास रहेंगे बटिल्डा की तरफ से। काफी अच्छा पिक मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे। और पिक की बात करूं तो दोनों ही टीम काफी अच्छी जा रहा है चलती हुई, लेकिन देखना पड़ेगा कि गेम का प्रभाव किसी तरफ जाएगा। जानेंगे जय भाई से क्या लगता है उनको कि फर्स्ट ब्लड लेने की क्षमता किस टीम में रहेगी यहाँ पे, अभी किस टीम के ज्यादा चांसेस रहेंगे यहाँ पे फर्स्ट ब्लड लेने के। जी बिल्कुल, टीम न्यू भी अगर अच्छा खेलती है तो यहाँ पे टीम न्यू भी जो है उनकी तरफ फर्स्ट ब्लड के चांसेस ज्यादा रहेगा, क्योंकि उनके पास हाया है, जो है रूबी है, और हाइलोस जो अच्छा खासा इनिशिएट कर सकते हैं अर्ली टू मिड गेम तक। तो फर्स्ट ब्लड की चांसेस ज्यादा है। और अगर मिड टू लेट गेम जाए तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे टीम न्यूबी को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि हमारे नीरज चोपड़ा जी जो है बाला इतना चुभाएंगे कि दर्द से जो है टीम न्यूबी बैठ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा संभाल के खेलो, जल्दी से खेलो, गेम जल्दी खत्म करो, ताकि मॉस्को को फार्म की मौका ना मिले। तो ही बहुत बेहतरीन गेम प्ले हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन की पारी गेम की यहाँ पे हमें देखने को ज़रूर मिलेगी। और उसी के साथ जो टीम यहाँ पे है अपनी ज़ेपलिन, उनके पास अच्छे खासे यहाँ पे जो है आगे जाने के लिए हीरोज़ है, फ्रंट लाइनर्स काफ़ी अच्छे खासे हैं। और उसी के साथ जो गेम की पारी यहाँ स्टार्ट होती हुई हम आएँगे सीधा लैंड ऑफ टाउन की तरफ। लैंड ऑफ टाउन में आगमन होता हुआ सारे हीरो जाएँगे अपने-अपने जो है जंगल फार्म की तरफ खेती-बाड़ी करने के लिए। और उसके साथ हायाबुसा जाते हुए अपने ब्लू की तरफ, वहीं से जो है दोनों हीरो जो है अपने-अपने बफिल से जो है खेती-बाड़ी करेंगे यहाँ पे। जी बिल्कुल, यहाँ पे खेती बाड़ी तो शुरू करेंगे। यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि अगर दोनों तरफ से जो है दोनों दोनों ब्लू बफ पे गए तो एक टीम जो है शायद जाएंगे टॉप लेन की तरफ, एक टीम जो है जाएंगे गोल्ड लेन की तरफ, बॉट लेन की तरफ। तो शायद हमें दो अलग अलग जगह जो है गैंग देने की मौका मिल सकता है, कि हमेशा जो हाइपर प्रेफर करता है अपना जिस तरीके से बाफ खत्म होता है उस साइड से जाके जो है यहाँ पे प्रेशर दिया जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि अर्ली गेम पे आप एमएम प्लेन को या थोड़ा सा फोर्स करो, मजबूर करो, उनका जो है डेथ मौत का सामना करो, ताकि उनका फार्म जो है कोई भी टीम का जो है थोड़ा डील हो सके। इसका जो पोक भाई चल रहा है जंगल पे, थोड़ा सा जो है डिस्टर्बेंस करने की कोशिश किया जा रहा है, मतलब लगे थोड़ा उनके पास जो स्किल है उसकी वजह से वो अपनी टीम को भगा के लेके जा सकती है। तो यहाँ पे कोशिश अच्छा खासा, लेकिन हायाबुसा आया अपने शेडो का यूज किया, लेकिन यहाँ पे जो चौका मारते हुए यहाँ पे हमारे वेलेंटिना चौका मार चुके हैं। तो इसी के साथ जो है थोड़ा बहुत जो फार्म है वेलेंटिना की तरफ जाएंगे। टॉप लेन पे देख सकते हैं कि टॉप लेन पे अच्छा खासा जो है फाइट चल रहा है रूबी वर्सेस गाटो का। कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों जो है एक सस्टेन कर सकते हैं टैंकी बिल्ड पे, एक जो है लाइफस्टाइल क्वीन है। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने कहा लुकास देखिए आए बीच से अपना फार्मिंग करेंगे, फिर शायद पॉसिबल यहाँ पे गैंग देखने को मिल सकता है। दोनों टीम दोनों तरफ से चले गए, जो यहाँ पे एक जो अच्छा खासा फाइट की और फर्स्ट ब्लड हो जाए हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा शिंदा वाला। या बिल्कुल, और उसी के साथ गोल्ड क्रैप पे यहाँ पे हमला करने का प्रयास जरूर रहेगा। उसी के साथ मेलेसा यहाँ से पोक करने का प्रयास करती हुई, और यहाँ पे जो टीम की फाइट है गए जरूर थे एमएम लेन पे, लेकिन जो है कुछ फाइट हुआ नहीं। उसी के साथ पीछे हटना पड़ेगा, डैमेज देने का प्रयास, लूकस पीछे से आएंगे, डैमेज जरूर देंगे लेकिन स्किल लगा नहीं, पीछे हटना पड़ेगा। बहुत ही कम एचपी पे जो है अभी पीछे हटेंगे, हील होंगे, क्योंकि कुछ ही देर में अभी जो है कछुआ महाराज आएंगे। और इस कछुआ महाराज के साथ यहाँ पे गलती नहीं दोहराना चाहेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है गलती ये ना हो इनसे, क्योंकि अभी जो है कछुआ महाराज लेना भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी के साथ यहाँ पे पोक करने के लिए जाएंगे यहाँ पे, और अच्छा खासा यहाँ पे पोक करते हुए रूबी को अकेले धाराशाही करते हुए एचपी उनकी बिल्कुल कम कर दी गई है वहां पे, उनको जो है मौका नहीं देना चाहते हैं इस टर्टल के लिए। और जोनिंग करने का प्रयास करते हुए हायाबुसा जो है यहाँ पे पोजीशन लेने के लिए तैयार है। पीछे से जो है यहाँ पे मटिल्डा आई जरूर है, पोक करेंगी, चार बंदे यहाँ पे आते हुए टर्टल की लेन पे हाइपर हैं वो भी आते हुए, और अपनी अपनी जो है पोजीशन लेने के लिए तैयार है यहाँ पे। उसी के साथ प्रयास जरूर रहेगा आगे जाने का, डैमेज देने का प्रयास, हाइल का प्रयोग करेंगे। और उसी के साथ यहाँ पे सर्जिकल ईगल मारा गया है, ईगल ये दादा पे मारते हुए डैमेज देंगे, काफी ज्यादा फर्स्ट ब्लड लेंगे। हायाबुसा को भेजा गया है यहाँ पे स्क्रीन की तरफ, टाइटल सिक्योर करेंगे, और इसी के साथ पीछे हटना पड़ेगा, ज्यादा रहेंगे तो यहाँ पे जो है दिक्कत हो सकता है। दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल डबल किल यहाँ पे लेके जाएंगे। कोड़ा मानव को भेजा सीधा अपने मृत्यु के द्वार, और इसी के साथ एक बार पारी जो अपनी टीम जो है यहाँ पे टीम ज़ैपलिंग अपनी पारी जो है यहाँ पे अपनी तरफ करती हुई, गेम का झुकाव जो है अभी इस तरफ जाता हुआ। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार जो है इनिशिएशन देखने को मिला। बहुत ही शानदार जो यहाँ पे नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंका था कि अगर जरूरत पड़ा यहाँ पे टक्कर देने में कोई दिक्कत हुआ तो हम पहुंच जाएंगे। भाला फेंका, उन्होंने विजन लिया, बहुत ही अच्छा खासा गेम प्ले मिला। टर्टल भी अच्छा खासा सिलाया, और लुकास का क्या ही कहना, जिस तरीके से एग्रेसिवली खेले उन्होंने, इनिशिएट किया, किल लिया। उनका टीम पांचों मेंबर ऑलमोस्ट पास ही थे, तो सपोर्ट अच्छा देखने को मिला। इसका अभी एमएम लैंग जो है वहाँ पे जो है थोड़ा भाई बहुत गैंग की जो है यहाँ पे संभावना हमें देखने को मिल रहा है। हाइलोस जो उनका ग्लोरियस पाथ जो है वेलेंटिना द्वारा चोरी कर लिया गया है, हायाबुसा आएंगे, लेकिन लुकास के सामने थोड़ा टिकने पे मुश्किल हो सकता है। और थोड़ा बहुत आगे पीछे करेंगे, थोड़ा बहुत पोक करेंगे, शूरिकेन को जो है आगे पीछे फेंकेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे।
और यहाँ पे मेलिसा को थोड़ा बहुत दिक्कत जो हमें देखने को मिल रहा है। हाइलोस बचाने की कोशिश करेंगे, ग्लोरियस पॉप का यूज हो चुका है, दोनों तरफ से गाटो का एओई जो यहाँ पे पड़ने वाले टारगेट के अंदर इस फाइट जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एडवांटेज है जिसे दोनों तरफ से देखने को मिल सकता है। गाटो को जो है लिलिया ने यहाँ पे ले चुके हैं। फिर और एक जो किल यहाँ पे फाइनली लुकास जो है उनको भी मौत की जो घाट पहुंचा दिया गया। जो मैं बोल रहा था यहाँ पे शिंगरा भाई, आप थोड़ा सा यहाँ पे रिक्स दोनों दो दाढ़ी तलवार है। यहाँ पे अगर आप टारगेट के अंदर फाइट ले तो आरडी गेम पे तो 15% डैमेज रिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में साथ जो टारगेट का ट्रू डैमेज बढ़ता जाएगा पड़ने की बात, तो वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। इसका जो गोल एडवांटेज है अभी टीम न्यूबी की तरफ जाते हुए। जी हाँ बिल्कुल, अभी तो जो है बराबर ही हमें देखने को मिल रहा है गोल डिफरेंस। और इसी से बात करें तो यहाँ पे स्कोर जो है 2-2 का स्कोर होता हुआ टीम जो है अभी जो है काफी ज्यादा जो है स्नो बॉलिंग करने का प्रयास जो है कहीं ना कहीं जो है वहां असमर्थ रहता हुआ बॉटम लेन की तरफ टैरेट में वहां पे जाके ज्यादा ओवर एक्सटेंड किया और उसी के कारण अपने जो दो खेल है वहां पे गवाए। और उसी के साथ फार्म की अगर बात करें तो ज्यादा जो है फर्क नहीं आया। और उसी के साथ यहाँ पे डैमेज देने का प्रयास जरूर किया जाएगा हायाबुसा को। उसी के साथ कछुआ महाराज अपने जो है उनका आगमन होता हुआ इस गेम में वो आते हुए और उनके लिए जो है यहाँ पे लड़ाई होगा जरूर। और इसी के साथ अपना जो है यहाँ पे रेड बफ लेके आएंगे लूकस, छोटे छोटे जो है मिनियंस वो जरूर लेने आना चाहते हैं। और उसी के साथ देखना पड़ेगा किस तरह से यहाँ पे ये जो फाइट है इसका आगमन होगा जरूर। गाटो काचा गए हैं, उन्होंने भाप लिया है को अंदर गए हैं, वहां पे उनको जो है जोन आउट करने का प्रयास इजी टर्टल लेते हुए यहाँ पे। और उसी के साथ स्लो जरूर किया यहाँ पे अल्ट मार के पीछे हटेंगे। बॉट लेन की बात करें तो वहां पे जो है डैमेज देने का प्रयास मॉस को अकेले पीछे हटना पड़ेगा और सही समय पे जो है अपने कदम पीछे खींचते हुए टीम के साथ जाएंगे जरूर। वहां पे फाइन मिलने का प्रयास अभी तक जो है एक भी स्तंभ जो है वो टूटा नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो टीम है थोड़ी सी बैलेंस चलती हुई आगे पीछे जो है बैक एंड फोर्थ वहां पे हमें देखने को मिल रहा है। बार बार जो है एक दूसरे को पोक किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है सफलता वो अभी तक जो है टीम यहाँ पे जेपलिन की तरफ जाती हुई। और उसके साथ यहाँ पे क्या ही डैमेज दिया है, बहुत ही कम एचपी पे हाई लॉस बचे हैं। और कहना चाहूंगा अभी भी जो है टर्टल ले लेके जो है यहाँ पे इजिली जो है जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं ना जय भाई वो कंप्लीट किए जा रहे हैं। और उसी के साथ यहाँ पे हमला बोल कर दिया है यहाँ पे। उसके साथ भाले की बारिश होती हुई का प्रयोग करके जाएंगे जरूर, बहुत ही निकलने का प्रयास, लेकिन नीरज चोपड़ा नहीं छोड़ना चाहते हैं उनको पीछे से और बहुत ही ज्यादा डैमेज दिया और उनको जो है मृत्यु के द्वार पहुंचाया गया। लेकिन यहाँ पे अल्ट का प्रयोग करेंगे हायाबुसा, उनका अल्ट जाएगा सीधा मिनियन के ऊपर, मारा जरूर हीरो के ऊपर था लेकिन वो शिफ्ट हुआ मिनियन के ऊपर। और इसी के साथ यहाँ पे मॉस्को को मिलेगा एक जीवन दान। बहुत ही अच्छा ऐसा यहाँ पे हायाबुसा ने कोशिश जरूर किया था, लेकिन उन क्या ही कहना टीम जेपलिन का। उनको पता है हायाबुसा के अगर कोई स्किल यूज करता है पास में जो भी खड़ा था उनकी तरफ से स्किल लगता है तो उनका स्किल डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा डिसीजन था, उन्होंने कोई हड़बड़ी नहीं किया, अपना टीम को बचाया। इसका देखिए पुश चल रहा टॉरेट पे, मस्त अपने जो एक टॉरेट ले लिया है। लीलिया कोशिश करते थोड़ा सा लाइफ बचते बचते यहाँ पे चले गए। लीलिया अपना अल्टीमेट का यहाँ पे यूज करना चाहेंगे कि बिल्कुल, लेकिन बचना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। वेलेंटिना वेट कर रहे थे, इसका किल जो है भैया वेलेंटिना जो यहाँ पे उठा के ले जाएंगे। वो सिर्फ जो यहाँ पे हाइलोस का जो ग्लोरियस बात है वो भी चोरी नहीं कर सकते, जो यहाँ पे किल भी है वो अच्छा खासा चोरी कर रहे हैं यहाँ पे। उनको पता था लिलिया पीछे की तरफ आएंगे, वो आगे एग्रेसिव हुए नहीं, उनका टीम ने फॉलो अप किया, हेल्थ कम होती पीछे की तरफ है, एडवांटेज लिया। वेलेंटिना ने अच्छा खासा जो किल है यहाँ पे मिल गया, ग्लोरियस पाथ का यूज हुआ है। हाइलोस पीछे की तरफ जाएंगे, टाइट के अंदर ही ड्राइव चल रहा है कि किस तरह से हाइलोस जैसा हीरो को जो पीछे भगाया जाए, टाइट को पुश किया जा रहा है। जैपलिन का क्या ही कहना इस गेम पे, जिस तरह से जो दबाव बनाकर रख रहे हैं, लेट गेम हीरो से उनके पास थोड़ा बहुत, उसके बावजूद जिस तरह से टीम पार्टिसिपेंट टीम फाइट हमें देखने को मिल रहा है ना, बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है शिंदा भाई। जी हाँ बिल्कुल। और देखिए अब उनके जंगल पे आ चुके हैं वो लोग और जंगल पे आके थोड़ा सा उनको जो है कॉर्नर करने का प्रयास जरूर करेंगे। उसके साथ डैमेज देने का प्रयास, अल्ट का प्रयोग करके अपनी टीम को लेके जाएंगे पीछे, लेकिन हायाबुसा वहां पे आए जरूर थे, मारा जरूर लेकिन कोई फायदा नहीं। और इसी के साथ यहाँ पे एमएम बहुत ही गलत जगह पे अकेले, बहुत ही खराब पोजीशन यहाँ पे रही उनकी। और इसी के साथ उनको जो है मृत्यु के द्वार पहुंचा दिया गया। वो वेट करेंगे थोड़ी देर तक यहाँ पे रिस्पॉन्स स्क्रीन पे। और इसी के साथ ये कछुआ महाराज भी ले जाएगी टीम जेपलिन। टीम जेपलिन जो है अपने न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव जो है काफी अच्छी तरह पूरी करती हुई। और इसी के साथ एक बार जो है यहाँ पे आइटमाइजेशन की तरफ जरूर जाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि यहाँ पे टीम के जो है कितने अच्छे खासे यहाँ पे आइटम्स बने हैं। और यहाँ पे अगर बात करें आइटमाइजेशन की तो मॉस्को का यहाँ पे गोल्डन स्टाफ आ चुका है, एक आइटम और आएगा तो मॉस्को का टेनेटिव बिल्ड कंप्लीट होगा। और फिर जो भाले हैं वो लगने जब स्टार्ट होंगे जय भाई, तो उसमें जो है बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आइटम तो अच्छा खासा बन चुका है। हाइलोस के पास डोमिनेंस आइस भी बन चुके हैं। लिलिया का आइटम जो है यहाँ पे हाँ लिलिया का आइटम भी सही का अच्छा खासा बन चुका है।
यहाँ पे रूबी जो है थोड़ा सा डिफेंस बिल्ड में जा रहे हैं, लाइफ स्टाइल के साथ जो है यहाँ पे क्या करेंगे, एचपी जो है हाफ करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे डोमिनेंस साइज ले चुके हैं, दो डोमिनेंस साइज जो है बन चुके हैं यहाँ पे टीम नेवी की तरफ से। लेकिन यहाँ पे गाटो कच्चा का भी जो अच्छा खासा बन चुके हैं, जो डिफेंस आइटम है, माथिल्डा भी अच्छा खासा आइटम जो है यहाँ पे, वॉइसेस फ्लक्स जो है वो भी बन सकते हैं, अच्छा खासा शील्ड प्रदान मिलेगा उससे। वेलेंटिना का भी 2 आइटम बन चुका है। लुकास भैया का क्या कहना, तीसरा आइटम बनेगा, उनका डैमेज और लाइफस्टाइल जो आने वाला है बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा, और वाला जो चुभने वाला है आपने बोला है बहुत ज्यादा चुभाने वाला है वाला भैया। जी हाँ बिल्कुल, और वो अभी से जो है चुभने भी लगा है। लेकिन देखिए टीम की जो फाइट करेगा, स्तंभ की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है स्तंभ की तरफ टीम जैपलिंग कौन का प्रभाव जरूर रहेगा। एजी का प्रयोग करेंगे तो बंदे जरूर पकड़ेंगे अपनी एजी के साथ। सर्चिंग ईगल मारा गया है, उनको भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। डैमेज से बाहर से पड़ता हुआ पीछे से आएगा भाला, भाला के साथ यहाँ पे आएगा नीरज चोपड़ा जी की एंट्री, भाला मार के सीधा करेंगे उनको मृत्यु दून के द्वार। और इसी के साथ यहाँ पे मिड लेन भी लेना चाहेंगे, बहुत ही कम एचपी बचे जरूर है लेकिन मौका नहीं देना चाहते। लूकस पीछे से आए हैं और रूबी को डैमेज देने का प्रयास, टावर के अंदर ज्यादा घुसेंगे लेकिन पीछे हटना पड़ेगा, ज्यादा फाइट लेंगे टावर के अंदर तो दोबारा से यहाँ पे मृत्यु दंड उनको मिल सकता है, तो पीछे संभल के खेलना पड़ेगा। मिड लेन का टर्रेट लेने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, उनको जो है पूरे देखिए जिस तरह से जोन आउट किया गया है, बहुत ही कम एचपी पे बाल बाल बची है यहाँ पे अपनी मटिल्डा, उनको रिकॉल लेना पड़ेगा। और अपने जो मास्को हैं वो अच्छे खासे फार्म हो चुके हैं, अभी 104 का स्कोर होता हुआ, क्या ही शानदार भाला वहां पे मारा और एंट्री करी, अपनी पूरी टीम को जो है एक तरह से जो स्तर है वो अलग दूसरी दिशा पे वहां पे उन्होंने पलटा। और जी बिल्कुल, बहुत ही गेम प्ले जो है मैं बोल रहा था, वो लोगों का मैच हमने देखा अच्छा खासा जो है दबाव में रखते हैं तो बहुत ही शानदार गेम प्ले जो हमें देखने को मिला है, क्योंकि इस तरह का गेम प्ले जो एक्सपीरियंस टीम दे रहा है, टीम न्यू भी जो है उन्होंने नाम न्यू भी रखा है, नई टीम है बहुत ही, लेकिन उनका गेम प्ले भी हम बुरा नहीं बोल सकते, बहुत अच्छा खासा जो यहाँ पे डिफेंसिव जो है खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे जो है कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मोबा 5v5 में कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है, कभी भी जो पाछा पलट सकता है। आइलो जो रोने वाली इमोटे का प्रयोग कर रहे हैं, रोइए मत, यहाँ पे कोशिश कीजिए, यहाँ पे अपना जो है ग्लोरियस पाथ होगा यूज करके यहाँ पे ग्लोरी लेके आइए। आप रोने का इमोटी देखा गया कि आज जो है कोई फायदा नहीं है, कोशिश करेंगे तो ही जीत मिलेगा। तो अच्छा खासा गेम प्ले यहाँ पे देखिए किस तरीके से वो लोग कॉन्फिडेंट है, जैफलिन की बाफ की तरफ भी गैंग करने के लिए सोच नहीं रहे, हाइलोस जैसा हीरो टीम में रहते हैं, फिर से यहाँ पे वेलेंटिना ने जो हाइलोस का ग्लोरियस पाथ जो फिर से चुरा लिया। ऐसा लग रहा है कि वेलेंटिना ने बोला हाइलोस भाई ग्लोरियस पाथ एक नहीं 2 दिखेगा, एक के साथ एक फ्री, वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिला। लॉर्ड का आराधना शुरू हो चुका है, लॉर्ड जो अभी बच्चे लॉर्ड है वो अभी तक उनका जो है आया नहीं है उम्र जो ताकतवर वाला, आया उसे पोक करेंगे लेकिन शायद उनको थोड़ा देर बाद पोक करना चाहिए क्योंकि अभी उनका शेडो स्किन रहेगा, तो वहाँ पे क्या करा एंगेज करते तो बचना भी मुश्किल है। इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लॉर्ड जो है टीम जैफलिन लेके जाएंगे, इस बार कहीं ना कहीं दबाव जो है बहुत अच्छा खासा यहाँ पे जो है टीम न्यूबी की तरफ बढ़ता हुआ। देखिए आप जय भाई, जिस तरह से यहाँ पे जोनिंग कर रही है टीम जैपलिंग, किस तरह से यहाँ जोनिंग किया गया, उनको जो है पहले ऑरेंज बफ पे काफी ज्यादा जो है दिक्कतें दिया गया और इसी के साथ दोबारा से बफ पे आएंगे जरूर। इसी के साथ सर्जिंग का प्रयोग करते हुए डैमेज देने का प्रयास करते हुए बहुत ही कम एचपी पे बचेंगे यहाँ पे मटिल्डा, लेकिन पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अल्ट का प्रयोग करेंगे, फिर दोबारा से यहाँ पे अल्ट बेचारे जो है मिनियन के ऊपर लगते हुए, और उसी के साथ यहाँ पे देखेंगे जो क्रीप है उनके ऊपर यहाँ पे अल्ट लगा, लेकिन उसके साथ जो लेन है पूरी सिंक होती हुई, लेन आएगी पूरी जगह से एजी का प्रयोग करेंगे, 2 बंदे यहाँ पे पकड़े जरूर हैं और टावर के अंदर डैमेज देने का प्रयास, काफी अच्छा खासा डैमेज हमें पड़ता हुआ मलेशिया का, पीछे हटना पड़ेगा और उसी के साथ ये टावर जो है खत्म करने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन लॉर्ड धाराशाही होते हुए वहां पे मिनियंस की कमी के कारण ये जो टैरेट है अभी धाराशाही तो नहीं होगा, लेकिन पीछे से मिनियन का बैकअप भी आ चुका है, साइड के जो टैरेट है वो ले लेंगे यहाँ पे और उसी के साथ मिड का टैरेट जाएगा जरूर, प्रयास पूरा करते हुए चोट डैमेज देने का प्रयास, बहुत ही कम एचपी पे निकलेंगे यहाँ पे और इसी के साथ अपनी जो पारी है टीम की अच्छी खासी पलती हुई 2-8 का, जहाँ पे 2-8 का जो स्कोर होता हुआ, स्वर्ण मुद्राओं की बात करें तो ऑलमोस्ट 8 गे का जो है यहाँ पे गोल डिफरेंस आता हुआ दिख रहा है हमें जय भाई, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, एक और टर्टल यहाँ पे लॉर्ड लेंगे तो यहाँ पे जो है दिक्कत हो सकता है टीम न्यूबी के लिए डिफेंड करने का, क्योंकि उनके जो स्तंभ है, उनका जो मिड स्तंभ है वो भी जा चुका है और अभी जो है गेम में सिर्फ हुए हैं 12 मिनट। जी बिल्कुल, गेम प्ले तो अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ पे किल जो है देखना चाहेंगे तो यहाँ पे 2-8 का डिफरेंस में चल रहा है, 8 किल जो है भाई जो जेपलिन को मिल चुका है, 2 किल जो है यहाँ पे उनको मिला है, तो कहीं ना कहीं जो 2 किल था वो जो है जेपलिन की जो एग्रेसिव गेम प्ले था, एग्रेशन गेम प्ले यहाँ पे अर्ली गेम पे देखने को मिला, उसकी वजह से था। यहाँ पे ऐसा कोई किल मिला नहीं है टीम न्यूबी को जो है फाइट करके जो है टीम फाइट एडवांटेज मिले या सोलो फाइट एडवांटेज मिले, तो कहीं ना कहीं जेपलिन का गेम प्ले जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो एक जो देखने को मिलता है टीम सिनर्जी, 3-3 लोग साथ में खेल रहे हैं, 2 लोग पुश पे डिपेंड कर रहे हैं, मिलियन से क्लियर कर रहे हैं ताकि जो दबाव है बना रहे, मिलियन पे मिलियन फ्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो टीम सिनर्जी हम देखते हैं ना बड़े बड़े टीमों में, तो उसका एक कुछ जो कुछ गुण जो है हमें जेपलिन की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा, और नीरज चोपड़ा जी जो हमारे क्या है उन्होंने अभी जो 104 पे भले ही खेल नहीं दिखाया है लेकिन खेल जाने पे नहीं दिया है,
104 में होना मतलब उनका फार्म जो है अच्छा खासा हो चुका है, आइटम्स भी शायद बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जादू दिखाएंगे कि मेलिसा जो है 022 पे बैठा हुआ है। और जैसे कि मैं कह रहा था, देखिए अभी मॉस्को का फार्म ऑलमोस्ट खत्म है, जो लास्ट फीड जो है फार्म है आइटम वो बना रहे हैं, शायद वो जो यहाँ पे वो जो आपका फिजिकल इम्यूनिटी वाला आइटम होता है वही बनाएंगे यहाँ पे विंचेंट को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गेम प्ले जो है डोमिनेट हो रहा है, चांसेस बहुत ही कम लग रहा है यहाँ पे हमें जो टीम मूवी की तरफ से यहाँ पे जीतने की। तो यहाँ बिल्कुल देखिए अभी जो है यहाँ पे जो अब आपका इन्वर्टेड टैरेट एक बार टूट जाता है तो वहां पे मीनिंग के जो प्रेशर हमेशा रहते हैं, तो आपको कहीं ना बेस पे भी प्रेजेंट रहना पड़ता है, लेकिन साथ का साथ जो है यहाँ पे एनिमीज के ऊपर भी नजर रखना पड़ता है, उनके ऑब्जेक्टिव पे भी नजर रखना पड़ता है। और उसी के साथ देखिए यहाँ पे लॉर्ड का आरंभ होता हुआ, लॉर्ड जो है पधार चुके हैं, वो वहां पे जो है अपनी जगह आ चुके हैं और इसी के साथ उनकी आराधना के लिए जो टीम है वो जाएगी जरूर। और देखिए उससे पहले यहाँ पे पोक करने के लिए आए जरूर है मटिल्डा, पूरा विजन जो है प्रोवाइड करते हुए टीम का कि कहाँ पे रहेंगे। हायाबुसा थोड़ी सी चालाकी करना चाहते हैं इस बार, वो जा चुके हैं झाड़ी के अंदर, संभल के खेलना पड़ेगा, अगर जल्दबाजी में इस बार जो है शैडो मारी तो दिक्कत हो सकती है। और इसी की पारी यहाँ देखनी पड़ेगी किस तरह से खेलेंगे। गए जरूर हैं अंदर और इसी के साथ बहुत ही बेहतरीन रेक्ट्री का प्रयोग करते हुए लेके जाएंगे, अपनी टीम के लिए लेके जाएंगे, लेकिन अभी हटना पड़ेगा, ज्यादा आगे रहेंगे तो यहाँ पे खुद भी मर सकते हैं और यहाँ पे पूरी टीम को भी मरवा सकते हैं, तो पीछे हटना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पे हल्का प्रयोग हमें देखने को मिला आयरॉस की तरफ से, लेकिन ये लॉर्ड लेने का क्या फायदा होगा यहाँ पे, या फिर इस लॉर्ड को जो है जल्दी से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक राहत की सांस जरूर मिलेगी इनको, क्योंकि अगर ये लॉर्ड जाता है टीम जैपलिंग के पास तो गेम एंड होने के चांसेस पूरे के पूरे 90% थे यहाँ पे। और उसी के साथ यहाँ पे बात किया जाए तो इनहेंस मिनियन आए जरूर थे, खत्म कर दिए जाएंगे तुरंत ही, कोई ज्यादा यहाँ पे प्रभाव पड़ा नहीं है। और लॉर्ड चुरा जरूर लिया लेकिन उसका जो है कोई फायदा हुआ नहीं वहां पे। और एक तरह से मैं कहूंगा थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जो शांति वो जरूर यहाँ पे बना ली गई है उनकी तरफ से, तो देखना पड़ेगा किस तरह से जो है इस बार को पारी यहाँ पे रहेगी। आइटमाइजेशन की बात करें तो मॉस्को का पूरा बिल्ड आता हुआ, और दूसरी तरफ यहाँ पे बात करें तो लूकास का भी पूरा बिल्ड आ चुका है। और इसी के साथ यहाँ पे विंटर क्राउन उन्होंने बना लिया है, लिलिया का भी जो है बिल्ड ऑलमोस्ट आ चुका है, हालांकि उन्होंने जो है विशन लांटर्न अभी बनाया नहीं है, लेकिन उसी के साथ यहाँ पे डैमेज देने का प्रयास आया, वो सबको फार्म नहीं करने दिया जाएगा और सीधा उनका जो ऑरेंज बफ चुराया जाएगा। और इसी के साथ दोबारा से लेन सिंक करने में लगेगी टीम जैपलिन, उनको थोड़ा और वेट करना है, उनको पता है कि अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में जो है काम खराब हो सकते हैं, पासा उल्टा पड़ सकता है। उसी के साथ यहाँ पे बाले का प्रयोग करके जाएंगे जरूर है और एजी मार के पकड़ा जरूर है यहाँ पे एक बंदा, लेकिन पीछे हटेंगे, टावर का बहुत ज्यादा डैमेज, लेकिन टावर को सीधा गायब कर दिया यहाँ पे। और इसी के साथ यहाँ पे एजी का प्रयोग करते हुए स्लो डालने का प्रयास जरूर रहेगा यहाँ पे, लेकिन पीछे से जो है मिनियंस आएंगे यहाँ पे बेस की तरफ से, बहुत ही हालत जो है यहाँ पे खराब होती हुई की नूबीज की, उनको जो है थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, अभी थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। लेकिन उसी के साथ यहाँ पे है ना कहाँ घूमती हुई जा रही है, उनको थोड़ा सा डैमेज देके लूकस करेंगे सीधा धाराशाही, और वो हो चुके हैं यहाँ पे धाराशाही। और इसी के साथ यहाँ पे कुछ देर में जो है लॉर्ड आएगा 1 मिनट के अंदर, और इस लॉर्ड के साथ जो है ये पारी यहाँ पे खत्म होती हुई दिख रही है मेरे को। जय भाई क्या लगता है अभी भी यहाँ पे कोई चांसेस रहेंगे यहाँ पे इनके कम करने के टीम नूबी के, या फिर यहाँ पे अब ये पारी जो है समाप्त होते हुए दिख रही है हमको? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर अभी जो लॉर्ड है फिर से हायाबुसा चुराते नहीं है लॉर्ड को, तो यहाँ पे बाजीगर जो है हार के भी जो है गेम जीत नहीं पाएंगे। बाजीगर इस बार जो है जीत के हारने वाले, हार के जीतने वालों को नहीं, हार के हारने वाले को बाजीगर हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो लुमिनस लॉर्ड आएंगे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भयानक होने के साथ ओजी का प्रोडक्ट टैरेट के अंदर पार्टेड है, कॉन्फिडेंट लेवल देखा हीरोज का जो यहाँ पे नोटिस पाथ यूज है, हायाबुसा ने अपना अल्टीमेट यूज किया है। इसी के साथ कहीं ना कहीं पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, एडवांटेज जो है टैरेट का वो मिलता हुआ यहाँ पे टीम नूबी को। और 30 सेकंड में जो लॉर्ड आएगा, जो मैं कह रहा था, वो लॉर्ड अगर मिल नहीं पाया टीम नीवी को तो कहीं ना कहीं दिक्कत बहुत ज्यादा आने वाला है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं संभाल के खेलना पड़ेगा, लेन क्लियर रखना पड़ेगा। लेन जो है हायाबुसा को जो जैसे अभी क्लीन कर रहे हैं, जो उनका माइक्रो गेम प्ले जो बहुत ही अच्छा है, वो अभी ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहे हैं, लेकिन इसी के ऑब्जेक्टिव के साथ जो खुद ऑब्जेक्टिव ना बन जाए यहाँ पे और डिलेट ना हो जाए, जिस तरीके से यहाँ पे जो उनको ज्ञान किया जा रहा है, किलिंग्स भी वैलेंटिना को मिल गया है। नीरज चोपड़ा जी हमारा जो है थोड़ा 104 में चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जो है कि भाई नया नया आउट तो भी सही, नहीं आउट तो भी सही, गेम तो हम जीतेंगे जीतेंगे, उस लेवल का कॉन्फिडेंस चल रहा है। तो शिंदा भाई यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गेम जो है अच्छा खासा जो है अभी उसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है हमें। अगर एक मौका मिलता है, चौका मारते 18 मिनट का लुमिनस लॉर्ड जो है हायाबुसा की टीम जो है यहाँ पे टीम नीबू को मिलता है, कहीं ना कहीं वो लोग वापसी कर सकते हैं। लॉर्ड एक तरफ से जाएंगे, उनका बहुत ज्यादा हेल्थ होगा, डैमेज ज्यादा होगा, जो है टीम यहाँ पे जैपलिन जो है लॉर्ड के पीछे जाएंगे तो उनको मौका मिलेगा मिड लेन और बॉट लेन की टर्रेट जो है उसको निकालने का। तो अच्छा खासा चलिए हमें एक एनालाइज का मौका मिला गया है इस गेम पॉज होने के साथ। तो ये देख ये बताइए कि कहाँ पे जो छोटा मोटा गलती लगा आपको शिंद्रा भाई की, जो जिस तरीके से अभी टीम नीबी जो डोमिनेट हो रहे, क्या रीजन लगता है आपको?
देखिए टीम का जो रीज़न था उनका जो है कहीं न कहीं उनको जो है दिक्कत थोड़ी-सी आई ज़रूर है। हायाबुसा पिक उन्होंने जो है पहले ही फर्स्ट पिक उठाया वहाँ पे, तो उसके साथ ही जो टीम ने जो है काफ़ी अच्छी तरह जो अपोज़िट टीम है वहाँ पे, उन्होंने जो है अच्छा खासा अपने आप को जो है एडजस्ट कर लिया। बात कर रही यहाँ पे कहीं न कहीं सिनर्जी की हमें थोड़ी-सी वो जो है ऑफ हमें देखने को मिली, जिसके कारण जो है टीम में जो फाइट है, वो मौका मिल नहीं पाया। जिस तरह का एक स्पाइक रहता है ना, वो उनको मिल नहीं पाया। एमएम को जो है वहाँ पे बार-बार जो है बुली किया गया वहाँ पे। उनके जो है लेन्स को बार-बार आके वहाँ पे कट कर रहे थे, उसके साथ-साथ जो है उनको वहाँ पे मौका ही नहीं दिया, तो उनका जो है स्पाई एक तरह से नहीं आ पाया। तो यहाँ पे कहीं न कहीं जो है एमएम मेलासा की जगह अगर कोई और एमएम उठा सकते थे, तो वो भी अच्छी बारी रहती। इरीथिल आप उठा सकते थे, इरीथिल काफ़ी अच्छा एमएम रहता है यहाँ पे, मोबिलिटी के साथ-साथ अच्छा खासा डैमेज देने के लिए भी पैदा रहता। और अगर बात करें तो ये एक्सपी लेन की तो रूबी ज़्यादा आई नहीं, पूरे टीम फाइट्स पे हमें देखने को मिला। जो है पूरा जितना भी गेम गया है 18-17 मिनट, तो पूरे उस गेम में हमने जो है रूबी का इतना समर्थन देखा नई टीम्स में आते हुए। तो कहीं न कहीं वो जो कुछ पॉइंट्स थे हैं, तो इसी के कारण जो है टीम थोड़ा अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाई। टीम ज़ैपलिन भी कम नहीं है, उन्होंने जो है मौका नहीं दिया एक्चुअली जो है उनको वापसी करने का। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बुरा खेला, लेकिन जो है चीज़ें आपके हक में नहीं जाती है हर बारी। जो चीज़ें हैं थोड़ी अलग हो जाती है, कई बार जो है मिसकम्युनिकेशंस हो जाते हैं, तो वो कहीं न कहीं रहता है। उसी के साथ यहाँ पे जो अभी पॉज़ ज़रूर किया गया है टीम्स के द्वारा, और उसी के साथ जो पीछे टेक्निकल इश्यू हो रहा था देखने को, जो लैग वगैरह हो रहे थे, वो ज़रूर फिक्स किया जाएगा। और जैसे ही वो फिक्स होता है यहाँ पे गेम में ज़रूर वापसी होगी हमारी इसी के साथ। और शायद से जो है यहाँ पे वापसी होते हुए हमें ज़रूर दिखेगी जय भाई। और हम आते हैं सीधा मैच की तरफ, और उसी के साथ यहाँ पे 18 मिनट होंगे। ल्यूमिनस लॉर्ड यहाँ पे लिया जाएगा, हो जाएंगे सीधा लॉर्ड की तरफ, और उनकी जो है आराधना यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है, और उनको जो है खुश किया जा रहा है। बालों की बरसात होती हुई यहाँ पे उनको जो है ताराशाही किया जाएगा। और इस लॉर्ड के साथ जब आशीर्वाद, जी हाँ बिल्कुल आशीर्वाद मिला है उनको, और इस आशीर्वाद के साथ गेम एंड करने का प्रयास करेंगे टीम ज़ैपलिन। और काफी अच्छा खासा गेम प्ले हमें देखने को मिल रहा है। कटोगा जो है यहाँ से बॉटम का लेन जो है क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ये लॉर्ड के साथ ये जो लेन है सिंग करने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि इस लॉर्ड के साथ जो है यह पारी खत्म होने के लिए रहेगी। 2 इनिबिटेड टेरर जो है ऑलरेडी गायब है। तीसरे की बात करें तो उसका भी एचपी ज्यादा नहीं है, वो इस जो है यहाँ पे इनहैंस मिनियन के साथ आएंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही मुश्किल रहेगा, क्योंकि इनके पास ज्यादा लेन क्लियरिंग एबिलिटी नहीं है यहाँ पे देखने के लिए। मौका जरूर रहेगा एक, लेकिन देखना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ पे डिफेंड करने का प्रयास रहेंगे। उसके साथ यहाँ पे 5 वे का जो यहाँ पे यूज किया गया है उनको स्लो मारने का, लेकिन यूजी का प्रयास करने का अच्छा खासा कोशिश, लेकिन नहीं पकड़े जाएंगे एक भी बंदे। टन जरूर दिया यहाँ पे, डैमेज देंगे पीछे से जो है रूबी एक एचपी में निकलेंगे जरूर, लेकिन लॉर्ड जो है वो आ चुके हैं बेस की तरफ। डैमेज देने का प्रयास, एचपी एकदम से गायब होगी, सीधा गायब हुई है। और इसी के साथ टीम ज़ैपलिन जो है अपनी जो विक्ट्री का परचम है वो लहराएंगे। इसके साथ वो जीत चुकी है यह मैच। क्या ही बेहतरीन पारी यहाँ में देखने को मिली है, क्या ही बेहतरीन पारी यहाँ पे चली है। क्या कहना चाहेंगे जय भाई? जी नहीं, बस इसी का इतना कहना चाहूंगा, दोनों टीम ने अच्छा खासा हीरो पिक किया। कहीं ना कहीं ज़ैपलिन का एक्सपीरियंस, ज़ैपलिन का जो हीरो पिक था वो कहीं ना कहीं डोमिनेट गेम किया। वो लोगों ने अच्छा खासा टीम सिनर्जी के साथ खेला। मेलिसा यहाँ पे अच्छा खासा गेम दी, टक्कर दे सकती थी, उनको मौका नहीं दिया गया चौका मारने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कत है थोड़ा बहुत मेलिसा की तरफ से भी देखने को मिला। वो जो 0 किल पे थे, 0-2-2 पे थे, उसके बाद उनका फिर से मौत हुआ तो 0-3-3 पे आ गए थे वो सपोर्ट की वजह से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है गेम प्ले ज़ैपलिन का जो एक्सपीरियंस है वो हमने पहले भी देखे थे 1-2 मैचेस पे, तो वो जो यहाँ पे देखने को मिला। टीम ने भी अच्छा खेला, अच्छा जो फाइट 18 मिनट तक लेके गए, तो कहीं ना कहीं बढ़िया टक्कर दिया। ये टीम को आगे भी मौका मिलता है ऐसे टूर्नामेंट में, मैचेस पर वो लोग खुद से प्रैक्टिस करते, तो कहीं ना कहीं ये टीम जो है आगे जाने की बहुत ज्यादा क्षमता रखेंगे। जी हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ जो यहाँ पे मैच है ये जीतती हुई ज़ैपलिन जाए ये अगले राउंड में। और कई मजा आइए दर्शकों, हम मिलेंगे आपसे एक नए राउंड में बहुत ही जल्द। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मैं हूँ आपका कास्ट शिनरा, मेरे साथ कास्ट कर रहे थे जय। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Like fairy tales? Who deserves to live happily ever after? 5 strong, we ride side by side, locked and loaded, no place to hide. From jungle deep to the final lane, we bring the storm, we bring the flame. We hear the call, the time is now. Push through the clash, we won't back down. Every skill shot, every stride, we fight as one, unified.
We're legends, collide, the fire ignites. We light up the map like stars in the night. With every move, we shift the tide. This is our yard, our battle cry. In the heart of the fight, we rise, we thrive. No fear, no doubt, we're born to survive. Together we stand, no need to hide, cause this is the moment when legends collide. Towers fall, but we're not done. The base is shaking, here we come. A dance of death and pixel light. One last push, one final fight. Mids under pressure, box holding strong. Top lanes on your zone, we carry on. Ults online, shadows crawl. Call the gank, we'll take them all. Echo and chant, legends, rise up. Legends, strike hard. Legends, never fall. We own this battleground. When legends collide, the fire ignites. No turning back, we burn through the nights. Unleash your power, let it round. This is our world, electrified. We conquered the map with skill and pride. It's the final blow, no need to hide. We came for glory, side by side. This is the moment when legends collide. Like fairy tales? Who deserves to live happily ever after? Five strong, we ride side by side, locked and loaded, no place to hide. From jungle deep to the final lane, we bring the storm, we bring the flame. We hear the call, the time is now. Push through the clash, we won't back down. Every skill shot, every stride, we fight as one, unified. We're legends, collide, the fire ignites. We light up the map like stars in the night. With every move, we shift the tide. This is our yard, our battle cry. In the heart of the fight, we rise, we thrive. No fear, no doubt, we're born to survive. Together we stand, no need to hide, cause this is the moment when legends collide. Towers fall, but we're not done. The base is shaking, here we come. A dance of death and pixel light. One last push, one final fight. Mids under pressure, box holding strong. Top lanes on your zone, we carry on. Ults online, shadows crawl. Call the gank, we'll take them all. Echo and chant, legends, rise up. Legends, strike hard. Legends, never fall. We own this battleground. When legends collide, the fire ignites. No turning back, we burn through the nights. Unleash your power, let it round. This is our world, electrified. We conquered the map with skill and pride. It's the final blow, no need to hide. We came for glory, side by side. This is the moment when legends collide. Like fairy tales? Who deserves to live happily ever after? Five strong, we ride side by side, locked and loaded, no place to hide. From jungle deep to the final lane, we bring the storm, we bring the flame. We hear the call, the time is now. Push through the clash, we won't back down. Every skill shot, every stride, we fight as one, unified. We're legends, collide, the fire ignites. We light up the map like stars in the night. With every move, we shift the tide. This is our yard, our battle cry. In the heart of the fight, we rise, we thrive. No fear, no doubt, we're born to survive. Together we stand, no need to hide, cause this is the moment when legends collide. Towers fall, but we're not done. The base is shaking, here we come. A dance of death and pixel light. One last push, one final fight. Mids under pressure,
box holding strong. Top lanes on your zone, we carry on. Ults online, shadows crawl. Call the game, we'll take 'em all. Echo and chant, legends. Rise up, legends. Strike hard, legends. Never fall. We own this battleground. When legends collide, the fire ignites. No turning back, we burn through the night. Unleash your power, let it round. This is our world, electrified. We conquered the map with skill and pride. Just a final blow, no need to hide. We came for glory, side by side. This is the moment when legends collide. Like fairy tales? Who deserves to live happily ever after? 5 strong, we ride side by side, locked and loaded, no place to hide. From jungle deep to the final lane, we bring the storm, we bring the flame. We hear the call, the time is now. Push through the clash, we won't back down. Every skill shot, every stride, we fight as one, unified. When legends collide, the fire ignites. We light up the map like stars in the night. With every move, we shift the tide. This is our yard, our battle cry. In the heart of the fight, we rise, we thrive. No fear, no doubt, we're born to survive. Together we stand, no need to hide. Cause this is the moment when legends collide. Towers fall, but we're not done. The base is shaking, here we come. A dance of death and pixel light. One last push, one final fight. Mids under pressure, box holding strong. Top lanes on your zone, we carry on. Ults online, shadows crawl. Call the game, we'll take 'em all. Echo and chant, legends. Rise up, legends. Strike hard, legends. Never fall. We own this battleground. When legends collide, the fire ignites. No turning back, we burn through the night. Unleash your power, let it round. This is our world, electrified. We conquered the map with skill and pride. Just a final blow, no need to hide. We came for glory, side by side. This is the moment when legends collide. Like fairy tales? Who deserves to live happily ever after? 5 strong, we ride side by side, locked and loaded, no place to hide. From jungle deep to the final lane, we bring the storm, we bring the flame. We hear the call, the time is now. Push through the clash, we won't back down. Every skill shot, every stride, we fight as one, unified. When legends collide, the fire ignites. We light up the map like stars in the night. With every move, we shift the tide. This is our yard, our battle cry. In the heart of the fight, we rise, we thrive. No fear, no doubt, we're born to survive. Together we stand, no need to hide. Cause this is the moment when legends collide. Towers fall, but we're not done. The base is shaking, here we come. A dance of death and pixel light. One last push, one final fight. Mids under pressure, box holding strong. Top lanes on your zone, we carry on. Ults online, shadows crawl. Call the game, we'll take 'em all. Echo and chant, legends. Rise up, legends. Strike hard, legends. Never fall. We own this battleground. When legends collide, the fire ignites. No turning back, we burn through the night. Unleash your power, let it round. This is our world, electrified. We conquered the map
with skill and pride. Just a final blow, no need to hide. We came for glory, side by side. This is the moment when legends collide. Like fairy tales? Who deserves to live happily ever after? Five strong, we ride side by side, locked and loaded, no place to hide. नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका यहाँ पे एक और नए मैच के साथ। आ चुके हैं हम दोबारा। मैं हूं आपका चैता शिनरा, मेरे साथ हैं आप सबके प्यारे एमएल के बाबा, जिनको हम बुलाते हैं जय भाई, क्योंकि इनकी दृष्टि काफी अच्छी रहती है, प्रिडिक्शन के मामले में काफी अच्छे रहते हैं हमारे जय भाई। तो जानेंगे उनसे इस मैच के बारे में। ये दो टीम है आपस में लड़ेगी आज। एक तरफ रहेगी यहाँ पे डॉन स्पोर्ट्स और दूसरी तरफ वहां पे जो है हमें देखने को मिलेगी सेवन सिंस। और उसी के साथ जानेंगे जय भाई से यहाँ पे कि इस बार जो है ड्राफ्टिंग फेज किस तरह से जाता हुआ दिखेगा। तो जय भाई। जी बिल्कुल, ड्राफ्टिंग फेज तो उसी The तरह immortal जाएगा one जिस तरह जो shows me प्लेयर to है बहुत vanquish the चाहते हैं कि shadows पहला and बैन plague जो हमें this सुयू को world. देखने को मिल गया है। सुयू बैन तो देखने को मिलता है पहला पहला, लेकिन फैनी प्रायोरिटाइज ज्यादा किया जाता है, तो फैनी यहाँ पे आएंगे धीरे धीरे बैन लिस्ट में। अपना जो केबल है इधर उधर करने का जो मौका है वो देखने को मिलेगा नहीं, तो जॉय जो है वो बैन हो सकती है। दोनों टीम जो काफी अच्छे टीम लग रहे हैं मुझे, क्योंकि सुयू जो अगर फर्स्ट बैन होता है तो उनको टीम गेम नॉलेज जो बहुत ही अच्छा कर सकता है। जो लुकास जो है भैया हमारे नारुतो हमारे उनको भी बैन कर दिया गया शिंदा भाई। जी हाँ बिल्कुल। जो है यहाँ पे हमारे नारुतो के दो हीरोज को Time to डायरेक्टली drop बैन the करते हुए, beat of the flag. और उसी के साथ हमारी जो आई है जॉय असैसिन, इनको जो है बैन कर दिया गया है। इनको बैन करना जय भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अभी जो है अच्छा खासा जो मेटा पे चल रही है, और अपने जो डैश है जो इलेक्ट्रिक बीट्स के साथ जो है अल्ट मारती है और डैमेज प्रोवाइड करती है, बैक लेन पूरा खा जाती है। तो इनको जो है बैन करना और इस बैटलफील्ड से निकालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता Sir, है। what's your command? Your team is banning. जी बिल्कुल, ऐसे जो फैनी का बात कर रहे हैं तो फैनी यहाँ पे बैन हो चुका है। तो फैनी बैन जो है वो तो कॉमन हो चुका है। इसका जो अभी यहाँ पे हैरिथ बाकी है, रुशिन बाकी है, Frontier's सिसिलियन been बाकी itching है, for कितने a हीरोज का real नाम बोलूं, fight. कैलिया जो है उनको भी बैन कर दिया गया है। तो भैया ये मैच जो हम लोग अच्छा एक मैच का उम्मीद कर सकते हैं। बैन देख के आपको Let's पता make the चलता है जो whole बैन के बाद world टीम है या your कैसे team is चलेगा। picking. तो यहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा जो मैच है हमें देखने को मिलेगा। जो अभी ओपन है यहाँ पे बहुत सारे हीरोज ओपन है। यहाँ पे जो है हैरिस पिक कर सकते हैं गोल्डन डोमिनेट करने के लिए, यहाँ पे जूशिन पिक कर सकते हैं, सिसिलियन पिक कर सकते हैं। बहुत सारे हीरोज को जो यहाँ पे ओपन जो है अभी रखा गया है मेटा हीरोज, तो वो पिक देखने को मिलेगा हमें। जी हम बिल्कुल, और इसी के साथ जाएंगे जरूर, पहला पिक उठाएंगे जरूर यहाँ पे टीम डॉन स्पोर्ट्स। यहाँ पे लॉक इन किया गया है सिसिलियन को, क्योंकि लेट गेम इंश्योरेंस हीरो ये रहते हैं, लेट Always on गेम the में जो है way. डैमेज प्रोवाइड करते हैं अपनी टीम के लिए और अच्छा खासा जो है गेम बना जरूर देते हैं। लेकिन शर्त ये रहती है कि आप तक जो है लेट गेम तक गेम जो है ले जाना पड़ता है, वो खींचना पड़ता है गेम, वरना अर्ली गेम में इतना अच्छा खासा कुछ डैमेज आता नहीं है सिसिलियन का। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उठाया गया है यहाँ पे मटिल्डा को, और जैसे कि हमें पता है कि सर्जिंग ईगल से जिस तरह से जाती है उड़ते हुए उड़न खटोला, अपने टीममेट्स को साथ में उड़ा के ले जाएंगी और अपने टीम के लिए जो है यहाँ पे अच्छा खासा जो है एक तरीके से मोबिलिटी प्रदान करती हैं ये इन एंड आउट के लिए। तो काफी अच्छा हीरो यहाँ पे उठाया गया है, उनको जो है वो लॉक इन कर लिया गया है इस साइड पे। दूसरा हीरो उठाना चाहते हैं, टीम के साथ विमर्श करेंगे और कुछ ही सेकंड में हमें दिखेगा दूसरा हीरो। दूसरा किया गया है दूसरा हीरो, और हायाबुसा आज जरूर गए हैं इनके ऊपर। अभी जो है नर्व जरूर आया है, पहले जो है यहाँ पे अल्ट मार के जो है सीधा बैकलेन को जो है खत्म कर देते थे, लेकिन परंतु अब मार्क लगाने पे ही ज्यादा डैमेज आएगा उससे जो है, परंतु सिर्फ अल्ट से जो है बैकलेन नहीं मरने वाले। लेकिन सीधा दूसरी साइड देखा जाएगा तो ब्रॉडी को उठाया गया है, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं ब्रॉडी, हालांकि अच्छा खासा बफ मिला जरूर है इनको, लेकिन अभी भी जो है मेटा पे दिखने में काफी कम मिलते हैं। लेकिन अच्छा एमएम है, रेंज काफी अच्छी रहती है इनके साथ, और इनका जो एक तरह से मैं कहूंगा टावर डैमेज मेल्टिंग कैपेबिलिटी है वो काफी अच्छी रहती है इनके। टावर को जो है बटर की तरह मक्खन की तरह एकदम पिघला देते हैं ब्रॉडी, तो अच्छा खासा यहाँ पे रहेगा। उसी के साथ यहाँ पे देखना मिलेगा हमें दूसरा पिक होता हुआ, और कहूँ वैसे तो तीसरा पिक मीनोटॉर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। जनरली हमें देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे जय भाई मीनोटॉर, यहाँ पे इस बार इस टूर्नामेंट में हमें देखने को मिल रहा है। क्या लगता है यहाँ पे मीनोटॉर की अगली कुछ और उठा सकते थे यहाँ पे, हायलॉस इनके पास ओपन था, अच्छे अच्छे यहाँ पे जो है ऑप्शन इनके पास अवेलेबल थे, लेकिन ये लोग गए मीनोटॉर के साथ है। कुछ कहना चाहेंगे जय भाई?
जी बिल्कुल, शायद मिनाटोर जो है हमें बहुत ही कम और कम Your देखने को team मिलता है, तो is मुझे ऐसा banning. लगता है कि मिनाटोर जो है उनका कम्फर्ट पिक हो सकता है, उनका वन ट्रिक हीरो पिक हो सकता है। वो चाहते हैं कि यहाँ पे सीसी जो है, सीसी अच्छे से दिया जाए। मिनाटोर का अल्टी का जो अच्छा खासा सीसी आता है, सेकंड स्किल का जो जंपिंग करके और वो जो नॉकअप करते हैं, बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मिनाटोर पिक शायद कुछ ना कुछ कभी Magic is हमें जो अच्छा not गेम प्ले दिखाने की alive. कोशिश Your करेंगे, तो हम लोग team जो है is नए गेम की banning. तलाश में रहते हैं हमेशा। तो क्या पता मिनाटोर जो है यहाँ पे जो है आपको कूदते कूदते जो है एनिमी को जो यहाँ पे कुदवा दे। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, जो यहाँ पे डॉन टीम है, डॉन मतलब होता है जो है अंधेरा, शाम की टाइम। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, जो डॉन है वो डॉन लेके आते हैं डेडली सेवन, जो यहाँ पे सेवन सीन्स है उनकी तरफ से। यार सेवन सीन्स जो है सात पापी वो मिलके जो डॉन को यहाँ पे अंधेरे की तरफ ढकल देते हैं। ये मैच जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है शिंदा भाई। All who dare stand in my way Your will be team is devoured. banning. और इसी के साथ जो हैंजो भाई है, हमारे Shut हैंजो और बादाम down. को यहाँ पे बैन कर दिया गया है। तो अच्छा खासा जो बैन है यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। जो मैं बोल रहा था, टीम का प्रदर्शन भी अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे कहना चाहूंगा माटिल्डा पिक हुआ है, तो यहाँ पे जो नॉन डैश हीरो है उनको पिक करते तो बढ़िया रहता, क्योंकि हायाबुसा के पास खुद का डैश है। यहाँ पे माटिल्डा जो डैश यूज कर सकता है अपना सेकंड स्किल के साथ। मॉस्कोप जो है उनका पास भी छोटा डैश है, तो डैश हीरो के साथ माटिल्डा जो लेना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा जो है दिक्कत दे सकता है यहाँ पे शिंदा भाई। जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है यहाँ पे। और देखा जाए, देखिए ना यहाँ पे काफी अच्छा खासा यहाँ पे टीम बनता हुआ मेरे को दिख रहा है। ऑलरेडी वैलेंटीना इन्होंने उठा लिया है, और उसी के साथ यहाँ पे रिथिल के ऊपर लॉक ऑन जरूर किया है। यहाँ पे अभी हवर कर रहे हैं, लॉक इन करने का भी चांस रहेगा। उठाते हैं तो काफी अच्छा हम यहाँ पे रहेगा। काफी अच्छी खासा जो है मोबिलिटी वगैरह भी रहती है रिथिल के पास। Your जी हाँ, team बिल्कुल is लॉक इन किया जाएगा यहाँ पे। काफी अच्छा यहाँ पे पिक हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ मैं बात करूंगा यहाँ पे लास्ट के दो पिक की, जो देखना चाहेंगे किस तरह का हमें जंगलर उठाना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ शायद मिनोटॉर एक्सपी जाने वाले हैं, ये पहले कभी देखा नहीं है इतना यहाँ पे। और एक्सपी मिनोटॉर यहाँ देखने को मिल सकता है हमको। जय भाई, क्या लग रहा है यहाँ पे? क्या यहाँ पे ये बहुत बड़ा गैम्बल खेला जा रहा है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे एक्सपी लेन पे आप मिनोटॉर को भेज रहे हैं, तो अच्छा भी हो सकता है आपके लिए, बुरा भी हो सकता है, लेकिन रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा यहाँ पे जय भाई। I am जी बिल्कुल, more क्योंकि यहाँ than पे a जो हीरो weapon. स्पीक किया जा रहा है The उस पीक के sand ऊपर अगर हम rises लोग when I ध्यान give the डालते हैं, Your word. तो team कुफरा is तो अच्छा picking. बनता था पिक, लेकिन उन्होंने मिना तो लिया है, तो उनके पास ऑप्शन बचेगा नहीं। कुफरा डैश जो है काउंटर करते हैं अच्छा खासा उनका बाउंसिंग बॉल से जो है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो लोग कुफरा जो थोड़ा वेट करके ले सकते थे, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। और इसी के साथ मैं अभी भी कहना चाहूंगा माटिल्डा पिक अच्छा है, वो डोमिनेट कर सकते हैं गेम, लेकिन जितने भी हीरो लिए गए उनके पास खुद का डैश है, मोबिलिटी है अपने अपना। तो वहां पे माटिल्डा का उतना कुछ जो है होता है ना, माटिल्डा खुद को उड़ा के टीम के साथ ले जाती है और टीम के पीछे ले जाती है। वो जो है वो स्किल कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक कर जाएगा मोबिलिटी की। माटिल्डा जब भी ले जाता है, अल्फा हो गया, फिर आपका कोई I'm और not दूसरे the हीरोज only जो होते one हैं, bound सिसिलियन हो by गए, these उनके साथ chains. अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उनको डैश मिलता है, उन लोगों का हीरोज का डैमेज ज्यादा होता है, और डैश की वजह से जो है अच्छा खासा टीम फाइट देखने को मिलता है। इस कहते हैं जूलियन जो है जंगल पे जाएंगे, यहाँ पे खेल दिया गया अच्छा खासा अर्ली गेम इनिशिएट करेंगे, लेकिन आप भूलिए मत अबे फोबियस जो लिया गया भाई, फोबियस जो आजकल डैमेज दे रहे और सस्टेन कर रहे हैं, जिस तरीके से इनिशिएट करते हैं भैया, क्या ही बोलूं। तो अबे फोबियस जो है कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत देने वाली है यहाँ पे। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए डैश जो है बार बार मारी जाएगी, और डैश का जो है फायदा फोबियस यहाँ पे उठाएंगे जरूर। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे टीम देखने को मिल रहा है हमें डाउन स्पोर्ट्स की तरफ से भी। लेकिन दूसरी तरफ से अगर मैं बात करूं सेवन सीन्स की तरफ से, तो वहां पे भी जो है अच्छा खासा एक जो है टीम कंपोजिशन दिख रहा है, और उनके पास अच्छा खासा चांसेस भी रहेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यहाँ पे टीम जो है डाउन स्पोर्ट्स के लिए कमबैक करने का। यहाँ पे देखना पड़ेगा किस प्रकार ये खेलते हैं। खलीद पिक जो हुआ है वहां कहीं ना कहीं मेरे को लगता है खलीद के Tomorrow अलावा कुछ और पिक Legends. किया जा सकता था, क्योंकि खलीद देखिए अभी इतना चल नहीं रहा है मैटर पे। लेकिन फिलहाल जो है अभी 5 उठाया seconds जरूर till गया, the enemy जो है reaches the हो सकता है कि battlefield. हमें जो है यहाँ पे कुछ Snatch them. अलग देखने को मिले। उसी के साथ यहाँ पे जो आगमन होता हुआ हीरोज का आएंगे सीधा लैंड ऑफ डॉन की तरफ, और इसी लैंड ऑफ डॉन में जाएंगे अपने अपनी खेती बाड़ी की तरफ, और यहाँ से खेती बाड़ी की परंपरा स्टार्ट होती हुई। जय भाई। जी बिल्कुल, खेती बाड़ी तो शुरू हो गया, लेकिन दोनों टीम जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वो दोनों टीम की तरफ है। माटिल्डा अगर अच्छा खेलती है, सपोर्ट करती है, तो जीतेंगे, या तो अगर सपोर्ट में इतना कुछ काम आए नहीं तो यहाँ पे हारने की संभावना है। इसके बाद मिनातोर देखने को मिलता है, क्या पता मिनातोर जो है कुछ जादू दिखाए और डॉन को जो यहाँ पे डाउन होने बिल्कुल ही ना दे। इसका जो टीम पे यहाँ पे जो बफ पे जो है थोड़ा बहुत टोकबाजी शुरू हो चुका है। बफ का जो एडवांटेज यहाँ पे लिया जा रहा है, जूलियन जो है अच्छा खासा फार्म करके लेवल 3 होंगे तो उनका डैमेज आएगा, तो बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। इसी के साथ यहाँ पे जो है डॉन का जो टीम गेम प्ले से बाफ स्टील किया जा रहा है, कॉन्फिडेंट लेवल है, ये देख कर तो लग रहा है कि जो टक्कर है इस बार अच्छा खासा देने वाले हैं सेवन सिंस को।
मौका जरूर बनाना चाहते हैं वो, और उसके साथ यहाँ पे अभी कोई गलती नहीं की जाएगी। और अच्छा खासा जो है बफ वो चुरा भी लिया है, तो अच्छा खासा एडवांटेज अभी अर्ली गेम एडवांटेज आ चुका है। जूलियन का लेवल 3 में यहाँ पे हमें देखा कि अच्छा खासा जो है यहाँ पे एडवांटेज उनको आ जा जाता है। और उसी के साथ यहाँ पे कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन एनिमी के द्वारा यहाँ पे कंसीड डिफीट मारा जा रहा है। ना जाने क्यों, शायद जो है कुछ इशू जरूर आया होगा, परंतु यहाँ पे सीधा पॉज न करके सीधा यहाँ पे कंसील डिफीट मारा गया है जय भाई। जी बिल्कुल, शायद कुछ ना कुछ जो है टीम पीक में या किसी चीज में शायद या नेटवर्क की पिंग की वजह से जो है सर्वर में कभी कभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर डिले मिलता है, तो उसकी वजह से जो अर्ली गेम पे ही वो लोग जो रेफरी को बताया था उसकी वजह से जो मैच है दोबारा खिलाया जाता है, या जो भी डिसीजन ऑर्गेनाइजर का होता है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ नया बात नहीं है, दर्शकों साथ ही बने रहिए। मैच जो है शायद फिर से दोबारा जो जल्दी से शुरू होने की यहाँ पे हमें संभावना देखने को मिल सकता है। जी हाँ बिल्कुल, अभी जो है बैक एंड पे पता लगेगा हमें कुछ ही देर में कि क्या स्थिति हुई है, यहाँ पे क्या डिसीजन हुआ जाएगा। क्योंकि हमको भी पता है कि यहाँ पे जो है बताया जरूर जाता है टीम के द्वारा, अगर कुछ भी दिक्कत आता है तो वहां पे जो है मैच जो है सीधा पॉज किया जाता है, टेक्निकल इश्यू को फिक्स किया जाता है यहाँ पे। और उसी के साथ जो अभी दिक्कत हुई है यहाँ पे देखने को पता लगेगा अभी कि एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे, जो उन्होंने जो है यहाँ पे सीधा कंसीड डिफीट मारा है। जी बिल्कुल, रिपोर्ट दिस वैन ग्लोरी। कुछ तो हमें मैसेज जो है तू करके देखने को मिल रहा है शिंद्रा भाई, तो हम लोग जो है बस करेंगे इंतजार। और कहना चाहेंगे लास्ट पिक जो है काफी यूनिक रहा, काफी अच्छा रहा, और जिस तरीके से डोमिनेट किया है यहाँ पे जूलियन लोगों ने अर्ली गेम, तो शायद कुछ ना कुछ जो मैच यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये लगता है कि अब जो गेम शुरू होगा उसमें थोड़ा सा जो यहाँ पे सतर्क रहेंगे ये जो है टीम सीन्स ऑफ 7, और कोशिश करेंगे कि जो बफ का एडवांटेज मिला था वो दिया ना जाए। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज जो अभी स्टार्ट होने के बाद थोड़ा बहुत जो है मैच कैसे शुरू हुआ था वो पता होने की नॉलेज की वजह से कहीं ना कहीं वो लोग रेड बफ की तरफ भी पहले जगह ले सकते हैं। रेड बफ पे जो निगाह टिका कर रखेंगे कि कोई जूलियन आए तो हम लोग जो उनको लाश यहाँ पे बिछाते हैं उनको फिर से बेस की तरफ वापस भेज दे। तो यहाँ पे एक जो घमासान जी फाइट होगा सेम हीरो के साथ शायद होने वाला है। अगर होता है तो यहाँ पे देखने को मिलेगा शिंद्रा भाई। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अभी जो है बैक एंड पे जो है टेक्निकल इशू को फिक्स किया जा रहा है, यहाँ पे जो है रीड्राफ्ट जरूर होगा, लेकिन जो है ड्राफ्ट वगैरह जो है सेम जरूर होंगे। रीमैच होगा, दरअसल ड्राफ्ट नहीं होने वाला है, ड्राफ्ट और पिक्स जो है वो सेम रहेंगे यहाँ पे। और उसी के साथ हम कुछ ही देर में जाएंगे मैच में, तब तक दर्शकों से कहना चाहूंगा कहीं मत जाइए दर्शकों, लोग आप लोग रेडी रहिए, क्योंकि अभी जो है ये मैच स्टार्ट होने वाला है, और इस मैच के साथ जो है बहुत ज्यादा रोमांच जो है वो भी स्टार्ट होने वाला है। फटाफट से यहाँ पे जाएंगे पिक और बैन की तरफ, और उसी के साथ वो जब जाएंगे वहां पे पिक एंड बैन वहां पे किया जाएगा सबसे पहले, फटाफट से जो है सेम और पिक बैन रहेंगे जय भाई यहाँ पे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा The जाएंगे मैच immortal की one तरफ chose और me बैन to बेस की Your तरफ। vanquish the team is shadows that banning. plague this world. तो बिल्कुल, और बैन जो है वही के वही रहना चाहे होगा, और पीक जो है वही के वही रहेंगे। बस एडवांटेज का बात करें तो दोनों टीम को थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा। फिर से सोचेंगे फिर से Let's fight जो to कि our किस heart's तरीके से जो content. है Your अप्रोच team करना is चाहिए, किस तरीके banning. से जो गेम को जो है खींचना चाहिए वो Time to सोचेंगे। और drop the बैन जल्दी से D at जल्दी the खत्म front. होता हो क्योंकि Team उन्हें is पता है क्या banning. बैन करना है, क्या पिक करना है। तो इस बैन और पिक के बारे में एक्स्ट्रा कुछ Let's बोलने के लिए है make the नहीं, बस हम whole लोग तो जो है यहाँ world पे see दर्शकों और हम लोग बस everything. बेसब्री से इंतजार करेंगे फिर से लैंड ऑफ Team's been डॉन itching पे for a जाके real जो Your है fight. team फाइट जो is शूट देखने को banning. मिल रहा था अर्ली गेम पे वो जो है शुरुआत जल्दी से जल्दी हो जाए। No one can escape my iron fist. Your जी हाँ team is बिल्कुल, ये banning. जो है फटाफट से बैन किया जाएगा टीम्स को, और जो है सेम बैन्स जैसे कि मैं दोहरा रहा था यहाँ पे, वो The फटाफट sun करके जो है rises पिक when I वगैरह give भी the किया Your जाएगा word. team is बिना picking. कोई दिक्कत के साथ यहाँ पे। और उसी के साथ Hands फर्स्ट up. पिक यहाँ पे देखेंगे क्या Sanjo. उठाते हैं। दोबारा से जो है हीरो सारे Power's on the उठाते हुए way. आया भूसा यहाँ पे Your उठाया team is है picking. मटिल्डा, दोबारा से सेम I पिक फटाफट किया am जाएगा बिना war. कोई You टाइम said वेस्ट किए, proof क्योंकि when अभी I was टाइम नहीं still बचा है Your जय team alive. is भाई, picking. टाइम निकल चुका है। और उसी के साथ Let's go. टाइम के साथ साथ जो है ये पारी Your भी निकल team चुकी is है, क्योंकि banning. फटाफट से ये गेम जो है स्टार्ट होगा, वो जो है Who रोमांचक said स्थिति parrying दोबारा से sword बनी cuts in रहेगी। इस Your बार life? देखते हैं team कि यहाँ पे क्या literally दिक्कत होगा, invented क्या ही one. इशू होगा। और जो यहाँ पे वो जो है फिक्स हो चुका है अभी बैकएंड में। तब तक दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है Magic रेडी is रहिए, my नीचे प्रिडिक्शन life. डालते Your रहिए कि team कौन सी is टीम यहाँ पे banning. जीतने वाली है, क्या लगता है आपको कौन सी टीम यहाँ पे जो है बाजी मारेगी। तो कहीं ना कहीं वो है देखने वाली बात होगी। कमेंट सेक्शन पे आप लोग जो है अपनी टीम को जो है अपनी टीमों का जो उत्साह है वो बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए जय भाई से जानेंगे यहाँ पे कि जिस तरह की पारी जा रही थी यहाँ पे क्या दोबारा से हमें इस बार को अर्ली गेम पे अपने जो जूलियन भाई है उनका
जो है यहाँ पे हमें एग्रेशन या फिर जो है जिस तरह का एग्रेशन गेम प्ले था वो देखने को मिलेगा, या फिर इस बार जो है थोड़ा पीछे हट के खेलना चाहेंगे? Experience the euphony of Your team जी suffering. बिल्कुल, यहाँ पे एग्रेशन जो है, एग्रेशन थोड़ा पीछे करना ही मैं सही समझूंगा, क्योंकि जो टीम सेवन सीन्स ऑफ सेवन को पता चल गया था कि उनका बाप जो है वहां से जो गायब कर दिया गया था जो जूलियन के द्वारा अपनी टीम के द्वारा, तो बाप पे निगाह बना कर रखेंगे। जूलियन कॉन्फिडेंट है तो जा सकते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है तो मैं बोलूंगा सेफ खेले, क्योंकि सेफ खेलेंगे तो ही फार्म मिलेगा तो आप जो है गेम जीतोगे। आपका ऑब्जेक्टिव जो है गेम जीतने की होना चाहिए, ना कि जो है यहाँ पे फाइट लो, क्योंकि किल से I'm आपको not विनिंग the नहीं only मिलेगा, किल one से आपको bound है by कि these देखने को मिलेगा, हम लोग chains. कमेंट करेंगे कितना सारा किल मिलेगा, लेकिन इस गेम में जीत जो हासिल होगा वही टीम आगे की तरफ जाता है शिंडा भाई। जी हाँ, बिल्कुल वही टीम जो है आगे की तरफ जाएगा, और देखेंगे इस बार की पारी यहाँ पे किसकी तरफ जाते हुए हमें दिखेगी। दोनों टीम यहाँ पे रेडी हो चुकी है, कुछ देर में हम लोग भी जाएंगे जो है भाई सीधा यहाँ से जो है अपने जो लैंड ऑफ डॉन में वहां पे जाएंगे, और वहां से जो है ये जो स्थिति यहाँ पे आए देखने को मिलेगी हमें किस प्रकार के ये लोग खेलेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे काफी अच्छा गेम प्ले हमें देखने को मिला था स्टार्टिंग में, परंतु जो स्थिति वहां पे आई इस बार की यहाँ पे क्या डिफरेंस स्थिति रहेगी, यहाँ पे इस बार की रणनीतियां क्या रहेगी देखने वाली बात होगी। दोनों ही टीम जो है काफी अच्छा अपनी तरफ से करेंगी जरूर। एक तरफ है सिंस ऑफ सेवन, दूसरी तरफ रहेगी यहाँ पे डॉन ई स्पोर्ट्स। क्या जय भाई, आप जानते हैं कि जो है यहाँ पे 7 तरह के यहाँ पे सिंस होते हैं। 5 seconds जी till the enemy बिल्कुल, reaches the 7 तरह के battlefield. सीन, 7 Smash तरह के them. हम लोग हिंदी में बोलेंगे पाप। उस पाप का नाम जो यहाँ पे है लेके बैठे हमारे जो यहाँ पे गेम वाले जो है टीम। तो यहाँ पे देखिए फिर से खेली जो है विशन देंगे, यहाँ पे जा रहे रेड बाफ की तरफ, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था इस बार रेड बाफ जो है वो चुरा लिया जाएगा। इस बार मौका नहीं छोड़ेंगे चौका मारने का। तो जुनियर को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, इसी के साथ खेली वापस आ गए, उन्होंने देख लिया रेड बाफ जो ले लिया गया है। अब ब्लू बाफ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे फाइट होने को मिलेगा, फाइट हुआ तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज रहेगा, वैलेंटाइन का डैमेज अच्छा खासा जो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे अर्ली गेम पे, तो कहीं ना कहीं सेफ जरूर खेलेंगे यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर टॉप लेन की बात किया जाए तो वहां पे थोड़ा सा कशमकश जरूर हमें देखने को मिल रहा है, हल्का सा जो है यहाँ पोकबाजी करते हुए उसी के साथ ही तो वॉन्डर लेने का प्रयोग करते हुए दिखेंगे जरूर। मौका जाएंगे, अकेले मैच रहेंगे तो इजीली यहाँ पे कहीं भी जो है दिक्कत नहीं देना चाहेंगे, पीछे हटते हुए सावधानी से यहाँ पे लेन क्लियर करते हुए हमें देखेंगे। हायाबुसा वहां पे जो है फार्म करने के लिए रेडी हो चुके हैं, वो फार्म कर रहे हैं वहां पे, और उसी के साथ यहाँ पे जो है एमएम लेन पे हमें जो है पहला जो है यहाँ पे कशमकश देखने को मिल सकता है, और उसी के साथ चुरा लिया गया है। लेवल 3 हो चुके हैं जूलियन, और यहाँ पे लेवल 4 की प्राप्ति भी हो चुकी है दोनों यहाँ पर को, और उसी के साथ दोबारा से पोक किया गया जरूर है, लेकिन पीछे हटेंगे। और अभी जो है टर्टल कुछ ही देर में यहाँ पे आएगा, लेकिन उससे पहले क्या फाइट लेना चाहते हैं ये, और बिल्कुल अंदर गए जरूर है, और उसके साथ काफी अच्छा खासा डैमेज हमें देखने को मिला है। मिनोटॉर के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज दिया है, तो पीछे हटना पड़ेगा, संभाल के थोड़ा खेलना पड़ेगा। हायाबुसा अभी भी वहां पे है, तो देखना पड़ेगा किस तरह से खेला जाएगा। और शैडो लगाई, अकेला पकड़ा जरूर है, का प्रयोग किया जाएगा उनको, मृत्यु दंड स्टन देने का प्रयास जरूर किया था जूलियन ने, लेकिन कोई काम नहीं आया। और उसी के साथ टर्टल महाराज, उनका आने का आगमन होता हुआ कुछ सेकंड्स में यहाँ पे जो है टर्टल महाराज बाहर जाएंगे। जय जी बिल्कुल, कच्छो महाराज जैसे आएंगे, आप कच्छो महाराज तो खुद शांत रहते हैं, लेकिन फाइट जो कराते हैं वो बहुत ही अशांत होता है। तो भैया यहाँ पे कच्छो महाराज में जो छोटे मोटे फाइट देखने को मिलेगा, मीनातोर जो आएंगे कूदेंगे, फिर अपनी टीम को हील करेंगे, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज तो मिलेगा, लेकिन एडवांटेज की फायदा जो है मौका उठाना ही जो है वही इस गेम का जो है पहला नीति होता है। तो यहाँ पे फाइट तो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे फिलहाल तो लग रहा है उसका टीम के पास एडवांटेज ज्यादा है। यहाँ पे 4 लोग जो टर्टल ले रहे हैं, इसी के साथ हायाबुसा ने यहाँ पे टर्टल को को ले लिया, और यहाँ पे देखिए किस तरह से प्रोग्रेस एंगेज करे। यहाँ पे मिनातोर का एचपी हो चुका है, स्पीकर मारेंगे, हायाबुसा का अल्टी जो है कर दिया है कैंसिल, तो कहीं ना कहीं मिनातोर बस तो जो जाएंगे, लेकिन टर्टल का एडवांटेज जो 1000 गोल्ड का है वो यहाँ पे मिल चुका है। हायाबुसा पोक करने की कोशिश करे ताकि हेल्थ कम हो, पीछे की तरफ जाए, फार्म जो एनिमी टीम का यहाँ पे कम हो, तो कहीं ना कहीं जो अच्छा खासा गेम प्ले में जो यहाँ पे 7 सीन्स की तरफ से देखने को मिल रहा है कि ऐसा लग रहा है उन्होंने बहुत सारे सीन्स किए हैं, इसे ऐसे और भी गेम्स खेले, ऐसे टूर्नामेंट खेले जहाँ पे बहुत सारे सीन्स करके जो एक्सपीरियंस है वो गेन किया है, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज जो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और उसी के साथ देखिए अभी जो है टीम थोड़ा संभाल के खेलती हुई, अभी जो है अर्ली गेम पे कोई भी फालतू का फाइट हमें देखने को मिला है, अननेसेसरी यहाँ पे जो है अग्रेसिवनेस हमें देखने को नहीं मिली। और उसी के साथ हायाबुसा जाना जरूर चाहते थे, लेकिन उनका मौका दरस करते हुए मिनोटॉर रहेंगे, और उसी के साथ बॉटम लेन की तरफ आते हुए जूलियन, उनके साथ साथ सिसिलियन भी आते हुए
बॉटम की यहाँ पे लेन की तरफ जाएंगे, जरूर अल्ट का प्रयोग किया गया है, रितिल की तरफ से डैमेज देने का प्रयास जरूर रहेगा, बहुत ही कम एचपी पे अल्ट का प्रयोग किया था मिनोटॉर ने, लेकिन आया भूसा शैडो लगा के जाएंगे, कुनाई नाइफ मारे जरूर है लेकिन पीछे हट जाएंगे, और उसी के साथ वैलेंटीना जो है मिनोटॉर का अल्ट चुराती हुई, और उसी के साथ इनका अल्ट जो चुरा लिया है यहाँ पे मिनोटॉर रीच, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वैलेंटीना की तरफ से IMU का प्रयोग जब वो करेंगी। टॉप लेन की बात किया जाए तो वहां पे हराज किया जा रहा है, यहाँ पे हमारे जो सिकंदर भाई है, यहाँ पे इनको जो है मैं सिकंदर भाई बुलाता हूँ, और जिस तरह से आते हैं अपने रेत के देवता, यहाँ पे उनको जो है थोड़ा सा दिक्कत जरूर दिया गया है टॉप लेन की तरफ से, लेकिन अभी जो पारी है थोड़ी सी जाती हुई दिख रही है हमें। कोई भी टीम जो है यहाँ पे अच्छा खासा अभी जो है बहुत ही सेफ खेल रही है दोनों टीम, अभी जो है नेसेसरी फाइट हमें देखने को मिली नहीं है, लेकिन टॉप लेन की साइड में बहुत ही हालत खराब होती है, वहां पे बार बार हील करने का प्रयोग, लेकिन मिड लेन से उनको किया गया है, उड़न कटोला को उनको भेजा गया है सीधा मृत्यु के द्वार, पीछे से आएंगे जरूर, आया भूसा अल्ट मारने का प्रयोग, लेकिन अल्ट नहीं मारा, सीधा कोई नाइफ से किया जाएगा, उनको जो है मृत्यु के द्वार भेजा गया। उसी के साथ यहाँ पे टट कुछ हमारा जो है आ चुके हैं, टर्टल लेने का प्रयास करेंगे इजीली, बहुत ही इजी टर्टल यहाँ पे इनको मिलेगा भी, और उसी के साथ कहीं ना कहीं संभाल के थोड़ा रहना पड़ेगा, और यहाँ पे खलीद हील होते हुए काफी अच्छे खासा हील अपनी टीम के लिए जो है विजन प्रदान करते हुए, पीछे से मटेल्डा आई जरूर है दोबारा से, इस बार थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा, उसी के साथ दोबारा शैडो लगाई है वहां पे, और इस डैमेज देने का प्रयास दोबारा से, उसी के साथ फ्लिक का प्रयोग करते हुए गए जरूर है यहाँ पे फोबिया के अंदर, और इसी के साथ पूरी टीम को लेन जो है यहाँ पे पूरी डिस्टर्ब करते हुए डैमेज देंगे जरूर, एक के बाद एक यहाँ पे डैमेज देने का प्रयास, पूरा डैमेज तो कम करते हुए, लेकिन बहुत ही कम एचपी पे बचे हैं, और सीधा यहाँ पे मैं डालूंगा पीछे की तरफ से, और उसी के साथ यहाँ पे इजीली जो है टर्टल चुराया जाएगा सिसिलियन के द्वारा, पीछे से डैमेज देने का प्रयास है, उसी के साथ यहाँ पे 3 बंदे अपने यहाँ पे ले जाएंगे टर्टल के साथ एक ट्रेड ऑफ, यहाँ पे काफी अच्छा टर्टल करवाया है जरूर, लेकिन उसके साथ जो है 3 किल अपनी जोड़ी में बढ़ते हुए जो है टीम 7 सिंस की, और इसके साथ अगर स्कोर की बात करें तो 2-5 का स्कोर चलता हुआ जय भाई, और स्वर्ण मुद्राओं की बात करें तो ऑलमोस्ट 3K का यहाँ फार्म डिफरेंस आता हुआ दिख रहा है हमको। जी बिल्कुल शिंदा भाई, यहाँ पे जैसे कि आपने कहा खैलिद को बुलाते हैं यहाँ पे सिकंदर, लेकिन मुझे लग रहा है फबियास जो है सिकंदर का यहाँ पे मुकंदर जो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं फबियास, जिस तरीके से कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो बहुत टफ होने वाला है। इसके साथ टॉरेंट जो है ईतल ने मौके का फायदा उठाया, चौके मारा, और सीधा टॉरेंट को जैसे हटा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा अभी टर्टल तो दे दिए, किल फार्म टरेट एडवांटेज पे कहीं ना कहीं जो अभी 7 सीन्स ऑफ 7 है वो है, लेकिन यहाँ पे गेम कुछ भी हो सकता है, अगर जूलियन को स्नोबॉलिंग का मौका मिलता है तो अच्छा खासा डैमेज उठा सकते हैं वो, अच्छा खासा जो है पे लाशें भी बिछाने की कैपेसिटी रखते हैं। खैलिद जो है थोड़ा खेल दिखा नहीं पा रहे, ठीक है ना, क्योंकि जो आगे उनका थोड़ा डोमिनेंस कम चल रहा है, हालांकि जो अच्छा खासा इनिशिएट कर सकते हैं, अच्छा खासा खुद को हील कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लैकिंग था शिंदा भाई आपने अर्ली गेम पे हमें कहा था वो हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से गैंग पड़ा है, गैंग का एडवांटेज जो मिनातोर है उनको लिया गया है, मिनातोर अच्छा हीरो है, लेकिन कहीं ना कहीं मिनातोर जो पीछे लैग कर रहे हैं, उन्होंने जो अभी तक 3 किल दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो गेम का 3 किल थोड़ा पड़ला भाई हमें देखने को मिल सकता है। तो वो इसके साथ यहाँ पे हेड का प्रयोग करते हुए गए जरूर है अंदर, 3 बंदे पकड़ेंगे अकेले, लेकिन एक के बंदर यहाँ पे परिहार करते हुए पीछे से नॉकअप पे नॉकअप दिए जरूर है, लेकिन बहुत ही कम एच बचते हुए उनको मृत्यु दंड दिया गया, और उसी के साथ यहाँ पे किलिंग स्प्री अपनी झोली में बढ़ते हुए आया भूसा, और वैलेंटीना जो है यहाँ पे काफी अच्छी तरह खेलती हुई अपने जो है यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे जो है अपना जो प्रहार करती हुई एक के बाद एक किल निकाले जरूर है। पीछे मेज अकेले बचेंगे, टरेट बचाना चाहते हैं परंतु उनको मौका मिलेगा नहीं, और सीधा उनका टरेट जो है ले लिया जाएगा, उसी के साथ उनको जो है जोन आउट किया गया डैमेज देके, और मिड का स्तंभ उठा लिया गया है। मिड का स्तंभ जब जाता है जा भाई, यहाँ पे जो है एक तरह से एनिमी का जंगल कंट्रोल आपके उसमें आ जाता है, आप जो है फिर एनिमी के जंगल पे रोम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टॉप लेन की साइड डैमेज देने का प्रयास करना चाहते थे अपने टरेट का यहाँ पे रक्षा, लेकिन उनका जो है वो कर नहीं पाए, और उसी के साथ यहाँ पे टॉप का स्तंभ भी जाता हुआ दोबारा से यहाँ पे एक और न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव जाएगा सीधा यहाँ पे हायाबुसा की झोली में, और दोबारा से यहाँ पे प्रयास रहेगा ब्लू चुराने का, लेकिन उनको रोकने का प्रयास साजी नहीं मारा जरूर है, बहुत ही कम एचपी पे उनको दिया गया मृत्यु दंड, पीछे से जो है लगे जरूर डैमेज देने के लिए, अच्छा खासा सीसी नॉकअप दिए हैं 2-2, लेकिन रिथिल पीछे से रहेंगे डैमेज देने के लिए, और सही समय पे यहाँ पे अपने पांव पीछे खींचेंगे, और अभी जो है जैसे मैं कह रहा था कि ब्रॉडी उनका डैमेज धीरे धीरे आ रहा है, और अगर बिल्ड की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है उनका बिल्ड बन भी रहा है, और जो है अभी स्काई बेसर यहाँ पे उन्होंने डाला जरूर है, और उनको जो है अभी थोड़ा सा एक बीओडी जरूर लगेगा थोड़ा सा जो है डैमेज अप करने के लिए,
उसका जो है प्राप्ति यहाँ पे होनी चाहिए। उसी के साथ काफी अच्छा यहाँ पे पारी चलती हुई वापसी करने का एक प्रयास जरूर करती हुई यहाँ पे डॉन स्पोर्ट्स नहीं जाना चाहती है। ऐसे 3-9 का स्कोर चलता हुआ स्वर्ण मुद्राओं की बात करें तो अभी भी आगे रही कि यहाँ पे सेवन सिंस की टीम, और इसके साथ यहाँ पे शेडो लगाते हुए जाना चेस करना चाहते थे लेकिन पीछे हटेंगे। उसी के साथ यहाँ पे डैमेज देने का प्रयास रहेगा। अच्छा खासा यहाँ पे डैमेज दिया जरूर है। टॉप लेन दोबारा से एक बार एयरटेल की रेल कर देगी, फिर दोबारा से जो है बार बार बैक एंड फोर्थ चलता हुआ यहाँ दिख रहा है हमको। डैमेज देने का प्रयोग फिर लेन पे दोबारा, और उसी के साथ देखना पड़ेगा किस तरह जाएगा गेम। जय भाई। जी बिल्कुल शिंदा भाई, जैसे आप बोल रहे हो ना, यहाँ पे गेम प्ले तो बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। कोशिश जरूर कर रहे हैं कमबैक, लेकिन कोशिश मिलना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमें पानी खेला जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे टीम फाइट देखने को मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। हायाबुसा फिर से अपना टीम है उसके यहाँ पे मेगा किल जो हायाबुसा को मिलेगा। यहाँ पे गोल डिफरेंस और पाउंड डिफरेंस की वजह से कह रहे हैं कि बहुत सारा डैमेज में मेरा अपना अल्टी का उसके रेस देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे फाइनली मटिल टर्ट है जो खरीद का किल उठा लिया है। इसके साथ हायाबुसा तीनों इसके साथ जो जारी को लेकिन हायाबुसा जो है चिन करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, भागने के मौका देंगे नहीं, किल लेंगे। डबल किल लिए, टोटल तीन मिला है अभी तक, मॉडल टॉप एक किल मिला है। तो कितना अच्छा खासा यहाँ पे गेम पे देखने को मिला। ब्रॉडी आए लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। मुझे लगता है ब्रॉडी जो है उनको अपना स्काई पियर्सर जो है वो बेच सेल करके कुछ और आइटम लेना चाहिए, क्योंकि स्काई पियर्सर तभी काम आता है जब आपके पास स्टैक हो। मुझे लगता नहीं ब्रॉडी के पास अभी 20 स्टैक भी होगा, तो स्काई पियर्सर अभी उनके लिए काम का नहीं है, क्योंकि अभी अगर स्काई पियर्सर की जगह कोई और आइटम लेते हैं तो उनको ज्यादा फायदा मिल सकता है। Red team has slain the Lord. इसी के साथ टर्टल जो है कछुए महाराज यहाँ पे, सॉरी हमारा लॉर्ड जी और शिव शंभू उनको ले लिया गया। यहाँ पे मौका नहीं देंगे, खलीज जो यहाँ पे फंस जाएंगे, टर्रेट के अंदर इन्वेट होगा। फार्म की डिफेंस की वजह से टर्रेट कुछ कर नहीं पाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। रेत का जो है अपना यूज करके पीछे की तरफ भागना पड़ेगा। टर्रेट जो है ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही अच्छा खासा की तरफ से माइक्रो गेम प्ले जो हमें देखने को मिला है, उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर एक के बाद एक, पहले टॉप फिर मिड फिर टॉप, जैसे कि टाइट पुश कर रहे हैं। बहुत ही शानदार गेम प्ले इधर की तरफ से देखने को मिला शिंदा भाई। उसके बाद टीम में क्या ही बात करूं, टीम सिंक्रोनाइजेशन देखिए किस तरह Blue से टीम team जो है turret has चार been चार लोग एक साथ खेल रहे हैं। मिड का जो है लेन क्लियर कर रहे हैं। जिस टीम का जो क्या ही बात को सीन्स ऑफ सेवन जो है लिटरली अपना माइक्रो और मैक्रो दोनों गेम प्ले प्रॉपर हमें देखने को दे रहे हैं शिंदा भाई। यहाँ बिल्कुल। और जी जी बोलिए शिंदा जी भाई, जी बोलिए। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन अच्छा यहाँ पे गेम प्ले में देखने को मिल रहा है। और इसके साथ लॉर्ड जो है यहाँ पे मिड से आता हुआ बहुत यहाँ पे रहेंगे जरूर। उसके साथ पूरी जो लेन देखिए जिस तरह से सिंक की जा रही है, बॉटम लेन की तरफ अकेले यहाँ पे लड़ रहे हैं, बचाना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे गलती साबित हो सकती है। सही समय पीछे हटेंगे हीलिंग करते हुए, लेकिन टावर के अंदर डैमेज देने का प्रयास रिटेल करती हुई। उसी के साथ जो पहला लॉर्ड था वो जरूर यहाँ पे निकाल लिया जाएगा। हालांकि जो है इनहिबिटेड टरेट अभी तक गए नहीं है, निकालना जरूर चाहेंगे इस लॉर्ड के साथ। इस ये मिनियन के साथ जो है मेड का टरेट है निकालने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पे उसी के साथ डैमेज देने का प्रयास दोबारा से काफी अच्छा खासा डैमेज दिया जरूर है। और अल्ट का प्रयोग करते हुए उसके बाद दोबारा दो नॉकअप दिए जरूर है। बहुत ही कम एचपी रहेगी उनकी, किलिंग स्प्री उठाएंगे सीधा पीछे से रिटेल डैमेज देते हुए, और डबल किल अपनी झोली में, ट्रिपल किल अपनी झोली में। क्या मेनियाक हमें देखने को मिलेगा? जी हाँ, मेनियाक भी अपनी झोली पे लेंगे जरूर, लेकिन शट डाउन मिल गया है उनको। कहीं ना कहीं आगे जाते हुए जाएंगे, लेकिन अल्ट का प्रयोग करते हुए गॉड लाइन निकालेंगे, और इसी के साथ ये पारी यहाँ पे खत्म होती हुई हमें दिख रही है। तो बेस पे यहाँ पे लॉक इन किया जाएगा, मारने का प्रयास रहेगा, लेकिन मिनियन अभी आए नहीं है। दोबारा से मिनियन खाली होते हुए बहुत ही कम एचपी बचेंगे फोबियस, लेकिन पीछे से दोबारा मिनियन की वापसी होती हुई यहाँ पे रिकॉल मारने का प्रयास किया जरूर था और मारा भी। उसके साथ साथ जो है बेस निकाल दिया गया है बहुत ही इजीली। जो है गेम यहाँ पे जीती हुई टीम यहाँ पे सेवन सिंस के आगे जाएगी और अपनी विक्ट्री का जो है वह परचम लहराते हुए। उसी के साथ डॉन स्पोर्ट्स जाना पड़ेगा इस बार थोड़ा सा निराश होके। इस बार करने चाहता था, मतलब करना चाहते जरूर थे धमाका, लेकिन हो नहीं पाया इस गेम में। यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे जय भाई? क्या लगता है यहाँ पे क्या कमी रह गई थी यहाँ पे? जी बिल्कुल, कमी का तो बात नहीं करेंगे। जो हीरो लिए थे इन्होंने वो अच्छा खासा हीरो तो था, लेकिन कहीं ना कहीं जो फाइट में, जो मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ कि हीरो भी मैटर नहीं करता, आपका स्किल, आपका टीम वर्क जो है वो मैटर करता है, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। जिस तरीके से गैंग को आज जिस तरीके से प्रेशर दिया गया, जैसे जहां पे आप देख सकते हो चमकादड़ वाले भाई जो है हमारे सिसिलियन, वो जो है वो उनको भी डैमेज आउटपुट जो का जो है मौका तक नहीं दिया। पहला लॉर्ड लिया, गेम खत्म किया, क्योंकि उनको पता था सीन्स ऑफ सेवन को कि भाई सिसिलियन है गेम पे, जो अच्छा खासा डैमेज देते, लेट गेम में अकेला गेम निकालने में सक्षम होता है अगर सही पोजीशन से वार करे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें गेम प्ले दोनों टीम की तरफ से अच्छा देखने को मिला, बस यहाँ पे एक्सपीरियंस का जो है और टीम फाइट का जो सिनर्जी है वो थोड़ा सा जो है डॉन की तरफ से हल्का सा कम देखने को मिला। लेकिन कोई बात नहीं, टूर्नामेंट ऐसे आते रहेंगे। डॉन्स जो है, मैं बोलूंगा डॉन्स को जो है अच्छा खासा आप खेलते रहिए, आगे जाते रहिए, कहीं ना कहीं एक दिन जो है आप भी अच्छा खासा जीत के साथ जो है फाइनल जाके वहां से विनर भी बन सकते हैं। तो आप कोशिश जरूर करते रहिए।
जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पारी यहाँ देखने को हमें मिली, बहुत ही अच्छी पारी यहाँ चली ज़रूर थी, मिनट और अगर यहाँ पे जो है उन्होंने कोशिश अच्छी करी, परंतु जो है हीरो कहीं न कहीं जो है लैग करता है और उसके साथ ख यहाँ पे बात करें खलीद ने काफ़ी अच्छा डैमेज जो है सुकअप किया टीम की तरफ से, काफ़ी अच्छा जो है खेल अच्छा रहे थे, विज़न अच्छा खासा प्रोवाइड कर रहे थे अपनी टीम के लिए, लेकिन कहीं न कहीं जो दिक्कत है, जूलियन भी है वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, उनको मौका मिल नहीं पाया और सिसिलियन जब पिक हुआ था तो जय भाई मैंने आपको बोला था कि जब सिसिलियन पिक होता है तो उनका जो डैमेज है वो लेट गेम में आता है। अगर लेट गेम तक जो है अगर गेम नहीं खींच पाए आप, तो वहाँ पे जो है फिर दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे अगर जो है आपके अपोनेंट जो है वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है गेम को एंड कर दिया जाए और वही यहाँ पे जो है टीम सेवन सिंस ने जो है किया। गेम को जो है जितनी जल्दी-जल्दी यहाँ पे जो एंड किया और उसी के साथ अपनी जो पारी है, वो अपनी जो अपनी विक्ट्री का परचम है वो यहाँ पे लहराते अपने विजय का परचम लहराते हुए इस गेम में हमें दिखी ज़रूर है। का पंच विजय का पंचम जो यहाँ पे हमें देखने को मिला जरूर है, लेकिन यहाँ पे एक बात भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आइटमाइजेशन पे बात करें तो मैं बोल रहा था कि अगर अर्ली गेम पे आपको किल नहीं मिले तो आपको जो आपका आइटम जो है वो सेल करना बहुत ही जरूरी है। स्काई पियर्सर बॉडी के पास था लेकिन उनके पास स्टैक नहीं था, बिना स्टैक के स्काई पियर्सर कोई काम का नहीं होता। अगर आप उस जगह कोई और आइटम बनाते, आपको डैमेज आउटपुट मिलता, आपको किल मिलता, फिर आप स्काई पियर्सर ले तो कहीं ना कहीं जो आपको एडवांटेज जरूर मिलता। तो यही थोड़ा बहुत आइटमाइजेशन का बात करते हैं, फिर या जो टीम सिनर्जी का बात कर रहे थे उसी के साथ जो यहाँ पे जूलियन जो अपना गेम प्ले दिखा नहीं पाता। पहला गेम जो शुरू हुआ था उसमें थोड़ा उन्होंने फुर्ती दिखाई, वहां पे जो बाफ था वो छुड़ाया, बहुत कुछ किया, लेकिन सेकंड गेम पे वो दबाव जो है पहले ऐसा जो है देखा नहीं पाया, इसी की वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ। इसके साथ जो दर्शकों बने रहे जाइए मत, अगली मैच जो है और भी अच्छा खासा मुकाबला के साथ आने वाला है। मैं हूँ जॉय, मेरा दोस्त है शिंदा, जो हम लोग कर रहे थे कास्टिंग। मिलते हैं आपसे अगली मैच की तरफ। Like fairy tales? Who deserves to live happily ever after? Five strong, we ride side by side, locked and loaded, no place to hide. From jungle deep to the final lane, we bring the storm, we bring the flame. We hear the call, the time is now. Push through the clash, we roll back down. Every skill shot, every stride, we fight as one, unified. When legends collide, the fire ignites. We light up the map like stars in the night. With every move, we shift the tide. This is our yard, our battle cry. In the heart of the fight, we rise, we thrive. No fear, no doubt, we're born to survive. Together we stand, no need to hide, cause this is the moment when legends collide. Towers fall, but we're not done. The base is shaking, here he come. A dance of death and pixel light. One last push, one final fight. Mids under pressure, box holding strong. Top lanes on your zone, we carry on. Ults online, shadows crawl. Call the gank, we'll take them all. Echo and chant, legends, rise up. Legends, strike hard. Legends, never fall. We own this battleground. When legends collide, the fire ignites. No turning back, we burn through the night. Unleash your power, let it ride. This is our world, electrified. We conquered the map with skill and pride. It's the final blow, no need to hide. We came for glory, side by side. This is the moment when legends collide. Like fairy tales? Who deserves to live happily ever after? Five strong, we ride side by side, locked and loaded, no place to hide. From jungle deep to the final lane, we bring the storm, we bring the flame. We hear the call, the time is now. Push through the clash, we roll back down. Every skill shot, every stride, we fight as one, unified. When legends collide, the fire ignites. We light up the map like stars in the night. With every move, we shift the tide. This is our yard, our battle cry.
In the heart of the fight, we rise, we thrive. No fear, no doubt, we're born to survive. Together we stand, no need to hide, cause this is the moment when legends collide. Towers fall, but we're not done. The base is shaking, here he come. A dance of death and pixel light. One last push, one final fight. Mids under pressure, box holding strong. Top lanes on your zone, we carry on. Ults online, shadows crawl. Call the gank, we'll take 'em all. Echo and chant, legends rise up. Legends strike hard. Legends never fall. We own this battleground. When legends collide, the fire ignites. No turning back, we burn through the night. Unleash your power, let it ride. This is our world, electrified. We conquered the map with skill and pride. It's the final blow, no need to hide. We came for glory, side by side. This is the moment when legends collide. Like fairy tales? Who deserves to live happily ever after? Five strong, we ride side by side, locked and loaded, no place to hide. From jungle deep to the final lane, we bring the storm, we bring the flame. We hear the call, the time is now. Push through the clash, we roll back down. Every skill shot, every stride, we fight as one, unified. When legends collide, the fire ignites. We light up the map like stars in the night. With every move, we shift the tide. This is our battle cry. In the heart of the fight, we rise, we thrive. No fear, no doubt, we're born to survive. Together we stand, no need to hide, cause this is the moment when legends collide. Towers fall, but we're not done. The base is shaking, here he come. A dance of death and pixel light. One last push, one final fight. Mids under pressure, box holding strong. Top lanes on your zone, we carry on. Ults online, shadows crawl. Call the gank, we'll take 'em all. Echo and chant, legends rise up. Legends strike hard. Legends never fall. We own this battleground. When legends collide, the fire ignites. No turning back, we burn through the night. Unleash your power, let it ride. This is our world, electrified. We conquered the map with skill and pride. It's the final blow, no need to hide. We came for glory, side by side. This is the moment when legends collide. Like fairy tales? Who deserves to live happily ever after? Five strong, we ride side by side, locked and loaded, no place to hide. From jungle deep to the final lane, we bring the storm, we bring the flame. We hear the call, the time is now. Push through the clash, we roll back down. Every skill shot, every stride, we fight as one, unified. When legends collide, the fire ignites. We light up the map like stars in the night. With every move, we shift the tide. This is our battle cry. In the heart of the fight, we rise, we thrive. No fear, no doubt, we're born to survive. Together we stand, no need to hide, cause this is the moment when legends. And here we are, guys. Welcome, welcome, welcome to ladies and gentlemen, brothers and sisters of all ages. This is the India MOBA Cup, and you'll be watching side by side. This is your guy, Rudz Official. Along with me is Mr. International. It's Bolty.
and we are in a match The which immortal is one chose Ling them to Ling vanquish versus the Seven shadows and Celestials. plague this Hello, world. Bolty. How are you doing tonight? Wow, that energy coming from the man Ruts himself got me all hyped up, and yes, I am feeling good after giving me what the universal Time to energy that you drop just the provided beat of here. the flag. And Your yes, team we is are banning. back in the MLBB 5 tournament, and this time it's going to be the season 1 of that India MOBA Cup for now. But right now, what about Ruts? Can you give us the insight of what are the teams that we're looking at right here? Yes, 20,000 diamonds are on the line, Bolty, and we are going to see both of these teams. Ling Ling is a new team here versus Seven Celestials. Seven Celestials have actually been here for a long Magic time, is so my they are life. the Your experienced team is team in banning. this draft, and they are showing their experience. They saw you and the Hurrit. They both of them are so dangerous Let's when make it the comes to whole team fights, world and team it is has their right to banned. ban them out. The Florine, however, seems like a exceptional ban here. Let's What do you fight for our think, heart's Bolty? Is the content. Florine Your ban team pretty is common? picking. In My terms tail's been of itching this for a fallen real for Your fight. team is Florin ban, picking. you know, I mean, Florin is actually like one of those supports that's like, even though you're not exactly in the battlefield, you can heal a ton, basically a ton, outside of the battlefield with the ultimate that is Bloom, right? So, if we're talking about this fallen ban, I guess it's not that necessary just yet. It's more of like a rank kind of ban, but in terms of tournament wise, is a bit meh on my side. Yeah, I can get You that. got a good What taste. it isn't meh is the Kalia, which has been picked up by Ling Ling, and boy oh boy, the Kalia is a different weapon. I mean, Cho wants to be Kalia here. The Sakura Your team isn't is as picking. useless as she is shown in the original Naruto anime. She is a menace over here. And look at the opponents though. I mean, the Bredang is definitely a prior one, S tier pick. But the Cyclops? Really? What do you think of this big-eyed monster here, Bolty? I mean, looking at this pick so far, it's either this team, Seven Celestials on the red side. I'm pretty sure they're like going for the comfort picks instead of like going meta, because I mean, I guess they're going for the rule of like what is that called? Mastery over meta. Maybe some type of way as well. So mid lane for the Cyclops. I mean, it's gonna be hard, but having that purify on the kit may help the Kalia with the tsunami Team slam. But in terms of wait, Ruts, are we seeing a Masha right here? Oh my god, what? Is this Masha? I mean, must be the XP lane, or maybe the jungle even. But this Masha is definitely something we were not prepared for. And Moskov might be thinking, is this Masha going to be the Masha which was destructive a few patches ago? Or is it gonna be an easy feat? Because you never know. That is the point of having such an upfront draft is you never Your know what you're team going to is expect from these banning. non-meta picks. The meta picks, sure enough, you're prepared for. The out of syllabus questions which we are seeing from Seven Celestials is going to be a bit of an issue as the Zushin has definitely been banned out. What would you like to see here? How do you actually counter a team like the Masha and the Cyclops? Experience the euphony of Cyclops and Team is Masha, suffering. banning. pretty kind of easy to, especially these kind of heroes. They really don't like those burst heroes, such as like the mid lane. On the mid lane side, they're not gonna enjoy the company of a Farsa pick right here, because Cyclops, of course, he have the sustain, he have the damage with those planetary orbits, but when it in terms of range, especially in a tournament of this level, range always wins over anything, even Payback. sustain. Your So look at team that. is They know banning. that a Farsa is going to be quite a trouble for them. All So who they're dare picking out stand in already. my way will be Ajujin being devoured. banned on the second draft. I mean, on the first draft, Ajujin not being banned is it's so weird to see. Don't you think, Rats? Yes, definitely so. And Seven Celestials are showing up literally because they are surprising us all, not just the casters, in fact, the audience as well, because their drafting sense is really different here. I mean, the Fasa and the Zushin as well. And did you know, Bolty, there was another team which surprised us. There was an Alucard pick in the goal lane. Oh, damn! Gold And lane Alucard. That is very And do interesting. you know that Alucard actually took a maniac in the late Oh, game?
He actually won it very well. Yo, that's crazy, man. Gold lane Alucard, or what did he go against it anyways? He He goes went against what? against he went against Granger, and Granger couldn't actually Wow. handle. Oh my god. Maybe Alucard is like the new hero to counter Granger. Yeah, jokes Yeah, aside, anyways, we are seeing look a at that though. Gusion again on the side of Celestial. I mean, on the side of what is this? Ling Ling, we are seeing a very like familiar drafting on their side. But on the other hand, though, man, these guys are full of surprises. The element of surprise might get to Ling Ling, but on the long term, I feel like the team Ling Ling is going to be those kind of team who's just Uh-oh. adapt to it, right? So with that being said, look at Yeah. those picks again. I'll tell you what, Bolty, my mouth is just watering at this question because I am Goshen main, and seeing the Goshen once again in a community tournament is a feat. I mean, definitely I am rooting for Goshen, but if I have to be honest here, I think Ling Ling has a really good draft. I mean, the Selena is just crazy. Yeah, and especially the ticking time bomb on Selena is there, I'll bet, because if you do not actually make your mark in the first few minutes of the game, you are just to vision. So you have to be careful of the Selena right here. But we'll see how it goes so far. The retribution is both on the Gushan as well as the Masha. So we have to see what it goes. If they pick a Layla here, this is gonna Oh be no. a textbook epic draft. So we have to see how these guys are gonna pick it up. No, they it's last moment decide for a Melissa, but it is a weird draft nonetheless. Bolty, what do you say? Yeah, absolutely, my boy Rux. Because seeing the Gushan, that's definitely gonna be the hyper pick. That's gonna be the jungle pick. But this Masha though, I feel like if she gets the items, it's gonna be quite troublesome on the side of Ling Ling because they have like two heroes that can get bursted but down instantly by the Masha with the thunderclaps. So maybe if the team Celestials can work their way around this, Masha could also be their saving grace. But other than that, they do have a Badang as well. That Badang is gonna give so much pressurization to the side of Ling Ling, but Ling Ling having the bit of the better draft on their side. It's all comes down to execution right now. Yes, definitely so. And I am so hyped up about this cushion pick. I mean, it is either you are really the greatest player of them all with cushion, you are swagging, you do have the style points as well when you're playing the cushion. A lot of girls like the cushion players, and or you would actually be someone who really messes it up. And that has to be seen here. Definitely, Seven Celestials are not the trollers, they are the experienced team here. But we have to see, will the Ling Lings be the ultimate underdogs and get the better advantage? Because they are going for a textbook draft here. So, Epic versus Immortal Rank. Here we go. This is a knockout match between Ling Ling and Seven Celestials. It is the India Moba Cup, which you guys are watching right now. In the caster's desk, it is Rud's official, and with me is my man Bolty as we take you live into the action of Land of Dawn, where these two teams will collide. And Bolty, with the draft coming in, who do you think has the better opportunity to take the first blood? Oh, You can already see that the first blood opportunity does lie on the side of Ling Ling because they have a Selena. You know, Selena on the early game pressurization with that Abyssal Arrows is gonna be a little bit of trouble on the side of Celestial. So either this Selena is gonna get the first blood or maybe not. Is it gonna be the Nolan here? definitely so. And we can already see that the Gushan is being pressurized on the jungle, and that is what we have to face as Gushan mains have to face on a regular basis, Volti. Just because we don't have that additional mobility, it becomes pretty hard to actually go into the jungle. But once Gushan hits this level 4 though, he is good enough to burst a lot of people. And look at that, the Ling Ling knows this, and they are constantly trying to tail the Gushan here. So far, we haven't seen any first bloods. Maybe Ling Ling are wasting this opportunity because they could have gotten the first blood here up on the Masha as well. But right now, they are pretty much concised on that Gushan right now. Yeah, this all comes down to Gushan for the early game because Gushan is
more like Leslie, like when it comes to like the later phase, he's gonna be a bit useless on the side of his team because he won't be able to be bursting down like these heroes on the side of Ling Ling that we see. So for now, Uh-oh. Gushan have to snowball really quick, and him picking a killing spree. I mean, that's not really an ideal choice. But oh, some engagement. Tsunami Slam. No, that does not connect as the Purify is there as well. The Moscow's SOD misses, but this is another Goshen who is gonna secure the turtle. And here we go. Masha is there as well with the thunderclaps. He is gonna get taken down. Undertaker, the Phobius, gives him the Tombstone pile driver. And just like that, Bolty, we can see how these two teams can mechanically play each other out. Right now, the turtle is in the favor of Team and Celestials, as once again we can see the Melissa gets taken down, so that is a bonus point for Team Ling Ling as they take the 3-for-1 kill lead on 7 Celestials. True, very true, because Lily is basically, busted or reinforced with those pick-off heroes, right? So it's really hard for Seven Celestial to be doing much. I mean, they do got that Gushen to kind of burst somebody down, but him winning that turtle fight is definitely going to be, helping him get the momentum as well. But it seems like Tsunami Slam almost coming up. Oh! Tang definitely made some mistakes, but Tsunami Sans just land, but he has nobody to actually give him the backup, so he has to back up himself. This looks like a good opportunity for 7 Celestials to actually pick up the dice here and throw some moves. Selena though, okay, the perfect prediction comes in, but there's Cyclops who saves Cushions live there right now, Bolty. What would you say about that? Yeah, that's the Cyclops though. Cyclops though with that TikTok just chasing down the Selena so the Yametes just runs away. That is just pure cinema here. Oh, you might see Incandescent playing a mid lane, but no. Seems like Gushin here though. He did get the sword spike mark on Yamete, but he has to get back for now because even if he get the kill, there was a Phobius at the same time that Nolan, so it'll be risky for me. You don't want to feed as early as possible just yet. Yes, you do not want to feed. And honestly, if anybody needs that additional gold, it is going to be 7 Celestials though. Because they have the Cyclops, they have the Gushin. They will need that additional gold. Once the Cyclops is online though, it will be a different story. The second turtle, however, was easily taken by Ling Ling. But look at that though! Bodang accidentally caught everyone in that fist crack. But he is going to be the one to fall. Here is the Gushin, who actually is facing some trouble boosting down the opponents. And this is it, because there are people who are chasing him down, but to no avail. And this is going to be a double kill coming in for 7 Celestials. Gets traded out instantly though. Here's the Fracture coming in from the Nolan, who gets traded in once again. Cyclops just got a 2 kill here. 202 is his KDA there, Bolty. 2-4 trade right there, Ruts. That is quite impressive to see because 7 Celestial, they were supposed to be the one that struggle a bit, but they're actually the ones giving off like the better trades on their side because I mean, especially that one, it seemed like Gushan definitely went for like the mastery pick because he was definitely smooth on those moves. But right now we are approaching that 5-minute mark. Both of the teams are equalized on 6 kills as well. But the initiation wise though, this time around it seems like 7 Celestial might have that edge to kind of do something on bot side as well. Definitely it's true, and that is what they will be banking on right now. We know that the snowball potential is immense at the hands of 7 Celestials, and they are looking forward to prove something different here. We are seeing something different. This is not your regular community tournament. This is a tournament where you can see all sorts of different pickups, and that is exactly what we are going to see. Because here comes Cyclops, and here's Gushin as well. Gushin is pretty dependent on the Cyclops to actually set something up. Assassin like Gushin really needs someone to set it off. But look at that! Kalia gets a kill of her own as she brings someone down to her side. The Tsunami Slam does connect on this occasion, and this is looking like Ling Ling, although, are gonna lose the mid turret though, because the numbers game is taking the advantage here, Bolty.
Indeed. But it seems like there's a little bit of a 1v1 against these two guys. But look, it's just the Gushin going backward. But it seems like there might be a fight in the mid side over here. Initiation coming in. The Purify on the Cyclops is pretty coming in clutch, not gonna lie. Because Purify has saved him on multiple occasions till now. That is why the Selena is finding it problematic to actually do something about it. But the Nolan, on the other hand, is pretty aggressive as well. 3-2-1-3 as he takes out off-cam kill on that Melissa as well. So definitely Nolan showing off that, hey, I am the new age meta assassin. Question, you might be the OG, but this is time for the next generation. As we see both of these teams proving to us who the next generation is. Look at that though, Kalia has actually caught the Gushin. That is the reason the turtle couldn't be secured, and this is just gonna be Phobius who is gonna try to get some of the kills here. But for now, which team do you think has the upper hand here, Bolty? Upper hand kind of shifted back, especially that turtle being picked up on the side of Ling Ling. And yes, that is the momentum that they need to kind of come back at Celestials. But seeing that the Zine on the Militia getting picked off a number of times by the Kalea, that's kind of hard, especially that's gonna be a fallback on the side. Oh, but there might be a little bit of a gank over here because somebody's getting caught here. But no, they're gonna be backing off for now. Yeah, can we see that? Never. Yeah, the Moskov gets taken away, and that is gonna be the second time Moskov gets killed off cam as the hero actually. Who was that hero again? The Jungle Queen? Bolty? Jungle Queen. Yeah, the Thunderclap Queen. Oh, okay, the Thunderclap Queen. That is the Mai Shiranui, I'm so sure. But oh, another Tsunami Slam. Okay, another Tsunami Slam coming in. But it is gonna be the Kalia who picks up the kill. So Ling Ling are looking pretty solid. But the turrets, on the other hand, are surely falling for them. As the mid as well as the bottom turret is gone. Nonal somehow trying to equalize that, but by going for the top turret, he is gonna recall though, because they do not know what is coming next. But this is Zine who is being caught out, but is gonna get a Uno reverse card played in as Kalia is gonna meet her death on her own. And this is a cat and mouse game. Look at Gushin though, he is once again hurdling for this Moskov here. Can he get the Shadow Blade slaughter in? Okay, he's waiting. Okay, he actually gets outplayed there by the Moskov, as the Moskov knew when he was coming. The flicker play was good, but here's the question: who's gonna give it another try? Look at the team combination though, coming in from 7 Celestials, Bolty. They are everywhere. Yeah, that's true, but man, Moskov trying to do something, but no. That's just Yell Homie falling down to the hands of Ling Ling again, but they do have that turtle, not turtle, but Lord advantage over here. Oh. This is looking not nice for the Gushin, as he is gonna taken out by Yamate, and Yamate must say Yamate, because she is taken down as well. Here comes the Masha, and this is looking like a bloodbath as Zine gets taken away as well. So far, it is a 3-for-1 trade in the favor of Ling Ling, as they are surely trying to secure the turtle. They do not want to get into the late game situation where the Cyclops has so much damage. Look at that though. Look at that. It was a good try, valiant effort by Team 7 Celestials, but the Lord will go to Team Ling Ling here, Volty. Oh, that's almost a dead Moskov, but that is good for the side of Ling Ling because losing a Moskov is kind of hinder them on this Lord advancing onto the top side towards the other side. So right now, we are seeing that Jin picked up that Husk Claws that's going to be more sustained on the side of these marksmen as well. But this time, Jin actually knows how to use the ultimate to, reverse and stop Kalia from Tsunami slamming her. So that is a plus, but it seems like another Tsunami slam coming in. That was the invisible Tsunami Slam, which caused the death of Melissa, and that is just how Ling Ling are trying to outskill the opponents right now. Badang is there, but it is gonna be the Kalia who is creating all the problems. They will not be able to sustain, survive, and so will not their mid lane, as that is taken away from them as well. One after the other, they are falling like 9 pins, and it is a defense which will be really hard
for Team Seven Celestials to pull off here, Bolty. Indeed, that Red defense team is turret always has been hard when it destroyed. comes to like your your lower on turrets. At the same time, losing that Lord fight could be your downfall. But for now, Ling Ling this time, the fruition of their hero picks when it comes to meta has finally paid off. But we cannot forget about the Cyclops. If we can see the Cyclops build, I'm pretty sure he might be having the yes concentrated at the same time. But once he goes for that Holy Crystal or the Divine Glaive, it's gonna be looking good for the side of Seven Celestial. And also we are seeing that the Mai Shiranui also has some of the items, especially going for the Sky Piercer here, though not really sure, but they're trying their best to burst down the squishy heroes such as the Chase and Yamete. Yeah, and I mean the Cyclops here is a supreme ranked Cyclops, so definitely his team is counting on the Cyclops pick to be worthy here. I mean they have done their job. They have so far sustained the early game here. So it is to be seen what is going to happen next. As we can see, that two Sky Piercers are in the team of Team Seven Celestials, and most of them don't have a lot of stacks. But come at late game, this is gonna be transformed. It only takes one good fist crack from this Bradang here, which might change the situation, Bolty. Yeah, it could be the time changer here, but seems like both of the teams are not committed because that Lord fight is more important. If you lose some members there, it could definitely cost you on, especially when it comes to momentum plays. So this time the Lord is peeking out onto the side of Ling Ling, and Ling Ling are wasting no time to get that. They want to win this as soon as possible because they are in the lead. But it seems like there is. Oh, never mind. There goes onto the side of Ling Ling right here. But for now, the guy who can make a play onto the side of, I think, Seven Celestial is definitely going to be the Yell Homie here with the Badam, because protection-wise, he needs to. I mean, he's like the only initiator, right? Because Batang on itself, I mean, I don't really consider him as a good initiator unless they have another thing, another frontliner here. But oh, there might be some initiation coming up. Okay, there's a skirmish in the top lane. Everybody's throwing themselves at each other, but it is gonna be the side of Ling Ling who are gonna lose one member. The key initiator, the Kalia, is down. And this might be an opportunity for Seven Celestials to do something about the situation. Marsha so far hasn't made a lot of her mark, but she has 5 kills to her name, Brody. Look at that though. Roshan is trying so hard to catch the Moskov. But of course, it is meta versus non-meta. And Zine had no business of being over there. I mean, the Lord was marching down the bottom lane. You should have been there to defend it. So I think there is some coordination issues on both the teams' part here, Bolty. Yeah, they're definitely the underdogs. So when it comes to coordination, they might be lacking, but they're trying though. This tournament is definitely give them the experience to become better players. So for now, it's just the Gushan here gonna be trying to. No, he might get caught over here because initiation. White What an engaged tsunami slam, perfectly executed by the Kalia, and that just makes Seven Celestials go onto the back foot, and this is going to be a hard defense, at least until Cyclops is confident on his damage right now. But for now, Ling Ling are wasting no time as they want to take that turret out. This is going to be a valiant effort from V on that cushion, but he is still not going to be able to connect that sword spike and get the kill right now. So what do you think about these picks here? Are these picks actually uncommon compared to the international teams which you have casted for, Bolty? Actually, this what is this? What is this? This Masha pick, okay? Indonesia, they love Masha, okay? Especially when I was casting in international, I've seen like this specific team called Army Hunters. That is like the Indo team that represented the true internationals on Indonesia, and they love that Masha on the EXP because they like to play with anything that like burst down teams in like a
a chain. So that's what they did as well. But on the other side, these picks, no, not really, not really. But PH wise, PH they do love that Freya a lot because of course it's PH, right? And they love to go that Freya jungle as well. But oh, there might be initiation. Yes, definitely so. And Masha is caught in between a rough space, but she gets the shit down Look at that. on that. Oh my god. It's as well. Can you believe it? Only to be killed by the SOD, but she actually got a 2v1. Bolty, that is a big statement as seven Celestials are gonna get lowered as well. Bolty, things have just changed. The tables have been turned over here. Look at that. August is not going to survive as well. And this is just looking so bad for the team of Ling Ling here. How did the table suddenly turn? Comfort over mastery, Reds. We're looking here because the meta picks are not really working on the side of Ling Ling because on the other hand though, it seems like Celestials are gonna be getting this win right here. Uh-oh, unless Khalil has something to say about it. The Tsunami Sun lands, but it is still gonna be no kills on the board for Team Ling Ling, and they desperately need so. After that Masha 1v2, that is definitely something we need to put our hands on, Bolty. As you said, the Indonesians love the Masha right from the days of where Mr. Aura used to play that Masha, and we can see how dangerous a Masha can be if in the right hands. We definitely need to see more of these picks coming in into the Indian ML scenario. Indeed, indeed. And especially Masha having those extra HP and CC immunity. Every time you chunk out the HP of Masha, that is what makes Masha so strong, especially because you need change CC, not like a single CC, because a single CC is never going to stop a Masha from clapping you down. So that is, there are, Team Celestial are using this mechanic to kind of fight there, especially in the top lane where the Masha get that double 1v2 pulling out. So this time around, Ling Ling are back in form. They got their members back for the initiation here. But if Celestial can make one more play like how that Masha did, it could be over for the side of Ling Ling. Definitely so. And we can see another game coming in. As we can see, both teams are currently brawling it out. Who will get the lead is question. Tsunami Slam lands, and that is going to be the end of the jungler for Team 7 Celestials. Look at that though. There is a bit of an engage of their own. Still, we can see the 7 Celestials are not down. Even though they just lost their jungler, they are still moving forward. Look at the confidence which they have got here, Bolty. Indeed. That's the confidence that you get when you get your comfy picks, right? So this is the confidence that is only saving grace that they have, because with confidence comes more performance. So for now, they're going to be backing off, but losing that Gushan is definitely going to cost them. But then again, Gushan at this 20-minute mark, it's going to be hard for him to do something even though he's full build. He does got the Holy Crystal on his hands, but there goes the initiation of Tsunami Slam right here. Oh, that looks rather cruel on Cruel right there, because there was nobody to support her. And that was a perfectly connected Tsunami Slam, but it is not gonna be the chase here as Yamate is once again taken down. Maybe the Selena shouldn't have jumped so far. Nolan is gonna be next, who is gonna run away, because it is time for Ling Ling to hit for the hills, as this just looks like 7 Celestials are always having the momentum. Even though if 1 or 2 people get taken out from the team, it is still them fighting it out. Look at that, valiantly Masha is still fighting it on as her team is taking the Lord. Masha actually gets a kill on Cruel, and she is gonna get taken down, but at what cost? Because 7 Celestials are on that Lord, but Luna is here. Okay, this might be an issue as he is gonna get taken down by the Shadow Brave Shorter of the caution. That just means it is open season on the Lord, but 7 Celestials, they are looking for blood right now. They do not care about the Lord. They want to end it perhaps.
Yes, Cushion is gonna jump in once again, and this time around, the Quinta Crown is perfectly timed. The Voskov falls, and this might be the fall of their dreams as well. As 7 Celestials are knocking on the door, Inhibitor is down. There is the marksman there, right, who can actually finish the game. Look at that though, this is gonna be a stun connecting, and Phobius is definitely gonna try to end, not let this one go. Phobius jumping here, jumping there. He is the NBA player, but he just forgot that the Melissa just silently took the Lord. So 7 Celestials showing the wisdom which they had gained over the years playing this game of ML. Yeah, Ling, they thought they successfully defend that, but it was actually a diversion play to take the Lord on the side of Celestial. So this is a huge enhanced Lord marching down the mid side. So what can Ling do? Protect it? I don't know. Chase is gonna be spawning right here now, but the only play setter that can actually kind of defend this Lord push is gonna be the Phobius once again. But this time it seems like Celestials wanna waste it. Oh! Ooh, there comes the Salami Slam onto the Badang though. That means that the Badang has a better position as Phobius and Cruel on that. Kalia gets taken out. Triple kill coming out from that Masha right there. The game ends, and it is definitely Comfort which gets the victory. The mastery of each of these heroes is what combined put Team 7 Celestials in the winning spot. And what a game did we see here, Bolty. What a game. Definitely, as you said, with great mastery comes greater gameplay. And we can see exactly how the execution went there. Very, very true. But Ling, I don't know if they're gonna be sleeping tonight, losing with what you said, like the epic draft, right, Rets? So, but Cyclops though, this guy exceeded my expectation. I thought he was gonna be the one getting caught always in those abyssal arrows that Yamete is gonna be providing, but no. That Purify came in clutch. He was able to dish out damage, even though Selena comes close. You know, it was supposed to be the Selena killing the Cyclops, but instead it was an Uno reverse card. The Orbitary things just shreds the Selena instead. So early game wise, props to this Gushin as well for playing his solo because the early to mid was his time to shine, and that is what he did. Securing those retributions onto the side of Celestial did have a playoff of. That's why that eventually comes down to this, a win. Definitely, a win is a win is a win, and that is exactly what 7 Celestials secured. On that epic draft, they proved that their mastery of the hero, you just know the limitations, you just know how hard you can push, and 7 Celestials kept pushing because they knew even after having a man down, they could still take the advantage. The Masha, though, was a machine, and that woman just took on everybody here. 1 versus 5, no problem, I'm in. And she actually secured a kill before dying off. And in the end, she took a triple kill to steer her team to the victory. As we are gonna end this match. Ling, best of luck for your next contest, but it is gonna be 7 Celestials with the victory here. And just like that, we are gonna take a short break before coming back. Me and Bolty are gonna be back soon. So take a quick breather, have some water, and we'll see you soon. See ya. Shoot. Like fairy tale. Damn, bro. Bloody big ass. Yeah, Man, holy shit. Cyclops, Cushion, Masha. What the frick is that? 5 strong. Oh boy. Side by side. I told you, these underdogs can surprise us, bro. From jungle deep to the final lane. We bring the 7 storm. CD though, they're getting better, okay, honestly. Their mage is really good, but oh my god, man, I did not expect them to get destroyed that badly by a bloody Cyclops who's not even in the bloody meta, bro. He's not in the meta. Then Masha also did a very nice job in the top lane. That's why they lost their momentum. She was holding her own even in the top lane. Even 2v1 wasn't enough. So
I think it's the skin that's holding them. Together we stand. Yeah. No need to hide, 'cause this is the moment when legends collide. Definitely so. I think skin supremacy is there. The skin buff. Yep, they got definitely. Here he come. By the way, Sebastian, is this your game though? Because I think we have one more game left, me and Dolphy. Mids under pressure. Oh, is this the sixth one? Yeah, we are going a little bored on schedule, like a little late on schedule. Yeah. Oh, okay. So, like it says number 10, so I think I'm at the number 7. Two and 7 and 8. Yeah, Yeah. oh, you guys are just yet? Once is nowhere to be found, so you might need that. When legends collide, the fire no, ignites. just solo, so bad. Yeah, do it, man. You're the goat. Do it. This is our world. Yeah, bro. Man, I don't know how I got the bloody nickname. Like everyone's calling me so good, man. What the hell is that, man? Because you can beatbox, man. Man, I gotta tell Vance or whoever is casting with you, they have to introduce you as the third goat. My goodness, bro. Happily ever after. Yeah, actually, I think that would be funny as shit, man. But maybe in WF phase 1. Oh, man. Guys, anyways, man, all the best for the round as well. You're gonna be here next game, so yeah, stick around. Okay, another okay. Yeah. The time is now. Push through the clash. Yeah. We won't back down. Every Okay, skill bye, shot. guys. Every Alright. stride. We fight So as show us one. your third goat performance for one Unified. match after this, When Ricardo. legends collide, the fire ignites. We light up Bro, the if you map like beatbox stars in during the a night. play-by-play, that's With gonna every be insane. move, we Oh, yeah, shift the tide. Maybe I'll This read is in the our introduction. yard, our battle Yeah, we could. Yeah, you could do that. The fight, we rise, we thrive. No fear, Oh, no yeah. doubt. Oh, okay, We're I'll born keep that in to mind. survive. Alright, got it, man. Together Bye. we stand. Alright. No need Bye. to hide, 'cause this is the moment when legends collide. Towers fall, but we're not done. The bass is shaking. Here he come, a dance of death and picks Yeah, all night. happens. One last push. Happens a lot. One final fight, mids under pressure. Box holding strong. Top lanes on your zone, we carry on. Well, Ults that's it. online, shadows crawl. Call the Genj. We'll take a Should we go choke them or something? Echo and chant. Legends, rise Yeah. up. Legends, strike hard. Legends, never fall. We own this battleground. When legends collide, the fire ignites. No turning back, we burn through the nights. Unleash your power. Lilith V, I know Lilith V, he is like, I think he's a 200 or 300 stars player. With skill and pride, the final blow. No need to hide. Yeah. We came I have played with him, yeah. side by side. Good This is players. the moment when legends collide. Like fairy tales? They must love Next tournament penguins. onwards, they do love penguins, I am guessing. Oh, look at that though, Tartarus are literally dominating APM right now. 2-1 and they're dominating the third game as well. Oh my god, Apex just got the D there. Crisis getting slayed by Joseph. Oh my god, okay. Even when I'm talking, I'm like casting or something. Oh my god. Multi. These are the side effects. These are the side effects, bro, of casting for hours. Every stride, we fight as one, unified. Yeah, sure. Legends collide, the fire ignites. We light up the map like stars in the night. With every move, we shift the tide. This is our yard, our battle cry. In the heart of the fight, we rise, we thrive. Welcome back, guys, and this match is between the Fate Weavers versus Infinity Curses. Actually, those are two very popular, very typical names, to be honest. Wow, Infinity Curses. That is a dead scary name here, Bolty. Yes, but you guys are back into the India Moba Cup, and this is 20,000 diamonds on the line. And we can see two of the top teams already in this tournament who are going to be playing this match. And with me, of course, is Bolty. This is your guy, Roots Official, and we are going to be bringing you live action right now. As the family gets banned,
Volti, do tell me how the draft typically goes in the Indonesian meta. Indonesian meta, they're okay, especially been for itching the for a team that I've real casted, fight. like that one Army Hunter team. They really love to experience on heroes, right? Because they pick a Valentina and they go for the Starlium side. Yeah, Starlium side, okay, Reds, which is quite of a bit, no, yeah, they did lose that match. But what I love about that team is they are so Mhm. open to trying out different builds, Yeah, different drafting. And yes, I kind of like have a talk with their coaches when their coach is such a chill guy as well. So yeah, anyways, they uh, were able to actually defeat our teams Magic is my with life. a bit of Your that weird team is drafting as well, banned. because Impurity, I'm pretty well, sure, was there to represent India, but they did actually yeah. hold up good against a PH team. But on like a ping difference, they do win, but not on the ping difference as well. So right now, Butterflies let's focus on the born by draft thy for Your now. team wish. is We are Guided banned. seeing Yeah, that by three lantern's light. meta bans on the side of blue, and on the red side, once again, Kalia is out of the picture, and this time Let's the fight to our cat heart's that bursts content. Your with a team lot is of damage picking. is being banned as well. yes, definitely so. And we can see that it is the meta bans going all around. Hopefully, we are not going to see Your something team is hickey picking. as we saw in the last game. The Soyu being picked up is pretty common and definitely a great jungler. But the Joy is open as well. I mean, the Joy can sometimes be a great counter to the Soyu. But of course, the Badang is right now the most popular pick when it comes to the Indian community tournaments right now. And his name Mm-hmm. is really popular as well. Squishy Your Banana. team is Do you like banned. that name here? Squishy banana. I don't like my banana being squished though, because that's gonna make an entire mess on the hands, right? So other than Oh, that, I. Badang loves the fisting and the squishing, of course, but because I think he might be the one that likes to squish the bananas. But keeping that aside, Jaw had picked though. Oh, they have an initiator and they have somebody to follow up that initiation. There's the Badang. So on the side of the the, Mhm. the red side, it's looking really well. Definitely so, and I mean, this is probably the perfect combination. I mean, the EXP Batang and the Jawhead with the ejector plays, that is the perfect recipe for Doom, as the Jawhead brings so much of Your immense, team is. like early game potential. All they need, dare I say, is the Selena or something like the Fasa, Payback Your who can team time. is pair up banned. really well with the Batang and Jawhead, and that is gonna be a great combination. So whatever team is drafting right now, they have to think it out because Your this team is is looking banned. dangerous. So the Phobius is gonna be a quite unusual match for the Badang. Who do you think wins here in the Time to EXP drop lane? the beat of the Your flash. team is I banned. mean, uh, Batang. I mean, the Phobius is a tankier pick, unless the Badang has like the Thunderbelt to kind of counteract the Your true use team the is true banned. damage to actually be dealing against the Phobius. This Phobius is gonna win for sure in his lane, but it could also be uh, a Jawhead EXP. But I don't think that's gonna happen because you want to utilize the flicker ejection as well. So Yeah, what we have to watch out as well is Toji-san is actually a good player, I'm pretty sure. So him going Need with some the mid lane stitches? I Farsa, can it's gonna Your be help. good. team is That is banned. actually a good counter pick against the Sicilian because the only way you can counter a Sicilian is more range. That is the Feather Airstrike coming in on the side of, I'm pretty sure it's the Fate Weavers. definitely so. And we can see the Brody coming in. I mean, did you know, by the way, Borty, the Brody has become really popular. I mean, It's he is time the to sixth shoot up most the picked rooms. hero in the draft all over the world here. So slowly but surely, this gold laner is making his mark. But the unusual favorite, I mean, this guy is one of my favorite marksmen and one of Ah. my first heroes I played in ML. Ooh. Claude has been picked up. So, what do you think about this Claude pick here right now? This Claude pick will be a bit Your team is hard banned. for the bro. Not no, the Brody is actually going to be the one that's dominating this Claude, unless this Claude plays it really safe and gets pushes Brody to a point where he cannot do much. That he needs the item first, especially like I think like
1 to 2 items and get the full stack of the Art of Thievery, and that's when you can kind of deal damage. But then again, Brody has the Corrosion Strike, so that can stop the Claude from getting a little bit too close, and Brody just black flip him away and just flicker out with a, what is that, Torn Apart Yeah. Memory. That's going to be hard for the Claude. But Liliu Chuvi has actually taken the Julian, which is one of his main heroes here. So this is definitely a competition which is gonna be pretty intense. And I think the Claude is more of a comfort pick here, but against the Brody and the Fasa, it is gonna be seen what happens next. Because there's a lot of CC, and he might be able to avoid some with the BMI, but we have to see what happens next. Because there's so many CC oriented burst heroes at the side of this is going to be team the Fate Weavers, and this is the contest, guys. We are live into the land of dawn. Who is going to be the winner? Who is going to lose it all? 20,000 diamonds are on the line, and whoever wins this match is going forward, because this is a knockout match here. So this is Roots Official. Along with me is Bolty, and we are going to bring you the live action. So Bolty, what would you like to say after the draft here? The drafting, I really like the side of the I'm pretty sure it is the Fate Weavers, because they do look, their drafting consists of very big damage at the same time. Like they don't have these heroes that kind of like scales as the match goes, right? That's not the same case on the side of blue, because they have the Sicilian, they have the Claude, which needs like a bit of time before they can get the items and start popping off. But on the side of this Fate Weavers, they got the Brody that can deal damage starting from like mid game as well. And that's also there. Oh, never mind. There's some engagement coming in the mid side. And like I was saying, Toji Stan also will deal a lot of damage even if it's on the earlier phases of the game. So on the side of Fate Weavers, I'm liking this draft. I mean, the Fasa can be such a good opponent, honestly, because she can deal damage in the early, mid, and late game as well. But look at that, though, Tigreal is going in, but this does not look like a good opportunity. As Brody flickers forward for the kill, and he's going to get a double as well. Does Julian pick up the kill as well? And this is early, but certainly this is just a good performance coming in from the team, as Liliu Chui is going once again deep inside to get another kill. Talk about the aggressive performance coming in, Bolty. What do you think? Because the Sicilian and the Claude, both of them need time to adjust, but there's just no time being given as the ejector play comes again once in. Oh my God. And this is just a bad matchup for the Sicilian as well. This is just brawl, man. This is just brawl. Non-stop initiation. That is almost another initiation if it weren't for the Johan missing that ejector, but never mind. Somebody's gotta get that initiation. Oh, the Tigreal is caught in a bad place. He doesn't even have the implosion, and that is the reason he is gonna fall. The feathered airstrike strikes, and this is just Fate Weavers who are showing it off that they are a top tier team here, taking the aggressive chances. There is just nowhere. That's all you can run. He might have dug himself a grave as he misses that sword as well. And this is just the Julian who is gonna go on the Musan as well. Musan has nowhere to run. That Tigreal gets taken out. Never have we seen such kind of an aggressive performance. Look at that. The hero's falling like 9 pins here, Bolty. Oh boy, look at that. 0-7, huh? The snowball effect definitely takes into fruition on the side of the Fate Weavers. But Infinity, I mean, they're not going to be getting the stones over here, man. Instead, they're going to be the one getting collected by the Weavers themselves, because topside. Yes, topside we can see the killing spree coming in as well. But the shutdown, Claude actually gets a shutdown on the jawhead right there, which is great. But he gets taken out as well. So this is an equation where Team Fate Weavers are throwing everything at their opponents. They do not even care if they get a kill or two, but they are definitely gonna go aggressive is their motto right now. Indeed, and they are weaving their fate, but it seems like somebody's in trouble. Oh! Uh-oh, this is definitely looking trouble in paradise. The Brody gets taken out.
And the killing spree comes in as well. Lilich V is definitely comfortable on that Julian, and he is showing it to us as a 304 is the KDA. And definitely so, this match is slowly but surely looking in the favor of Fate Weavers, as Infinity Curses might have to curse their luck here. For now, this is a situation where another ejector player was about to come in, but a perfect flicker coming in from Sicilian saves the day for himself, because the turtle is coming in as well, the second turtle of the game. Yeah, this is an easy turtle soup on the side of Fate Weavers because what can Infinity Curses do except for the Tigrel setting up the implosion? But that's not gonna be realistic because, you know, the gold difference is definitely there, but oh no! Uh-oh, this is not looking good for Tigrel as he is being taken off one after the other. I mean, it is generally the Tigrel who does the engages, but it is Team Fate Weavers who are weaving their fates here. We do not believe in curses, we weave our own future, says the team. As look at that, like a bunch of hyenas, they are trying to chase it down. Nice kind of an outplay coming in from the Lord there, as Sivar is actually trying to escape his fate right now. Because this is just looking like a pick-off show coming in from Fate Weavers. They're just playing with the food that is the curses here. I mean, when it comes to fate, your fate cannot be sealed with just mere curses, but another initiation off. Yeah, I mean, Toji is definitely showing a lot of power. As we can see, look at that though. Somehow Lelouch is a little late on the occasion. But talking about Toji, there was Neji who once said that the destiny is not all we see. We can definitely weave our own futures. As we can see, already the Fate Weavers are taking the bottom turret, and this is just an onslaught which they have no reply to. Infinity Curses have no reply to. Look at that though. This is gonna be another kill. Bozan has to lose his life, and so has to be done by Shiver, as all of them are literally being taken down. All 5 members are low at the part of Team Fate Weavers, but they are still gonna secure kill after kill here, Bolty. Very true. 6-minute mark. It's not the time for the curses to be popping off, but that's a bad initiation coming in. Uh-oh, looks like this is troublesome as a mega kill comes in, and this is just the Sicilian picking up 1 kill at least. So definitely the pressure is coming at the hands of Infinity Curses. Definitely there are people who are urging the jungler to take up some kills, but definitely a hasted effort is not an effort at all, as you might just lose and feed your opponents more. Indeed. And that's what the curses, I mean, for now, they just need the Sicilians to get up the stab, because this Sicilian is the only like saving grace on the side of curses here, but that's a nice curse sacred hammer, but this is not looking good. I mean, whatever Infinity Curses tries to show at the opponents, it is just landing straight on their faces. So this is just an opportunity where things are not going at the hands of Infinity Curses. And look at that, 1 more kill coming in for Fate Weavers as well, as they're looking to lock on to that mid turret, the 2nd tier turret now. Look at the damage though coming in from the Brody Bolty. yeah, that's my let me not say it, but that's my guy right there, man. All the damage as well. But looking at the Neo B skin though, do you like it, bro? I mean, Ruts. Oh, I love the Neo skin. I mean, the kind of colors this projects is very different. Because you usually see a 1 color scheme skin, but the Neo skins are like so awesome to play. The special effects, sometimes I would even say that they are better than some legendary skins as well. Because of the good skill effects it shows. You want to look good while you're playing. And if you want to look good, guys, these are the tournaments which you should be playing. We are currently playing on a tournament server, which means every skin is available. What is not available is the lifelines for Infinity Curses, as they are dying literally infinite times right now. 3 to 17 is the score line, and this is looking like a whitewash here, Bolty. It's just Infinity Curses. They're way behind. 10k gold difference is way too much. Oh, somebody's getting caught. They're saving grace dead.
Uh-oh, looks like it is not going to be much of an action as Gorok gets taken away and 140 is the KD of him, and that has just been the end of the story. I mean, just 3 kills for so far have Infinity Curses secured, and for now this is another ejector play coming in. They do not even care if it's the Tigreal who is being ejected. I would normally say that the Tigreal being ejected is a very bad idea, as you can just land into the implosion yourself. But with the goal lead which they have, 10k goal lead, I mean, it doesn't even matter if there are 10 opponents. It is just gonna be. Look at that though. The Claude tried to give a decent bit of damage, but Godlike coming in from Liluch, and this is just looking like a very, very bad investment in the Sicilian and the Claude, because they might not even be able to see the light of day when they get farmed. Yeah, that was that concealed play coming from Tigreal, and just Sacred hammering like out of nowhere was a bit concerning. But then again, this guy is gonna walk in the bush, but he might get caught by this down. But for now, that Luminous Lord has finally spawned for the taking under their siege. This could be an easy siege if Weavers get this Lord. But can we get a look at the stacks of Sicilian right now? Because if we can kind of know like how far have the Infinity Cursive have started. But it seems like for now, let's just take a guess. I don't think this Sicilian will even have like 200 stacks just if yet. we So just yeah, look at that, 130. there we go, 130. That is so low. I mean, for 10 minutes, that is really low. People generally get 250 of stacks, so that is very concerning if you are a supporter of Infinity Curses. Right now, though, Jawhead is looking for another ejector play. Will not have it, but the Lord is what they have right now, and they are looking forward to ending this match rather quickly, Bolty. So it might be an early dinner opportunity for us, as Team Fate Weavers are closing in. Tigreal actually has to use the flicker to get back to safety. I mean, that is crazy, honestly, Bolty. Indeed. Very crazy. And then this time around, this could be the burrito that we want to see, but it's just an initiation coming in. Oh, wow, that is a big implosion coming in, but unfortunately, they didn't have the follow-up. Tigreal just got melted like ice cream, and that is looking like a bad effort, because the Sicilian is gonna actually get a double kill. He might even get the triple, but the base is gonna go down at the hands of Fate Weavers as they are moving their futures into the next round of the India Moba Cup, and it is gonna be sayonara for Infinity Curses. They might be cursing their luck once again, because they couldn't do much about the situation, could they, Bolty? Indeed. And looking at the picks there, I mean, even after the Brody was picked, they think that a Clot can do something against a Brody, but they are completely proven wrong, because the Brody was the one getting the kills left to right, actually giving the chocolate to the other side. So for now, there's not much analysis that can be done, because it was a very one-sided game. I mean, of course, the Infinity cards, they can do better with the draft, but for now, the Sicilian couldn't help much as well. So with that being said, Ruts can basically close this off. Yeah, I mean, there's nothing more to say than Fate Weavers were just great at their gameplay, and they did show what kind of a high level gameplay they can pull off at this occasion. And maybe the Claude and the Sicilian weren't just the greatest of picks. I mean, combine that with a Tigreal. I mean, where can you place a Tigreal when you have so many shoppers? You have the Bradang, you have the Brody, you have the Jawhead, as well as people who can just fly away from your ultimate. So definitely the drafting is the failure here, and maybe some skills. But it is still the MOBA Cup, and it is gonna be the next match which is gonna be rolling in. Thank you guys for tuning in. You are gonna stay tuned, cause there's one more great match coming up. This has been Woods Official. This has been Bolty as well, and we will take a short goodbye before we meet you again. For now, stay tuned, cause a great match is coming in next. You wouldn't want to miss that. See ya. Like fairy tales? Who deserves to live happily ever after?
strong, we ride side by side, locked and loaded, no place to hide. From jungle deep to the final lane, we bring the storm, we bring the flame. We hear the call, the time is now. Push through the clash, we won't back down. Every skill shot, every stride, we fight as one, unified. We're legends, collide, the fire ignites. We light up the map like stars in the night. With every move, we shift the tide. This is our yard, our battle cry. In the heart of the fight, we rise, we thrive. No fear, no doubt, we're born to survive. Together we stand, no need to hide, cause this is the moment when legends collide. Towers fall, but we're not done. The base is shaking, here he come. A dance of death and pixel light. One last push, one final fight. Mids under pressure, box holding strong. Top lanes on your zone, we carry on. Ults online, shadows crawl. Call the gank, we'll take them all. Echo and chant, legends, rise up. Legends, strike hard. Legends, never fall. We own this battleground. When legends collide, the fire ignites. No turning back, we burn through the night. Unleash your power, let it ride. This is our world, electrified. We conquered the map with skill and pride. Just a final blow, no need to hide. We came for glory, side by side. This is the moment when legends collide. Like fairy tales? Who deserves to live happily ever after? Five strong, we ride side by side, locked and loaded, no place to hide. From jungle deep to the final lane, we bring the storm, we bring the flame. We hear the call, the time is now. Push through the clash, we won't back down. Every skill shot, every stride, we fight as one, unified. We're legends, collide, the fire ignites. We light up the map like stars in the night. With every move, we shift the tide. This is our yard, our battle cry. In the heart of the fight, we rise, we thrive. No fear, no doubt, we're born to survive. Together we stand, no need to hide, cause this is the moment when legends collide. Towers fall, but we're not done. The base is shaking, here he come. A dance of death and pixel light. One last push, one final fight. Mids under pressure, box holding strong. Top lanes on your zone, we carry on. Ults online, shadows crawl. Call the gank, we'll take them all. Echo and chant, legends, rise up. Legends, strike hard. Legends, never fall. We own this battleground. When legends collide, the fire ignites. No turning back, we burn. Like fairy tales? Who deserves to live happily ever after? Five strong, we ride side by side, locked and loaded, no place to hide. From jungle deep to the final lane, we bring the storm, we bring the flame. We hear the call, the time is now. Push through the clash, we won't back down. Every skill shot, every stride, we fight as one, unified. We're legends, collide, the fire ignites. We light up the map like stars in the night. With every move, we shift the tide. This is our yard, our battle cry. In the heart of the fight, we rise, we thrive. No fear, no doubt, we're born to survive. Together we stand, no need to hide, cause this is the moment when legends collide. Towers fall, but we're not done. The base is shaking, here he come. A dance of death and pixel light. One last push,
One final fight, mids under pressure, bots holding strong, top lanes of your zone, we carry on. Ults online, shadows crawl, call the Genji, we'll take them all. Echo and chant, legends, rise up, legends, strike hard, legends, never fall. We own this battleground. When legends collide, the fire ignites. No turning back, we burn through the night.